one totally off guard. And then it's 1-for-1 trades. Pathing so precise just underneath that balcony. The guy with the MP9 on top couldn't do anything. And with that, all the money for Vitality is gone. Mattis taking a quick look over towards B. The utility pressures middle, and Hunter tries to slot in with that MAC-10. CZ for Apex, great job! Unfortunately for him, his only reward is that MAC, while, Now there would be. as we alluded to, that setup inside of the B site ready to follow through. Malbs feasts on a couple top mid. Good frag back from Mezzi. But because he's up catwalk, there was nobody there to stop this G2 attack into the B site. They cut through with ease. Yeah, Three heavy hands alive in Sun Pius, Mattis, Heavy God, and no way in for Vitality. Tied game. They find their good post plans really quickly. It's the best that Vitality could do, and again, it's credit to G2 for being able to say, we lose a player, instant exec. Instant B exec. That again happens in this moment. Even though that dive down gets a kill, that's something that, you know, you're looking for. It's CZ in your hand. You'll take anything. Oh, nice shot. Another one. He's on the dome right now. Might be a little high. Let's see. Okay. Jumping block, of course. Yeah. Can't go through, go over. Sprinkle it in. Good on Apex. He knows utility's coming out of the player underpass. Make the jump. Hunter just shakes him off. As does Malbs top middle. They're showing us a way of playing this game that will stand in front of the in the face of 45 statistics. Because normally those statistics are supported by a little time. Sure. You get that first kill and there's a little time to maximize the map with 5. But what G2 are doing is, you get a kill, now we're actually using it against you. We have info and we go for the exec. Almost doesn't matter that they lost somebody. Just serves as a trigger. Speed up that game, and speaking of speeding up, again, we are going all into the B site. Drops popped by Mobs. Mezzi with a chance to be the key to the defense. Utility's making it awkward. He shaves a bunch of health off Heavy God, and a good position back on bench. He's gone unnoticed. Hits the headshot. Flusters Hunter. It's the dink. Still though, Ronaldo back. G2's got the frags, and Flamesy is gonna have to come up big with the clutch. This nade. It's a little late. Oh, it's perfect. Bomb still planted off of it. Some Pius sits on his ankle and will not let you in. G2 are not asking for permission right now. Another B attack successful. Comes down to the 1v1, but another clutch wins it. It's not that the holds aren't decent. They're pretty good. I think Zywoo's miss here is actually the real difference. It's a nice attempt from Flamesy. Takes a moment to line up that nade. You can't really have it both ways in that spot. If he doesn't line it up, he doesn't get the kill. If he gets the kill and lines it up, he's a little late to stop the bomb. But G2. Hello, it's really about okay. the perfect स्ट्रीम चल रहा है spot to कैमरा punish बंद him. हो Mobs double kill. Wow. G2 को एक मैच जीत गए ना हो गया फिर Again, उनका rounds where G2 just जीत गए वो the लोग pedal to the metal follow through. पर वाइटलिटी और एक जीतते तो फिर मैप 3 पे जाने वाले No हैं clear superstar, new pop-off player every single round. Yeah, except for the crowd cheers for them. You know, we talk about G2 in the face of 4v5s, just activating, getting the round done, but then it's nice to see this other look where they can slow down and still control a map. I would say that when Hunter first kind of took over the reins of in-game leader, these were the moments where I would criticize him, kind of losing himself as a round would go on and then trying to oversimplify things. Yeah, you say these are the rounds. It feels like that was like a week and a half ago. Sure. How has he gotten so good already? I mean it's stepping no up secret, man. to the plate. Yeah. Playoffs, dude, it's different. It's playoffs, it's Hunter, it's Saw. I mean, that's just a... It's Heavy God, it's Mattis, it's Sun Pius, and Malbs. It's just sick individuals finding form at the same time. A new challenger enters the arena. Vitality trying to get their hands on it. Zywoo, yes, second kill as he gets back into default.
And that's bomb thrown over with 20 seconds on the clock. We got a very critical op duel. Mobs is not going to be allowed to move until he gets his kill off Cat. Now he's freed up. Zywoo knows. ये अकेला है अब ये हग रहा है. Right here, नहीं मारे. Triple kill Zywoo. He tries to run away. अरे यार इसको सिर्फ भागना है टाइम. Zywoo into the corner takes us to a tied score, and they just Oh, can't nice hunt one. it down. It's 1 at the end of this CT side, tied 6-all. Welcome to Instant Recall. I'm here with Hex from M80. Thanks for joining me. Hex, I'm going to show you a clip. Then 2 minute का break. Okay, let's go. भाई मजा आ रहा है देख. और क्या चल रहा है YouTube? खुद का स्ट्रीम भी चल रहा है ना. Yes, and we have to wait and see if Heavy God can find that kind of. Yes, and we have to. God can find that kind of. heard of this guy. Not this game. Case to Fortnite global champion. Fortnite का भी चल रहा है. Way that they've now just put everything to a pause. Surely this has got to work out for visuals. We've got to start to think so, right? We know in this lobby the thresholds for Surge are so high. Time is such a valuable currency. The more time you spend doing nothing, the less time to have to get Surge later on. Someone has to do something quickly, and I think they're starting to realize that. Oh, but yeah, I think everybody's realizing things aren't pushing. They're not happening as quick as they should. The third parties don't got their opportunity to lurk for elimination. So Striker, Kadu, Tisco, they're going to be the first ones rotating on out. But Arc School and Sauco, look, instead of going towards the south, typically they were fighting that team. Kadu and his entire trio. This time they're pushing up towards the north. Vortex, Goofy, and Mountain are going to be in their line of sight. School missing a crucial shot. They are in the zone, so every second is just more damage being ticked off. Sauco's going to be the first one dropped, though. मैंने मोबाइल पे खेला था. Arc, he was doing so much. lag में वो Yesterday, भी. but School not going to have that opportunity. Vortex, Goofy, and Mountain defend their current hold, but it's also making you wonder what happens to Queasy now that they've been interrupted. Yeah, this is going to, again, be a real test. Will it be a chink in the armor? आप Will it इतने be दूर से another walk दूर in से the मार park? रहे हैं. For our OXR HQ team, things looking like a walk in the park. I mean, we've seen them do this many of the games so far in this competition. भाई इधर भी crowd danger है. Boo-boo, they know things are looking good for their M8 boys right now. Oh, look at that. Pixie will be fine, I'm sure. The revive will come through. Got me excited there for a second. You know me, I like action. I like seeing the knock. You were excited till you noticed that it was done by both, and then immediately you key back I in. quickly remembered, A Taco. little bit of that third base action. बाप रे But क्या कर रही है there's a लोग. third party, there's a fourth party, the fifth party's towards the north. Okay, we got a sixth party now joining Rangers Ruin. Honestly, when Rangers Ruin first appeared, this is the team that said, hey, we're ready to take a triple contested fight against Prodoxy and Taste Trio. They ended up changing things up a little bit, but now Danger. Well, they चल हो गया क्या? case to be made that he's as good, if not better. This was Instant Recall. 9 seconds, okay. Okay, sponsor कर रहे black. Okay, तो 3 गन की स्किन, एक चेयर, एक बॉटल, माउस एंड कीबोर्ड. Vitality needed a strong start, and they got one. They did what many can't, which is win a pistol over top of G2. That 4-0 start looked like it was going to turn into हाँ, an जब तक मैं economic जो problem like for the G2 जब तक side of मैं things. But कुछ that बोलता streak नहीं हूँ around खरीदने in के the लिए face तब of तक कुछ 4v5s, भी नहीं खरीदना in है. the face of all the challenge, no बाप issue रे, क्या as we मस्त get crowd tied है. up 6-6. Yeah, and this the new iteration of G2 is a test for Hey, them. They Thanos- needed to try to Thanos pass. I ने, think they actually did, man. Being able to survive the pistol, Kratos क्या that कर रहा है start. इधर? They're Kratos used to नहीं रे, winning them. God of War. And now they know, again, they've got lots of Thanos confidence नहीं, in rounds like Thor. these. Sorry Vitality, लगा who वो. actually might be a little बड़े worried. बाल. It's nice to see though, Shout out Zywoo me. top of the board for Vitality. Flamesy 13 kills right behind him. Oh, the smoker. They're going to respect it. With this push, does it buy them enough time? They're actually, I don't think they were expecting this. Vitality. This may be Look at the movement, man. through the ramp, you mean? Everywhere. You get some pies coming back, too. That's actually nuts. This one smoke of this deep. Wow. The counterplay is insane. Does fluster Hunter though off his perch. Couple flashbangs over. He's blind, but Sun Pius covers.
Zywoo catching him as he drops down. Apex takes low. Great execution coming forward from Sampaius. Zywoo is going to be the difference, though. If he has to be time to deliver, he still has 80 health. And every kill so far. Already sitting on an ace in this series. Quad kill Zywoo. निकाल लिया रे ज़ाइवू ने 3 लोगों को मारा है. Just another reason he is one of the greats. Under pressure, with Hunter and G2 breathing down your neck off those pistol round wins, he gets himself an ace. 2 aces in this grand finals. बाप रे 2 ace. Technical pause. He went and got 2 exit kills in the first half of Dust 2, or even not even a kill. And then 1 round with an ace to close out that half. Next has taken notes on that one. You know, it's one of those things where, to use an analogy, you know, it might be better to, if you want to do like you want to be able to get a little bit over a long period of time. That's going to give you more output overall. That's kind of how Zywoo just makes his bread in general. You have these huge flashes of brilliance, right? Then you're Honda. You get 2 aces in a series, but you don't get a lot of kills. It's not as valuable to your team. So you're putting all this impact into this 1 round, that's one thing. And maybe it's early enough it gets G2 a little inspired about how to come back into this game or close this one out, or with the second pistol build momentum. But you still want more volume. That's... Zywoo's had some better rounds now. I mean, a 19-6 Zywoo is enough for Vitality to win 16 hertz का monitor है. Like, if that's going to be the driving force of this offensive, you'd think it can be enough. You've seen it before. We will see it again. The question remains, will we see it tonight? Right here, right now on Mirage. अरे मार भी दिया. Around the world, baby. Woo! Replay बताओ यार. One मैंने देखा bullet and नहीं a dream. Good night, Mattis. Tough one to swallow. Desperate scout. Deagle from this corner, fully committed, nowhere to run for Mobs. Always good for one, seemingly. Goes without saying, but production, we're gonna need the replay. Yeah. Man, from 0 to hero, 20-6 now on Mirage. Shoot, off the ace. Disgusting. To the 1 bullet tap. Oh. One more time. Oof. Oh. One more time. Oh. उसका बॉडी दिखा रहे अभी तक. At least he didn't suffer. One more time. Oh. Hey, और एक बार. अरे. Oh. It's surprising every time. Go watch it all day long. Blessed to have a player as talented as Zywoo in the server. Blessed to have a challenger that spreads its talent across the board in this G2 team. Definitely, yeah. But that is what's supposed to make the difference. The fact that you can't match these players up, 1-to-1. Rops also, as B-Trim showed One more us, time. his career worst Grand Finals map on Dust 2. He's trying to get back into this too. तो ये ऑफ निकाल रहा है Like यार. he's teaching him how to be in Grand Finals now. AWP. What happened to our humble king? It's a new day and a new age where Vitality are still kings. But not invincible. We've seen that much. Just another strong start. Both halves have featured a strong Vitality start. Heavy Gods 5-7's gonna cut down Apex, but nobody else inside of this A site, so there will be zero resistance for the ramp push, which is gonna find the bomb plant inevitably. Zywoo, oh my god, a headshot. Dude, it's crystal clear with him. Flamesy actually called
J2 really efficient right now. I think that was a kind of really nice praise, and it sums up exactly what makes him so good. ZywOo is the king of efficiency as an individual. He's the most efficient player in Counter-Strike history. No wasted space. A lot of his highlights, he's never over-flicking. Very clean stuff. No wasted ammo, no wasted movement. Gonna mow them all down. On target every time. Another massive multi-kill for ZywOo. Sure, didn't have the best weapons for the job, but it's critical junctures ahead for him. You convert that pistol into the 3-0 start, you're a key of it. I mean, if we could just even bring up the scoreboard, when we go back in the game, it needs to be seen how top-heavy this map currently is for ZywOo. 3/5 of Vitality still look like the same Vitality that we had back on Dust 2. You know what I love about this, man? I mean, we're not there quite yet, but like ZywOo, like on his best day, he gets 27 kills, 10 deaths. Okay, there's a pick-off. See ya. Starting this rifle round. And a bit of G2 energy right here. Now staged up for the B exec, but are they actually going to exec through this? Sunpius waiting for them at the pass. Two rotators coming in. Bringing that bomb. Two rotators here on Cat. Yeah, they've got their angles held. It's going to be a difficult fight out for Flamesy. He does still kill Mattis. In through the window goes ZywOo's AK spray down. He's the difference. Oh, what a play! Sunpius catching his on the doorway, but what he didn't catch was the bomb. And what Rops found is an opening on the other half of the map, making a quick move here is ZywOo. And even if G2 goes scrambling, sprinting back towards the ticket, what they're going to find is a well-prepared Rops. There we go. Best hunter. And it is Rops who paved the road towards this A site. Rops crossing positive. Sunpius eyes intent on trying this. Does his best work on the big stage. We've seen it in back-to-back days now. Well, he find a punishment. You know, why would you ever peek ticket in this spot if you're Rops? You have missiles this side. He's trying to figure out where ZywOo's gone off to now as well. Tough for him to not work with a kit. And it's a tough call. He doesn't want to make it, but he will. Steps away. Double digits. Team Vitality. It's one kill भाई for सेव ZywOo, करने but के it's लिए also जब a difference. निकलते You know, तब the खिलाते भाई evacuation route out, it's that frag to keep the rotators there from the CT side. अरे हगा And nothing is promised. ZywOo with two. No saves in भाई London. 26 चल रहा है ये ZywOo, बंदा you know, on his great days, he gets his 27 kills. Such a clean score line. Great highlights in there. He never goes for astronomical numbers in his KD in any one इसमें given map. 0 But low great. deaths, Six now था it's वो, actually taken after. an insane peak as well. Hunting down Sunpius to get his second kill of that round. Forcing Saw to call a pause. And to be fair to ZywOo as well, it's almost always because he's not hunting down ecos. You know, it's one of the best stats in his favor. You know, look at KD on some other players, and yeah, they get lots of rifle frags, but they also get lots of ecos, and they go look for those. ZywOo isn't one of those guys. He's all about quality. Damn. I can't believe Flamesy bends that bullet. Bonkers. Sunpius does the same thing, right? Nasty flick up. Poor Mezzi. Probably barely sees Sunpius as he gets back into the corner. Got Rops crossing positive on his score line too. Yes, sir. But I mean, fucking have balls on the table, guys. We're way better than them, and we're playing like pussies. Let's go, boys. They said it's time to have fun. at this point, I don't think anybody's catching up to ZywOo for Vitality, but support him in his run towards the top. Get some while you can. Dropping him in the front of the palace. They just draw in the counter-terrorists. It's all a trap, a bait and switch between Flamesy and Rops for him to get a triple kill. You know, desperate acts here for G2 as this game goes on, looking to get their first CT round win, but it's a tough one. Money's not great. You're coming through with half buys. ZywOo's just dominating wherever he decides to start his rounds. Playing from the back foot in both halves. It's the first and weakest that we've seen G2 in any one of these spots. They've always had an answer. And we're in a series now where, genuinely, even if G2 won Mirage here, they're not promised this veto. You know, the Vitality is way stronger, obviously, in best of fives. Yeah, they're looking forward to playing Overpass. No, once the they're maps looking get forward tactical, to playing Train. That's where Vitality are supposed to come into their strength. And just play rate in general. So
You're not Sun Pius. You're done for. Not long for this world. The old bait and switch, Rops rope-a-dope. You start to feel G2 kind of scrambling to get anything going, but starting to look a little bit desperate as they trail Vitality, 6 rounds to 11. Now, there were times on G2's attack where off of success or failure, they would just throw in this all-in A. I think one of the best parts about Sun Pius lately is actually his output from Ticket. It's a hard spot to get impact from. You won't get that many chances. He's finding headshots from this position. Oof. Tough while blind, though. Heavy God eats that following flash, and Flamesy on a warpath just churns through the defense with the double kill. Messi catches Sun Pius. And all that while the bomb was actually taking a potential route over towards B, which is also getting picked up by Vitality. So it turns out at the turn of the half, Vitality are simply gonna do no wrong. This is about to be a 6-round T streak, not a singular round since G2 have taken to the defense. Yeah, they might be still celebrating Dust 2 mentally. This one's been whisked away with the assistance and the start, the catalyst of all this, that ace from ZywOo on the pistol, the one tap to fall. They haven't looked back. You know, when ZywOo got that ace back on Dust 2, I tried to sell a little snake oil, say like that's the inspirational individual moment that could get Vitality back into a game. 2-10 half. Right. You know, and maybe it brings in the mental to try to have faith in a pistol. But to do it at the start of a half, when you're already competitive on this map, it just let ZywOo unload on G2. I would love to know what Saw's thinking in this spot. You know, he's going to obviously try to get his team to believe that this is still recoverable. That last round was a tragedy. It felt like that's where the game ended for me for now, because that's a full A attack where there's 3 CTs. They have everything they want, no op impact. No one even gets a kill to stop that. Just feels like it's Vitality now writing the story. You're gonna press tab, look at ZywOo's score, and it's like, which one of us has done that before? Flamesy swings out mid. Oh, awkward on the window. Remember, these are FAMAS players out here in the shooting gallery of Mezzi. Rounds the corner, gets his damage in, but Heavy God escapes with his life for the time being. Rops, just like last round, stepping forward into a B site, finding it vacant, will do the same on A this time, and the bomb is right behind him. So sure, they sign up for these duels out top middle. This is perfect for ZywOo, who just wants to stay tucked, make sure he doesn't get walked up on. And the closest thing to an A defense is a Heavy God on 13 health. And when I say close, I mean all the way back in CT spawn. Mobs tries to pick up the mantle. They're in a spot to just wait to see if the CTs are going to walk through this. Oh, they're actually setting it up with a fake. This is nice for Vitality. Yeah. It'll draw Mobs' attention back somewhat, but he's still thinking about the bomb site itself. And we can see he's got good reason to be cautious. Rops just keeps inching his way closer. ZywOo ultimately strikes with a back turn. And so it looks like Mirage goes the way of Vitality. They can do no wrong on this attack. And this is an attack that was led by ZywOo. Nobody even close to his realm of impact throughout Mirage. Flamesy rides the coattails while the majority of the team stayed quiet. But this is the answer they needed. They took a step outside after getting smashed on Dust 2. And the question is, can Apex close? Because ZywOo walks away to set up that flash. You find a blind, you confirm the position, and who else than ZywOo to find that final frag? 30 kills, 6 deaths. That is the world's #1, trying to fight for the title. Trying to show that in Vitality's deep runs with an absent spirit, he is simply the best. Simply the best and oh so dominant. ZywOo, after that first map, what the hell happened to make you come into this one and absolutely dominate like that? I mean, we don't want to lose this kind of game like this, so obviously we have some ego also in front of us and inside of us, so we didn't want to lose in this way again, so obviously we have to step up. Was it a big wake-up call after the first map? Were you guys not happy at all with how that went down?
Of course, we are not happy to lose in this way, so obviously we have to wake up, and I think all the team did really great in terms of communication individually and in terms of goals, so really happy for this game. Overpass. Exciting, right? Yeah, really exciting. Long time no see, so it's going to be exciting. It's going to be exciting. Good luck, man. Thank you very much. G2 left shaken and stirred after what was an absolute clinic from ZywOo. 30-6, 8 multi-kills across this map, and so much impact from what is meant to be Vitality's star player. Single-handedly keeping Vitality alive in this game. Let's not forget the fact that this game was super competitive up until the point where ZywOo decided that no more, no more. He took over the game single-handedly. He did it with the rifle, he did it with the AWP, he did it in the pistols. He was all over the place. Right now, this was one of the most impactful performances I've seen from a single player in 2025. This game was super competitive with ZywOo playing really, really well. And then he goes into the second half and he decides, oh, hold on, I can actually play better. I can be the best player in the world again. 30-6, that is unreal. It's actually unbelievable what ZywOo was able to put together on this one. I'm so curious about the talk between map 1, map 2, because it's always been Apex's superpower that he can just criticize star players for not playing as well as they could be. And so ZywOo, he's also heard the chatter too. He knows that that #1 race has been slipping a little bit, that Donk's actually catching ahead right now, and so he wants to put an end to those conversations, and what a statement he made there on Mirage. 100%. We know that it bothered him to, be getting up on the HLTV awards stage come January and getting a 3rd best player in the world. 3rd, ZywOo doesn't even know that number. But he had his own number during this map of Mirage. First off, he was aptly helped out by Flamesy as well. Yeah, those two players kept them alive. I think G2 కొత్త సర్లం Match found. Go. Let's go. एक खेल का स्टार्ट कर दिया था पर नहीं होना डॉज कर लिया Match found.
Breeze. Cool. Let's go. Be careful, user. That portal does not work as intended. Such a bad investment. Satchel out. I need a drop. Need a drop. Thanks. Go, go, go. Basically. Enemy A. Enemy spotted A. Surprise. Fall back. Move. Last player standing. Grounded. Spike planted. एक सौ 10-18 शिट योरू आवाज करता ना उधर मेरे पास That Raze has some good inventories. Would love to pick them apart. फ्रेश क्या लिख रहा है ये वैसे क्या उस पे Last player standing. See ya. Yikes. अरे यार इतना गोली क्यों रे रेना थोड़ा बचा के रखता Okay, Zero kill we know the वाला drill. हमेशा अच्छी ही बोलता Stick to है। your roles and we'll I need crush a it. drop. Zero kill. I need a drop. बैठेगा शांत टॉप पे आएगा The hunt begins. Decoy. Enemy spotted mid. Enemy spotted mid. Sky's falling. Here. Last player standing. Grounded. अरे यार क्रॉसहेयर में नहीं आया Last round before हाथ the switch. पूरे लेग पे Use everything you I need a have. drop. We lose it anyway. I'm out of here. I need a drop. Need a drop. Thanks.
Need a drop. People have guns. Now use them. लेके जा रहे I've got your trail. Bye. Spotted mid. Satchel out. Reloading. Spike down mid. Satchel out. I'm out of here. Portal closed. हाँ ये रेस को देख Spike रहे हो mid. काफी अच्छी कर रहा था One enemy remaining. Really sorry, Neon. But you didn't like me anyway. भाई रेस चिकन है क्या Switching sides. Gotta go. I need a drop. Party's just begun. Reloading. रेस रेस Go, go, go. Gotta go. गेम पे I'm out of here. Go, go, go. बैकग्राउंड में डिस्कॉर्ड Gotta go. Time to jump. I'm reloading. Grenade. Decoy. Satchel out. Out. Back up. Go, go, go. मेरे पे स्पाइक है यार One enemy remaining. Spike planted. No charges left. let's Go, go, go. Reloading. तुम्हारा These guns we use are okay, but I will also bring my own. I need a No drop. offense. Need a drop. Gotta go. I'm out of here. Reloading. Guys, come on. The spike. Reloading. Don't let the neon get around you. Reloading. 17 minutes Gotta go. Coming through. Gotta go. Satchel out. Enemy spotted A. Reloading. One enemy remaining. Okay, who's got this axe? फायर प्लस Charge and shoot. Easy enough. Cutting through. Grenade. Bomb buddy out. My ult's ready. Satchel out. Blocking sight. Here. Decoy. Reloading. Loosen up. क्या आ गया अरे
Reloading. Last player standing. Grenade! मेरे से भी गंदा है. Match point. I got your backs. Just, you know, from the front. Reloading. Time to jump. Here. Hi! I'm pissed! Fake teleport. Time to jump. My ult is. They are so dead. Hey, 50 दिया. Get out of my way! I'm out of here! तो आओ. अरे हार जाओ जल्दी. मैच चालू. That's a good spot. Go, go, go! Go. 17 minutes done. Yeah. Teleport's ready. One enemy remaining. तुमके अकाउंट से देखो. इधर गया. अरे चलो. Which he comes up against that wall for that first duel, and an instant first bullet headshot, and then I'm out of here! Go, go, go! Last player standing. Teleport trap destroyed. Sudden death. and doesn't he is. That was the one thing he I tried need to a do drone. in his career. It's the only thing that Zywoo gets criticized for at all. Entertainment factor. Yeah. It's what creates coffee fans. And sometimes it's what Vitality needs. Sure. I think Zywoo happy to walk away with the trophies. You know, there's this big talk about Vitality shooting for 10 trophies in a year. The last goal you could have in a year like this. You're not worried about Spirit or any of the other teams of this current year. You're trying to match up to 2018 Astralis. Which is something we didn't think would ever be possible again. Especially not in MR12. Messi's gonna come barreling through. अरे यार जल्दी जाना पड़ेगा. Labored there for the trade frag. Barrel player goes unnoticed. This way! But the Desert Eagle gets away from Heavy God. Still the power of Zywoo and Apex. Mobs could have been the guy to make the difference. Gotta go! One shot on Zywoo, one on Apex, both are dead. It's a 1v1 on Robs. Instead, you find Sunpaya smoked out, mollied out, and a long road if he wants to wrap around Monster. Here. Still though, scary, right? Scary for Vitality to try to take that test into what was the stack Go bomb away. site. I'm out of Scary here. for Vitality to let the player barrels go unnoticed. Scary to give Mobs a chance at killing 2 extra players with a single shot apiece. And scary to save anything here in London. 1v1. Party's over. Vitality just give you enough. G2 goes down. One enemy remaining. Start. Last player I standing. don't think that Vitality are going to be scared of that last win, especially now that the veto's laid out. For me, when I looked at the series before it started, I thought, interesting veto. Here's a spot where you give 2 Attackers picks win. to G2 right away. If G2 win both those maps, yeah, you could have Train and Overpass coming up and out-depth their map pool and end up coming back, but you'd have to make a reverse sweep best of 5 happen. No mistakes. But now they picked up one of those 2 maps.
They answered their biggest issue, which was ZywOo's, a worse performance followed by one of his career best performance in a grand final. Now you have Overpass to look forward to. I think the pressure is actually almost totally off of Vitality here if they get a decent T side to even start. And really, it's on G2. Are they going to show us in Overpass, or are they going to show us that they are a new team? Blew away all our expectations this week. Dismantling Furia yesterday came as a shock. But I think you just said it best. New team. Between these two, that's a ton of pressure for G2 to have to step up to a massive ask in a BO5. I mean, when you think about how long it took the likes of Mouse to ever get a victory over top of Vitality, who are G2 to do that immediately in their first outing? Not to mention 2 months into their existence in a best of 5, let alone a best of 3. Who would you really be to try to upset versus this year's undeniable #1? Overpass coming as the third map of this series does just kind of lock us all into the reality of the situation. This is a long, drawn-out best of 5 affair. And Overpass will play similarly. This is a map where Vitality could make G2 look like absolute fools, and they're going to do it slowly so it hurts even more. Mobs trying to upset that. 2 kills in with the frag and the Deeg. But again, the recovery is always just a couple steps behind. And if this was that full gun round, maybe somebody could barrel through a smoke grenade right here, stop plant, get crazy. But I don't know if G2 are able to get crazy on Overpass. Yeah, that's what they have to show us. And I think they want to get to a point where at least they can make something competitive. Maybe they take out a pistol, they show us a couple good tactics. Maybe it's the clutch that actually makes some of the difference. Maybe they don't win, and maybe they know that, That's a possible outcome. They still just have to apply some pressure. It's not like they can skip this map. They're going to have to live with a loss potentially here. Yet to see, though. Plenty of game plan. Everything from the CT positions to the tactics that they will have brought in. I'm telling you, they will be prepared to play it. It's just, will the execution meet the strategy, meet the prep? Oh. You expecting Rops to get online at some point in this best of 5? Yeah, he had some higher notes at the end of Mirage as well, so after he broke positive, he was a top performer. There's ZywOo, baby, 6 and 1. Can't be missing shots like that. You get an op bullet out versus ZywOo. You are the most aggressive opening move that G2 had to offer. Luckily, Mobs is going to do the same down inside of Khan, but operating on his own here, Madison Heavy God pushing through that short B pipe to try to also get info elsewhere. Rops playing in the middle of it all. Heard that player run back. Guaranteed spike, right? Nice snap over to Mattis, at least bringing one with him, but the numbers were there for G2. This could serve as an activation for Vitality towards A. And if Flamesy does it while the bomb is slowly in tow, Apex trying his damnedest to catch up. Oh my God. Dangerous game there for Hunter, spotted back on bank. Jump on top of that dumpster. This calls in the reinforcement. And this is the moment that Vitality, they should be pausing, taking it to a mid-round. They've got time. The moments where Apex should put the squeeze on Hunter and show what the greatest in-game leaders are really made of. But Hunter almost finds all of ZywOo as he takes up that position on truck. He'll drop his utility and try to get out of here, but if ZywOo dies, that Molotov may never get used. It's unclear how much damage was just dealt. They've got to let Maltz get into position. Maltz versus ZywOo, 5 HP, and timing is ZywOo's friend. Blindsided, even with that minimal 5 points of health to work with. ZywOo, just intuition, right? It's one of his best tools. Yeah, so I think when you come in and you prep this map in a short period of time, you can put together a lot of like half buys, some cool ideas for T side. That's probably what you're gonna focus on the most. CT side, you're like, Mobs, you cool in bathrooms? Like you got this, or you're gonna play blue by yourself? That's a lot of individual prep you're gonna do on CT apart from some opening stuff. I'm saying they're cramming for this exam, right? Weren't ready totally to have to bust this out. But where they're going to fall apart the most is definitely in the late round situations. That's when the aim is going to be heightened for the team who has more experience. That's when the micro of these timings is going to be more familiar to the team that's been here more often.
And that's where the underdog loses their biggest advantage. I think one of the best examples we've had so far this year of all the things we're trying to paint here in this moment is Mouse versus Vitality, best of 5 grand finals in Lisbon, because the 5th map in that series was Train. And even though Mouse had so many outings versus Vitality, so many chances to get game tape, find solutions, bank off of a guy like Cyclone, who, much like Sock, comes in prepared. The real problem was, even after that last map, Brolin walked away and said, it's my fault. I wasn't ready. Think of all the time he had to become an in-game leader to take that swing. And now compare it to the little runway Hunter's standing on tonight. Oh, definitely. I mean, the only difference I'd say is Hunter's actually won more. You know, Hunter's won more, whether it was in a different capacity. Sure. I think like his will and I think his confidence in a spot like that is going to be higher. And that's why I can even see a team like G2 making it this far. Even their nades right now, G2 aren't ideal. They just gave over playground control if it was to be taken. Flamesy actually doesn't slot in behind it, but sometimes it is just a formality, but you've got to land those. Meanwhile, we get this exchange of kills through the long monster pipe. We've seen some early success out of Mobs inside Khan. Joins up with the short players. Ooh, they put a smoke ahead of ZywOo. He'll have to peel back for now. Or will he? You know, frag in hand. Just how crazy does he want to get? Yeesh, Mattis makes a critical mistake. Yeah, it's a crazy risk. Mobs is going to be incentivized to come and try to open this up. Oh, Hunter triple through Monster on his own. He loses his support, but they thought that with that kill on the half wall, they could just take it. Hunter sees the problem in the plan. Oh, he's going to start shooting. Oh, nailed it. There it goes. So Hunter steps up to the plate. A triple kill right. Very good. Also, the tube strike sign was so good. Triple on Monster, let's see it. Yeah. Vitality just kind of throw caution to the wind. They thought they had an opening that did not exist. Almost a one-man army. Yeah, that's a really nasty spray down. That was a moment where Vitality had lots of time in the round, but they didn't have blue. They didn't have A vision. So they did feel maybe a little pressed to make that happen right then. Mob's taking the fight. If they came out on both sides of that monster pipe, they would have been able to get the trade a little bit more efficiently on Hunter, but not surprised he can put up a spray down like that. Best frag in IGL right now. They don't want to think about this too much. Mezzy chance in the house. To be expected. Sunpius up on Dice. They're getting close through those bathrooms. He can kind of sense it. Now he sees it, confirms as Flamesy jumps back around the corner, dodging that sniper. Now this is Mobs. It's a spot where Senpai is going to try to support him from the signpost. A flash can be in tow here. Mobs has to get in front of it. This is really nice. There is no flash. Mobs is just playing active. Drops the third, but doesn't get anything more than that. Senpai doesn't help with the util, but he will help out with the frags. And then I love, he takes this movement forward. Hunter's going to pick up the slack back sight, but oh, he misses a chance to strike them down. And so the scramble occurs here at 25 seconds. Hunter saved them last round, and he could do it right here, right now, yet again. Half health Apex killed by Mattis, who comes barreling out from bank, and a much-needed consecutive CT round win, or else all that economy's in the dump. No, definitely. They got layers. I mean, I love the play from Mobs. It doesn't net them too because of a great reaction out of ZywOo, but if you sit back here, if it's earlier in the round, there's an op all the way, you know, back at, you know, from the T perspective, then you're going to die making that push. But in that mid to late round timing, where either they're taking long control or they're falling back, you either get the flank off, or you get right there where they're lining up off the signpost, there's smokes, and you can take a pick, fall back a little bit. Now you got Sunpius right behind you to refrag. Lots of outs. Nice move between the two of them, and the late support from Mattis, having to rotate over from the other side of the map. Yeah, if there's anybody who I think in this server wants to take his gloves off, since he's hit the playoff stage, it's Mattis. Throwing himself into active moments. Heavy God gets vision, tucks down into his cover with 2 to his name.
Mezzi's Tech 9 makes them worried for a second. Now that AK's empty, but a ton of damage done. And a cleanup quickly, swiftly, pushing through that site. Making sure Vitality don't find anything with those upgraded guns. So pistol, conversion, 4-0 start. But it looks like G2 do have a defense to stand on. And when we started, I said, let's keep an open mind. I think I was trying to convince myself because I don't really see a world in which G2 can actually win this map out of nowhere. But if that happens, now we're in for something really interesting. G2 stringing those two together, looking confident so far. Chemistry is looking good on the A site. And chemistry is something that maybe you can build over time, but for the most part, it's either there or it's not, right? And I felt like that's with what's G2, gotten them this far. Yeah, exactly. It's been there early. We've seen instances of it. Saw almost demands it. Love each other. Now. Mattis wants in, but doesn't expect ZywOo. That's a little sloppy. No molly. No pairing of nades here, off into the corner on their push. Tried to be a little gimmicky with that. Yeah. Got a little vision, but didn't expect the full setup. You can see that frag grenade come spotted. over. Heavy God's gonna nade it. Wow. That was one-way information, and that's perfectly corroborated from Heavy God to Sunpius. Okay. They paired that so you couldn't run from the HE and you couldn't avoid the scope. Okay. Beautiful. If it's gonna come down to creativity like that, and they can make those moments happen, then we've got a game. An advantage, and Heavy God wants something more. He's gonna make a move outside. Ooh, he drops bomb. Reaction is incredible. What's left of Vitality is this short push, but right into the scope of Sunpius. He knows. He's got that inkling. Won't be able to stop Mezzi, who's gonna go back for his bomb, or at least take a look at it. This is Heavy God leaning back. Gonna have to dodge that flash. Mezzi challenges through, and Heavy God wins the heads-up duel. Good on Heavy God, supported by Sunpius, pushing through the pipe, dropping bomb, really taking control of that situation. Yeah, it's the guillotine there on Apex that changes things entirely. And man, now not only are we tied up, but we're talking about 4 rounds straight from G2, not a single bomb plant for Vitality in the middle of it, and these moments of glorious anti-strat where you're just getting blown off the totem pole. Yeah, I mean, I'm loving it, the tactics here. And again, their tactics, it's like they just put that together right now. They just got a little information, let's try something, and they make it look seamless. So Vitality flailing around with pistols, few pieces of util on Apex, really not a lot to get excited about if you're a Vitality fan. Again, we know nothing about G2's overpass. What we do know is that Vitality lost this map to M80. The most unexpected playoff contender. Now, Mulbs is gonna have to sit to the wayside. Desert Eagle to the forehead. Keep walking. That was a lot of vision gain. ZywOo gets the upgrade. No. Offered over to Rops. He's got Kevlar. ZywOo doesn't need the armor. He's just a bomb plant. Hunter gonna push down long, so this could compromise the back end of sight. Sunpius with that util actually flustered, so he falls back into the bank for now. Mattis taking a peek over top of Dumpster. He's looking to peel them off. Hunter comes back at this. It's only Apex in the middle of all of that. G2 look very comfortable as they just let Vitality walk onto site to die. I mean, one important tenet of the map, an overpass, if you don't have long control coming up through short and the CTs have it, like, they're fine. You have a crossfire that's so powerful from truck to long, and they knew that. So they could come in from retake spots, but they don't actually have to retake. There's nowhere to plant that's totally safe. They needed to try to swing on the player long, find out if he was there in the first place, or have a lurk in place to at least get retribution for that kill. Doesn't happen. Timeout gets called here for Vitality. And even though G2 are making a comeback, there's a really high par for them to get these CT rounds. No doubt. It's cute that they can do this, but they still need a lot of rounds. Cute. It is cute. Good for them. I think G2 is thinking the same thing. Oh, you think this is just cute? Great. What's really in store for us, man? What is Mulb's entry fragging on overpass gonna look like? I think the entry fragging is going to be pretty cool. Right? I think it should be, yeah. But also, Vitality CD side overpass, you might not see around. Only time will tell. For now, we
just watch and see how much momentum G2 can continue on with. This is 5 rounds in a row, not even a bomb plant. Nothing has come for free since G2 won their first. And that first round put forward by the Hunter 3K on the monster pipe, right? That was the one moment where Vitality, they had control of the situation, but they almost sort of rushed it. Like you said, didn't even come in from both sides of Monster, jumbled up on one half of it. It was about a minute that they had, Yep. So they could have waited for the whole smoke. You know, a moment where they maybe got overconfident and suddenly, blink, 5 rounds in a row for G2's defense. Definitely a couple of rounds here where use of a lurk is welcome, that we don't really see for Vitality. They never have, almost never have blue control unless they're taking a full default like this. Even having just a late option towards A, you know, just to make sure they know they can slow it down. Whoa, that's a opportunity. It's a hard shot. He's aiming high. He's looking for an op up there. It's actually Mobs who's like, whoa, I didn't expect you to be here at 40 seconds. They're that far back on long. To be honest, the reason Mobs makes this push is because time is low for Vitality. They've got to get a move on. We hit 30 on the clock. You just said that to take A without long control is the bane of an A play. Well, here we go. 3 players, emphasis on long. Flamesy to lead the charge forward. CT's on site. Oh, that's a Hunter flash. Hunter flashes Mobs on his rotation towards Bank. Sunpius, they didn't know about him, so he's in the pocket, but ZywOo slays him. Hunter tries to save this. That bomb has to go. It's down. ZywOo late to scramble, just has enough time. They're going to sprint at it. He's going to run him down. Oh, but it's planted. It's delivered. Slides over top of that truck and saves the day as mistakes were being made. Robs can't hit that shot, the trade, before the plant or after. We're watching that from the winner's POV. Time is a factor, even though they get this plant in at the last second. Look how rushed it feels. Woo. Again, Mattis on scene, looking for fisticuffs. Robs could have just, yeah, Robs could have won that right there. Just had to cover the plant. G2's 6th round, that's not small. Money's low. Actually gets a little worrying now for Vitality. It's a full-fledged comeback. It's leaning on the CT side of overpass, but it's undeniable. 6 at the top of the screen. ZywOo into the play already. Doesn't pounce immediately on Sunpius, who would have had an awkward close-range shot, but instead, Vitality rock this boat back down to B, but what about with Mobs inside a playground? If they push Sunpius back, they also get Mobs to rotate back around. Instead, now they're just surrounded. Oof, and he's eating flashbangs here. Heavy God's anchor is going to be made difficult. Oh, both go down. Very nicely done, Vitality. A kill inside of Connector for once. We've seen Mobs thrive in there. Get his or find space. I love it's a minute 10 and they make this happen. Ooh, okay. Is this still a doable round? G2 spotting knees over towards Monster. Mobs trying to flush Robs back. Oh, that's a nade for good damage. Robs, oh, eats another, but in that second frag grenade finds his headshot. So G2 taking a look at it because they know you all hate saves. He's coming for it. Can't blame Sunpius trying to play around in short side. 3 survive for Vitality. And as we get to the very tail end of this first half, at the very least, a 5th terrorist round win. That's a nice snap call here for Vitality because they get this kill, they move quickly, and when they run back down the stairs, they know they're giving audibles up. They don't know to who, or if they're gonna matter, but they would have if they took any longer. Mobs' flank would just grow with effectiveness as the time went on. You look at the clock, it's a minute 15. To go into a B exec on a T-side overpass right now, at a minute 15, like a lot of things have to be in position, and they had them all, they didn't overthink that spot. Very nicely done for Vitality. It's a bit of a relief for Vitality knowing you can still break through, even with the damage. Almost unfair. 1 hell for Flamesy. But don't hate the player, hate the game. We're gonna pause for a second. Let G2 stew in this threat. You know, 4v5 success rate was a big talking point for G2. Back on Dust 2 at the start of Mirage. A 4v5 on Overpass. Ooh. Take it if you can.
got the defenders on site ready to go as smoke is about to fade on Monster. And HeavyGod's been really happy to try to press his luck through this kind of a setup. They're gonna go 2 rifles over towards Monster. This could definitely catch Apex off. He's just hit by both barrels, but they gave up space for Mezzi. And so is it worth it? You sacrifice sight to try to take a singular fight instead, and you put poor Sunpius into an impossible situation. But look at the damage that was done there on that attempted hold. Mezzi walks away with the 2K. Vitality are about to walk away with 6 rounds on this T side. And London are about to find out if G2's attack has anything to offer us. This is a massive unknown entity in Overpass. Sunpius, hate to break it to you, you're done. 6-6 on the half, folks, but a tough attack up next. I will be joined by some of our favorite players, looking at their setups, looking at all the little details and how they position themselves to own people in the game and win those big trophies. Let's see what happens. What are you doing first? What's the first thing you tested? Table height. These tables are pretty easy to set up. Oh, so you know this is calibrated correctly. It's on the money, it's perfect. I think you're gonna have an issue down here. You have quite a unique way of playing. Kinda simple, you know? Desk height to start with. It is. One enemy remaining. One enemy remaining. Spike down. One enemy remaining. คิวอีก2 ตัว 3 ตัว 4 ตัว อุ้ย One enemy remaining. Okay. Hey bro, hey bro. One enemy remaining. Spike down. Ôi, đẹp ngon, đẹp ngon. One enemy remaining. 디아락스도 이거 프림이 무서워서 스킬 좀 많이 투자했습니다. 와! 프림이 에이스! To double to start things off. He waits patiently. Primi tries to Yeah! teammates just to clear on some of the corners. This is the first headshot going through now. Smoke blocked off. And then the second gets down, though. Took down Jin Boys. And now it comes down to the peak. Primi! One swing out. He is prepared for it. Buzz heading taken off. Primi. Moving 5. Ya, tapi kau expose you hold, man. Holy shit, man. Again. One enemy remaining. One enemy remaining. One enemy remaining. Seek them out. Found one.
No more dreams. One enemy remaining. Nice. Ended. One enemy remaining. Nice. Nice shot. One enemy remaining. Nice. What? มองให้ไม่ได้อะดอกโอ้อะไรอ่ะ โอ้ เฮ้ยดิวขาวเฮ้ยเอาบอกมาครับผมเดี๋ยว Spike down. He does. It feels like another 2K in a spot where they've got top bathrooms to bomb in tow. It's Vitality who now have to figure out how to get a kill and join up. You know, the proactivity that we were missing from Vitality on map 1, we saw that come through more on map 2, but I don't think it's at full strength yet. These are the moments where they can really show us how they can outthink their opponents, not just out-aim. And here's the proactive play. Yeah, it's got to stay quiet though, right? Walking the whole entire time. Mezzi spots Hunter. But Vitality just pushed this over. 15 on the clock. Mattis again. He is the solution. 3 kills into this recovery. Flamesy's got him. And that's going to force Hunter's hands into the plant on the opposite side of Dice. Flamesy runs him down. The kill comes the way of Vitality. And they will find themselves both pistols on overpass with what could be a damning CT side ahead. That could be everything right there. Flamesy finds the perfect moment to run that down, where Hunter has to stick the plant because he doesn't have time to get off, take a jewel, and go for it again. Really nicely done from Flamesy in this spot. And Mattis, I mean, he really tried his hardest. He did such a good job in this position. Double peeking to get that fight is fine. Just both their bullets missed, right? Could have been a plant, go down. I think he just wanted that round so badly. And you can't blame him. It was theirs for the taking. Their odds shoot down. It's already going to be difficult with that pistol. Now they shoot way down. I know Vitality now can kind of just, they can little bro them a little bit. Yeah, I mean, we saw how long it took for Vitality to get back into their own T side once the momentum of a pistol win dried up. If you've watched any overpass, you know this tale. It's as old as the map itself. Got the reminder from Hunter to play like scrims. Remember the practice. Zywu's got 3 players in front of him. Makes quick work of the first 2. Rox is perfectly positioned to help out. Dude, I was looking at that angle and I was like, how well will this work out? You know, why not just fully tuck? And he sees the shadow of the flashbang. It's so perfect. Zywoo tapping right back into what he showed us on Mirage, which is one-man domination. So unleashed here inside of the bathrooms, like you said, kind of. Okay. It's the real deal. No. Gold, gold, gold. Gold, gold, gold. Never give up. Great tethering here as Rob's on the back of the site. Oh, totally. Zywoo sharing the love. Deal with this guy for me, the only rifle. He's so confident that he's going to get that helping hand, which is nice. You know, it's a classic, the rifle and op combo of your A site on overpass, right? There's been some nasty duos in the past. That's the other thing, like overpass is very much a star player map. You have a star rifler, star opper, and you put them together on A site, and then suddenly you can beat any team. And like, we knew what that was going to be like. Yes. For Vitality. For G2 is more of a question. In terms of reps, in terms of form, and everything like that. You're not going to surprise to Zywoo. We're going to take Zywoo every time. Map 1, maybe not, but now he's back. Heavy God, however. All right. What a response. Well, Rob's concerned about block. Oh! Oh my goodness. We haven't had a round like this actually hit the scoreboard. Everybody's been able to recover, but this could be the one that does go the distance. G2 trying to get away from it. Flamesy's flank perfectly timed. Mattis, it's utility over the top. They might try to push. It's picked up weapons for the side of G2, but Mezzi keeping the pressure on the plant. Hunter, can you shine? Oh, he finds the timing! And then there's damage in through that smoke. It's a Mezzi clutch on home turf.
And Hunter plays around the smoke, getting away from him. Oh, it's perfect. Mezzi's got a kit, so this timing could still be saved. Headshot from Merryman. Damn. That was very slippery from Hunter. He was full camos. He snuck around that smoke, but it's the reaction and the raw mechanics here from Mezzi that saves him. Nearly the eco one here for G2 off of a couple of great eagle shots. And in what could be a difficult T-side ahead of them, this would have been such a fantastic way for G2 to kick off and answer while the lead was still minimal. And that is not, actually, you can see Mezzi, he had an eye on it. He was suspicious, so. That can't be a coincidence. Apex has the most Famas kills in big events this year. That kind of makes him like the Frenchest of Frenchmen. Yeah. As if we didn't know, though, is the thing. I wonder how he's feeling right now. Probably better than he felt after map 1. There's 2 big best of 5s this year where Vitality, they weren't free. Versus Mouse versus Falcons, like they were tested to the bitter end. They've been there. Ooh. No, that's crazy. What a shot. In a gun round 2, that's lovely stuff out of Rops. Honestly, though, the tempo of it all still stays quick, and that's something we praised G2 about in previous maps this series. Flamesy coming up behind, take advantage of the fact they're down a player. Yeah, and they're not watching this flank either, so bomb drop by Flamesy. That's going to draw the attention of the 2 remaining G2 players. They could catch him. Oh, they shouldn't have caught him because of the shadow advantage. You'd think Heavy God wins that every day of the week. Oh, he just slipped under that, no problem. Not the case. This is a CT-sided map being dominated now by Vitality. 4 consecutive rounds win. Sure, G2 got close in the last one, but close is not going to cut it. No, yeah. Same thing happened in the first half. You know, you can get scared by it, these opportunities, but Vitality are in their comfort zone right now. In the lead, on CT, on overpass. It's a matter of reps at this point. That's what's shining through. That's what G2 have to fight against. They need every little bit of X factor, maybe a 1v2, maybe an ace to come out like ZywOo's put up in the last 2 maps for Vitality. They need it all. They want to steal this one away from Mezzi. We've talked about it, and yeah, imagine how proud you'd be. You know, a guy like Mezzi, class act, on a team like Vitality right now, having the year that he's had. Represents the UK well. Rops swinging it out. Even despite the flashbangs, that pressure, and the chase that's supposed to catch him on the retreat. It's emergency routing here. I think he knows he was going to get chased. Yeah, definitely wanted to head back towards bathrooms. Instead, he's got a chance to duke it out with Mattis, who I believe just made fast steps. So you give Rops that little bit more information. This is like Solid Snake. They're actually assisting him. The flash is good, but Heavy God dodges it. Feels like he knew he was doomed, so he just tried to get the most out of that round as he could, and 2 kills out of Rops before they even get to bathrooms is massive. ZywOo not going to miss his shot comfortably on that angle. Kind of crazy how many times Vitality only have 1 at A. Sunpius, though. Oh, had the jump on ZywOo. Wow. But ZywOo with fast reactions. And the thing is, if they played on site, they'd be at risk of losing that 1 player and then the exec happening. But since they're playing off site in aggressive spots with good angles, they're in a position where if they get a kill and die, at least they get early info. The rotators can come up. It's helping them reinforce the rest of the map really well. Rops and ZywOo are somehow getting all the frags, even though they're not even playing together right now. I mean, we haven't even really seen that B site tested, have we? Yeah. And that's the thing, you kind of got to kiss the ring over at A first. It feels like to even get a chance of, you know, earning the respect of your opponents. And if you're going to go be in these spots and it's only Rops outside of bathrooms or it's only ZywOo on his angle by himself, you kind of do have to be able to kill him. Yeah. Right? Like you have to be able to take that 1 guy down or force them back. That is the whole point of overpass, really. And they can't pass that first test yet. No, and you had, like you said, 2 disjointed members of an A defense in Rops and ZywOo. They're too hard to find.
Yep. Oh. Ooh, we're getting there, aren't we? Yeah, it feels like Vitality might put a bow on this. But we heard from the listen-ins that G2 are here still laser focused on the objective of finding a way to win. Tough to find a solution in this dire moment. Again, you know the odds are stacked so high against you. You know you haven't had an official outing on Overpass. You know what I like most about the Hunter pause? Tell me. It's that he's angry, not confused. Sure. Angry, not quiet, you know? He believes they do have the prep. I think there's also something powerful in having a fatherly figure as one of your in-game leaders, because you know that there is importance in tone and the way you speak to people as well, and not losing your head. And Hunter's always kind of had that calmness about him as well. Intensity, but still everybody on the same page. That's the G2 mantra. Flamesy, yeah, puts them all on the same page. The obituary. Easy does it down on that B site. No contest as they tried to just creep their way at him. Apex ZywOo thrive. 6 map points here on Overpass. They finally go take a look at that B site, and it ends as quick as Flamesy chooses. Yeah, another 3K defense. You're going to need a limousine hearse for these spray downs. Just putting him in the crypt. Huge ask with the pistols. I tried to allude to maybe some kind of a Mobs entry frag getting going on the T side, and sure, losing pistol has limited the runway they have, but he has just been getting bested by Robs. Sitting unfortunately down there, 8 kills, 15 deaths. First 2 maps of this best of 5 get robbed by the opponent. The picks don't matter much until this time. Oh, how'd that get there? Damn. Of course we have the answer. Wow, that's actually nuts. Where's my vape, bruh? Mattis walking through. You gotta find some positioning close to B. I mean, look at the mini-map. You really believe this B site is gonna stand the test of all of G2? Frag grenades go a bit too deep. Flash finds its targets. Info on the second guy. Flamesy with a chance to shine again. This time not just versus pistols. May not make a difference. Mezzy gets one from beyond the grave, and it's back-to-back triple kills coming out of Flamesy. Here's Sun Pius with it all to do. 2 left to do. Too much to ask. G2, no officials on Overpass, and their first outing is a loss to Vitality, who have an edge in the best of 5. Side of Overpass, an uphill battle at the best of times, let alone when you've never had a single official on this very map. G2 fully feeling the wrath of Vitality's pick as map number 3 in this best of 5. That was a very, very commanding win coming out from Vitality. A little bit disappointed in the display by G2. I was hoping they would remain competitive on this map in this series, but it does feel like it was a G2 that came out a bit shocked compared to what happened on Mirage, obviously. ZywOo taking over the game, heading into the 3rd map, you think to yourself, that's a great opportunity getting to start on the CT side, but going down 4-0, never really getting into the game. The few moments they had where they could take control on the CT side, they kind of missed out on. So yeah, slightly disappointed in G2 and happy for Vitality to bounce back and looking like themselves again. It's a great chance for them to get back into it when you go into map 3, starting on CT side. Yes. But then you lose the pistol, then you're down 4-0, and then it almost feels like no matter how well you do in that half, even if you 8-0 from there on out, which is simply not going to happen when you're not quite practiced on the map, it's still a good T-half for Vitality. So they were kind of playing with house money for the rest of the first half. Yeah, I totally agree. I mean, as soon as you're up 4-0, it really feels like you might have just won the game for Vitality. That's how one-sided Overpass has been since it came back. 3 minutes.
cleared him. Doesn't have vision. No. Just past the Nope. doorway. Can't help out at all. It's never easy to get one over, Robs. We see that it can't happen 2 rounds in a row. Heavy got bested in prior. Take a look at these nades. Take a look at these spam timings as well. Oh, nice nades back the other direction, however. That's almost Flamesy dead. They're going to blow this. Aye, they find it. That's missed shot from Zywoo. Robs versus Heavy God again. And Robs gets his revenge. Slightly. Bomb is down towards T-Ramp. This could slow down everything, but remember what's left of a B site. Flamesy, 15 health. He's got a full set of utility still. And as Mattis peels away through middle, uncontested. Looks like we're already going into a save, if not the gamble. Vitality hoping this ends on A, but they are going to be wrong. Well With that done. kill on Apex behind the car, you just know they're going to sniff out what's left of this B site. I mean, that's so well done. It looked like Vitality, they're kind of playing Battleship right there, right? There's a full-fledged smoke. They understand someone's probably holding on the top banana. They're not going to play full passive. But where and what angles they're exactly holding, well, that's up for debate. But while that smoke's still active, here's ways we can put pressure down. We can have this smoke spam come out. We can nade behind it. And here is Apex just trying to hold his nerve, wait for his timing. He's got a teammate behind him causing distractions, lobbing things over, but ultimately, like, it looked like Vitality had control and composure in that spot, but G2 were kind of ready for everything they were about to try as well. So nicely done. It's a full house here in the Wembley, waiting for Mezzi to try to achieve the trophy hoist in London. You can feel the desire in the air, but you can also feel the fight from the side of G2 right now. And this is why, you know, Jacob said that Mezzi is not a huge win condition for Vitality, and that's because he's going to be playing, he's going to be anchoring pit, right? If he was a B player in this spot on CT side, he'd have a lot more say. When the round came to him, he absolutely delivered, gave Vitality a lead, really continued to impress, and now it's kind of shut off the valve on half of the map, so that's huge. But ultimately, 70% of the rounds are still going to start banana. Happy to try it again, huh? Flying down and through alt mid goes Robs. Rob's going to actually escape off this too. Finally, this smoke coming through. I'm curious to see Apex actually giving up so much space over towards the B site. When you take all of alt, get your kill, nobody obviously sitting on your side of the mid push. He doubles back. This is late picked up util, and of course they're going to catch him. He can actually chain the mollies, and a third one's coming over too. Zywoo's ahead of the utility out from the T side, misses his flick shot over, and Apex dies inside of the little pit. Zywoo wants to try to contest with this, but look at the rest of Vitality, still nowhere to be found. Those T's, they're going to have to plant this bomb. They've got a late smoke, which is huge. It doesn't feel like there's huge odds of an actual retake happening. G2 just have to not blow it right now, and they can win on time. There's a lot of retake utility for the CT side. Frag grenade, incendiary, this could be the one, smokes. Sunpai is holding back on flank. Robs, he gets toppled. And it's early damage on Mezzi as well. That's going to take the wind out of the retake sails. They hope they can get away, but no guarantees. No saves in London. Malbs gives chase, and I'm just left scratching my head. I'm so surprised. Break it down. Killed down alt mid for both teams, and it felt like G2 realized B-site was the way to go. Vitality a little slow to that draw. Apex ran back for grenades, I think it was, and maybe that's what cost them, that timing that allowed them to just group up. I don't know, he got there in time. He got the 2 mollies down as well. He ended up getting spammed down through the smoke. That was the main kill that allowed them to come through, but they didn't actually run through that first molly. They let him throw it, then they got this spam kill. They also had vision on Zywoo coming out through Khan as well. So a couple of failed attempts to go for these aggressive aim hits from the CTs. Trying to get opening kills down mid through alts. But if we've sang the praise of G2 for anything tonight, it's the fast response, moving quickly into the next position, finding the solution to the sudden problems. Yeah, they know how to sequence, and they don't like put everything into one kill, like one tactic. If they feel like they try to ignore putting everything into a pick play. They have an idea they're going for,
They are very fast as well about their transpositions from one tactic into a strategy. Oh, that's insanely successful. They get info. ZywOo, whoa, dangerous to go back into that as well. I can't believe they're actually peeking this, but that is what G2 do. They don't care about the opening kill. Flamesy tries to drop fire in front of him. Apex's flash is fantastic. Bomb spotted, they'll fall back. HE could do more. Flamesy just tucked in, hoping Apex can bail him out because he's taking damage. And now there's a lot of players ready for the Apex swing. Pious instant headshot. And a great answer from G2. Man disadvantage has not been a problem for G2 when they're finding success. And it turns out that here on Inferno, they've got a little more left in store. Mezzi and Robs have been playing well enough on Inferno, but at a man disadvantage, do they take a chance at the retake? Utility to keep them out. An additional smoke on the CT cross. Tough job for Robs to get into the play. Mezzi could serve as the jackknife, but he's playing on 40 health. If Robs had 100 over towards Coffins, if he could take that fight, try to unravel it, then maybe. But Vitality realized their chances of hanging on to a lead on the CT side are dwindling. They are running out of room, and G2 closing that gap. That's great. It's uncanny, actually, the way they're consistently pulling this off. Again, it's not a flash in the pen. We all know, you know, sometimes you call a clutch, right? It's 1-on-4. But the last player got a kill like a second before, so it doesn't feel like a true 1-on-4. And the reason is because you have that instant distraction. It's the same thing with these 5v4s for G2. They're letting a kill come down, but if they ignore this death entirely and they keep running up and Vitality think you're gonna reassess the round, well, no, that's not the case. You're still coming. It's as if nothing happened. It's just now you've lost your third player to trade in. Your entries can still work. And if your entries can get 2, then you actually have a chance. They're ignoring the pain. The beauty of this G2 run in London, they have nothing to lose. I don't know who else is doing that right now. They've proven so much already. You know, even ignoring deaths, sometimes ignoring damage. Mattis has really been trying to find a moment that he can leave a mark on Vitality, and his timing, of course that's gonna catch Apex off. But what is the setup right now? They're passive on both halves of the map after this buy. They have good guns. ZywOo. They have utility too. And Flamesy trying to push off site. Malbs on the departure, peeks back into it. ZywOo's right there, hits the damage. And so that's a third member of G2 wounded. They'd love to have more info. Malbs getting tagged though allows Flamesy to have a chance to poke at this. CTs are just curled up. Ooh, smoked off. What? Mattis is afforded space, just comes in, clears it all! No way! He just cheats the timing and drops all 3 bodies single-handedly. I'm telling you, that writing has been on the wall since his P250 solo push up short almost took down a bomb site. It feels like Vitality needs to make more use of their pauses. Because with the way that G2 are playing, it's like suffocating their ideas. They came into this one with almost nothing. That was the shallowest looking round ever. It looked like a force-up the way that they had played back in the site, and they allowed a walk-up that early on towards the A site. Felt like they were having just a team meeting inside A. And the hunt is on here for G2, trying to bottom out Vitality in this attempted save. Final round up next, and there's tons of cash in the coffers for G2. You're gonna get what you want. Flamesy, dead man hiding. Trade comes through, and that is 1 round the gap with what is a non-timid G2. Deaths, damage, they don't give a damn. They will follow through with conviction either side of the map. Huge moment here for Mattis. This is the textbook definition of sticking to your guns. Creating timings is what happens when you play with confidence. And I mean, Apex losing his mind in the middle of a round that needs to be recovered. It's kind of wild because, yeah, it needs to be recovered, but like, what was their opener right there? Apex now in the Mag 7 here in round 12. G2 are responding. Of course. Play long enough, pushes buttons long enough, and he whipped out the Mag 7. He'll sit on that half wall, and he'll wait for you to try to walk it forward. Of course. That felt wrong. Not out the smoke. He gets found out. This B site looking prime for the taking yet again. Flamesy trying to hold it on his own. Will get the return back to Malbs, also through the smoke. Everybody playing the same game.
But we've said it, G2 lose a player, does it deter them? Do they stop? Are they afraid to just follow through with what they wanted, which was so clearly this B site? And some calls aren't out of spawn, besides sometimes them having the tactic of having mobs go 1-for-1 on some duels at the top of Banana. But when we get into the 4v4, G2 are not actually disadvantaged anymore. Even though Vitality are the last team to get a kill here, it's the CTs who are a little more insecure about the map. We can see that Flamesy at the moment is totally alone. This is actually quite a crazy setup if we look at the T side. Oh, this fight here between Mattis and ZywOo. But, oh, you heard the step. 3 loud steps. Mattis is going to have the back of ZywOo. The fake is working. They've got the flank. Bias is holding it just in case, but Mattis gets timing. How many times can you shoot ZywOo in the back? Rob's trying to challenge out through the library. He has found a chance to challenge towards this balk. What a play. Heavy God hits the headshot. Bomb's got to cross over. Mezzi gives up the angle. Flashes come beyond him. And with this post from Mattis, who has yet again found a way to unravel this A site, we were sat here singing Vitality's praise. My God. A 6-1 lead. A 6-1 lead that didn't have any bomb plants, barring the one round they won. This is a massive response from G2. Donk, just by pure individual skill. Donk is playing amazing lately. I mean, he's always amazing. Individually, obviously Donk. You watch him play and you just know he's gonna get a kill or 2 or 3. Without a doubt, for me, it was ZywOo, just because of the amount of titles. If you want to put in trophies and everything, then I think ZywOo will be it. ZywOo won Major, they won Katowice, all of the major events, let's say. In terms of achievements, it could be me. The trophies are what we play for, right? I would always go with the players who won more trophies, especially crucial trophies. I think if Donk can win more tournaments the second semester and get closer to the amount that ZywOo output in the first half of the year, then yeah, maybe Donk's going to be number 1. I think both of us, we are in the road to be top 1, so I think I just need to step up a little bit for now in terms of individually and maybe have a chance. करोड़ का सवाल है वीपी क्या हो गया ये डिस्कॉर्ड ही बंद हो way into T-spawn. He'll see this clear for the taking. Oh, there's that shot. Donk hits it. Haircut on snap. Spierdalaj. Cypher put trap 50 on Arena. Oksbi. I'm revealing also. That's on side. अरे मैं All right, I found the banana squad in the middle of the overall arena up high. Just talk to me about how you ended up with this story and the crazy fruit salad story. Well, we were originally going to go as a fruit salad for FaZe, so, you know, kiwi for Carrick and banana for Brokey, but then in the end we just decided we would go with bananas for Inferno. So obviously we were looking for map 4. We obviously need Vitality to win this map, and we'll go crazy when it's Inferno, you know? So when it's Inferno, we're going to see you guys just absolutely mental, losing your minds. Every time. Banana.
banana every. Well, London, I'm also surprised that we end up at a tied score after the way that one started. Felt like Mezzi had found his mojo. That A site was rock solid. There was 5 rounds in a row for Vitality without a single bomb plant, and then the G2 answer comes out of nowhere. It did, and I mean, what an amazing call. It's kind of sad it happens right at the end of the half, but for Hunter, that's like one of his best T-side calls so far, period, with this new G2 lineup. The way that they searched out halls, took banana control, sold the fake. It's often said that ZywOo never gets shot in the back, and they had him rotating first down mid, thinking it's for sure a B player, and the entire time it was going to end up A. That was masterful. That ties up the game. That puts them in a spot now where they're a real threat to bring this to train. They've lost 3 consecutive pistols, G2. Time to turn that upside down. It's a one-and-done Hunter. Mezzi leading what's left of this troop into the arch side. And for now, G2 stay pushed off site. It looks like Vitality are going to spread out. This is quite weird, actually, for G2. Now, You're telling me. With the spots that they're in, they can't move too much. They have to still respect the fact that the wrap can come back towards them. It's nice, but for Vitality, they don't have anyone playing Bell or playing Logs, and Mobs is now searching. If Apex is going to come up late and he doesn't see anyone flanking mid, this should end up going in that direction. But yeah, he's not on banana, so they're going to walk by this and just make the split happen back to A. No mistakes have been made for G2, but also no movement. 2v4 here. Sampaya shows a little skin. Apex getting closer. Once he arrives, it's 3 from Moto and ZywOo P250. A classic. ZywOo T-side P250 armor is a beast to have to deal with, and Heavy God's not going to be able to find anything on this one. So Vitality slow it down, take their sweet time with that split, and they put G2 on ice. I mean, that's an excellent call and response here for Apex to slow things down, make sure it's still 2-2. No pushes have been made. And we'll see now if a retake is possible. Laser sharp precision here for Mobs. You'd think not, but they are stomping forward with confidence as if they can still win this. Then Vitality swing. Yeah. I mean, when they looked for a response, right? They threw something out there and they said, take the bait. Either give us vision to take a peek from Con over on B, or push out of A and show you're going to help your B teammates. And if not, we know that you haven't moved anywhere. And that means the rotations are as long as possible. That's where this retake was just done. You know, there wasn't even going to be a chance of it. This is such a good call on this pistol, and it's Vitality again. The only team, it feels like, that can win pistols versus G2. That's not the spot that you want to freeze up in if you're G2, but it is the spot where it's a little quiet in grand finals and you don't want to be the one to make a mistake. A little proactivity was needed there and they couldn't find it. Mom solo B-hold for the time being. While we watch G2 try to scramble and win one with less. NA flash. Used to be able to say UK flash. You can't say that anymore. No, you really can't. Mezzi changed the game. Look at this stack on brackets. Quad hold by G2, but the bomb's still over towards Banana. They're gonna send the MAC-10s into their deaths. This is gonna keep a player stuck. Never mind, Robs does get a chance to come and join him. That was much needed out of Mobs. Yeah, and that fresh smoke, they try to walk through. ZywOo look for a lead. Now it's 2-on-4. But still, G2 don't quite know whether there's a full commitment because ZywOo was indeed on his own. Mezzi's gonna try to move this one over. Robs turns over to kill Mattis. They know Mobs is back here. Can he drop another body? No. And unfortunately for G2, they're just not close enough to challenge this. They come in, they jiggle, they recover everything. And Okay, now इनके पास guns है, उनके Robs पास भी है, should but have an easy time. Much better guns. MP9 so far away. Gonna try to get close to the CT cross. Mezzi takes a bit of damage, but that's all good. Vitality hang on. Good on Mobs to hit that deagle shot. The chances of G2 robbing that round spike with that kill on ZywOo. Absolutely, absolutely. But the rotations weren't fast enough.
It's another situation where the defense is bifurcated. They're playing so far away from Mobs that even though he gets this kill so early, they can't come and help him out. The other thing is, if you're also on the far end of your own site, you don't know if you're getting lurked on. That slows down your rotation in a new way. You're worried about pressure that may or may not even be there. Still getting those kills is not small. G2 can be proud of themselves for that. I would hate to be heavy god this round. It's been a tough map for him so far. Can apply that to most of G2 as they sit back here, hoping that this flashbang on Mattis can interrupt something from Vitality. If you got so close in the last one, give this one a try. Mezzi at the tip of the spear with G2 inbound. The bomb is on ZywOo behind Mezzi in a real crazy turn of events. But this would have to go very badly. And now that they've seen anybody, ZywOo wants to get the hell out of there. Mezzi trying to peel back as they go for the half-wall jump spot. And while G2 take up this position inside of Banana, they never really jump on it. They don't pounce. And so it doesn't look like they've got anything. Flamesy catching wind of Heavy God in that process. And this ends up being a very strong statement for Vitality. Getting away from the danger of any kind of Banana play. This Mattis P250's got legs to stand on. Yeah. But it's 4 players strong for Vitality with a 3-round lead. Yeah, he is getting kills. He is definitely putting up some kills on these ecos. It's good to have an idea that comes in for G2, but I'm sure they're fed up at this point of losing all these pistols. Three-round gap here as Vitality look to take control with the final stamp on this game. Round 16 ensues. We've got a good buy here, both sides. Boy, Mezzi charging through. Whoa, he gets the one in the back. Mobs traded out. Mattis makes the difference. With 9 health, he gets that kill. Unbelievable. Sunpai is catching the side of Robs as well. Apex taken down to half. Guns will make a world of difference. Oh yeah, now we're talking. G2 chew on Vitality, spit them out, looking like chumps. As Apex makes a run towards the upgrade, bomb in his possession, but G2 aren't far off. Yeah, some extra frags are nice, but Apex will be heard running back and forth here in the spawn. You know, we never really got that Mobs moment over on the Banana aggression as the Deaths tried to paint, and it's fair for them to try to paint that picture because it's been this consistency from G2. Now that they're on the defense, the Mattis push with Mobs for the double kill, as you highlighted, 9 health left over. Banana and the rest of this round looks very different if not for Mattis. I just love what we see from Mattis when it comes to multi-kills. He's somebody who, when he's alone, no matter how much HP he has, you know he has a really good chance of getting that second frag. I've just been so impressed that he's doing it in front of this crowd. In his first outing. Yeah. Like, you know, having a debut this year has been a nightmare when Vitality are in every tournament, and you've got to play best of 5s at almost every final in 2025, especially, you know, big events. So there was at least peace in knowing that everyone's in the same boat as you. But it's a difficult challenge, especially for a first showing, especially with the amount of amazing stories we see from all these new players. But it feels like we forget about the other ones. Mattis is just so impressive, even if he's not quite a dunk or something like that. It's a great early answer. Vitality with a momentum call. Huge. They really try to play that one scrappy. In ZywOo's absence, it's Mezzi and Robs trying to keep this game alive. Again, Banana bombarded by nades. You hear them whizzing over your head, but you just hope they don't land on you, and so far, all that damage dodged.
It's again this game of Battleship. CT is going to look for their timings to release their utility. Vitality's job is to try to get closer without taking that damage. Whoa! Mobs, no second! It's Mezzi! This time to get his double! Well, maybe he can be a win condition. That's 17 and 7. 2 entries on Banana. Not something you often see Forces Mezzi have Hunter to do. off-site, onto the sandbags. They've got flashes in the back. Could have just sat on site instead. He decides that he wants to draw a line in the sand. We'll see if Apex backs up, then he'll set up the flash. We'll see if he does it. That's what's going down. And over towards the A site, it's more successful. There it is. Vitality, perfect flashbang, and Mezzi comes through with a trio of kills. It's a full call out. 10 rounds here. Good on Mobs to catch ZywOo, burning there for a second. It looked like they were going to try to put out the fire. Instead, ZywOo, burning, is an audible for Mobs to lock in on. Gets his headshot. Mattis swings and falls to Mezzi, who from that corner had to thrive. Who's proud of Mezzi in here? Topping the charts. Show-stopping performance here, and again, it's both sides. It's that CT moment he had on the defense. Now we got these T entries as well, where it was necessary, by the way. It's one of the elements of Mezzi that I love in terms of his play. He's a classy Counter-Strike player, and that he'll wait for his moment. He'll wait for it, doesn't want to rush it. 3 राउंड जीत गए ना, ट्रॉफी इनके पास and then pulls it out at a critical juncture. I mean, to reset G2 now, their first gun round, they straight up win. Banana looked like it could wind up being a problem, but bam, Mezzi controls that spray. You know, this is icing on top that Robs gets the ball rolling in the opposite direction as well. This is all Mezzi, dude. We could have ignored everything that goes down on the A side of the map. 3 kills up Banana, all by way of Mezzi. Yeah, the protocols met the aim right there. And G2 down to 1 timeout. As the sky starts to turn gray on them, they have to now live with the fact that a close moments that they've been able to win versus teams of, you know, equal capability like Spirit, but now in this grand final on the big stage, they're now starting to lose grasp of them. They're not quite as easy. Their team is not quite as clutch. Heavy God is not that player that we've seen in the rest of playoffs. Mattis as well. He's been good. They are still good. But here's where the superstars are starting to take over, the monsters of Vitality. Yes. G2 are still good, but they are also new. And we raised flags as to whether we would see that come through in the series. The inconsistency shining. Mobs, oh, he can't manage a multi-frag. It is Mezzi the solution yet again, as he falls off and doesn't want to force the issue in the off chance that Mattis comes wildly swinging. Mental reset. Apex down to 35 health. 4v4. So much about the lurking, so much about the reads. And the CT's in this spot. 3rd chance here, CT side. Split 2-2 to sites. It's time to be proactive. They're jostling back and forth on the front of this. Hunter was just on an open angle. Instead, opts to move over towards Coffins. And Flamesy's seen enough at that A side. He wants to get into this play. It's going to be Mezzi the spearhead once more, trying to get away from grenades. Mattis flashed in. It is a perfect flash. It gets him 2, which is huge. However, no support yet for Hunter. He's gonna perch, and Apex walks into his death. G2 have mustered together some kind of an answer. Flamesy fully blind, and the team play from G2 is fantastic. Oh man, they are messing with the most minute timings to pull that flash off, and there is that prophylaxis, the flash to reclaim Banana control. Of course you trust Mattis to put up the 2K again. Another multi. With a FAMAS, no less. And when I say you're playing with minute timings, if you let the map go too quiet and you throw a car flash, someone's playing anti, someone's up against the wall, and it's not the kind of round where you can go and just try to get info. Mattis actually needs to get both kills, and if ideally, try to stay alive. Luckily, those 2 were enough to delay for time. Hunter also didn't just tuck back and let them come into the site.
Just picked a nice, cool fight to play under pressure. And then Sunpias, what a find. Doesn't waste any time, moves over with that next supportive flashbang. Let's see if Vitality can tap into something like that. An active move, catching the defense off guard. Something maybe wild is in the cards. Because with Apex dying inside of that smoke, you gotta make up for the man disadvantage. Again, they will try to get flashed in with two bodies. Mattis trades effectively. They flash themselves, not with somebody inside sight, but much like last round, B-side आके वो aggressive खेल रहे हैं आगे आने के लिए. Drew some utility. Like आगे आ रहे 2 लोगों को मार के एक बंदा मार रहा है. He's got this Tech 9. We saw the lurk. He got a little lucky to be able to pull it off last time. This time, I mean, every time, bro. We look at the mini-map. What do we see? 2 CTs working together, split up. It looks like Vitality are trying to take advantage of the space that's been given to them. They can feel it. G2 still playing around with potential solutions for a B commitment. Look how worried they are about the flank, right? Sunpias holding into CT spawn. Yeah, but 30 seconds and they're not going one way or the other. Vitality smoke off Moto themselves. That's going to get Rob still behind it. Is he going to try to cheat through that smoke on a timing at some point? Heavy God up against this wall is going to be fully exposed if Rob runs the risk of coming through, which he will. He takes damage. They get that opening up onto the short side of sight, but they don't know. They don't know. Hunter from his pit strikes down one. Bomb planted. Hunter's double. His last gift. He's into the clutch. Mr. Cool. Ice cold. Low health. CT right in front of him. Matt is slowly on that flank. Still survives. Robs is time limited, but he gets away from both the fights. And Fire's going to find him. G2 hunts him down, and they'll close that gap to 1. Yeah, looks like we might close on a heater here. G2 bringing this to the limit, making it a 1-round game on the CT side. Hunter, he gets the second kill. He makes a cameo over at the A site. He's got the ghillie suit on again in small pit. Beautiful play to pop up and get this frag. Set up by a risk. Heavy God out in the open. If Rops isn't trying to find a safe path into the back of sight, but instead comes through looking to duel, which is maybe what he does if he has more than a Tech 9, then maybe, just maybe, that's the end. And Vitality come back with momentum. Instead, it is pistols here. G2 to tie us up in double digits, barring a mistake. And in their fashion, in their identity, it is pressure over towards Banana first. With that deep smoke, they perch on the half wall. Nothing will come for free for Vitality. Finally, Vitality look frail with this buy. We're almost at the point in the game where money doesn't matter. We're getting to those closing hours. Apex gonna figure out a way to go for it against all odds. But we haven't really seen tragedies from G2 in moments like this. It's all part of the way that they always convert pistols. Good on keeping that distance between them and the upgrades. Ooh, careful to not take any damage. Give up audio. Mobs, full vision like a hawk down Banana, making sure he has info. Challenge from brackets. Sunpias takes a bunch of damage. They try to get in off that flash. Oh, damn, with the fadeaway USP. It is ZywOo rocked, flanked already out from middle. His Desert Eagle's gonna answer. A frag could kill the CT if it had bounced over top. That could have been an open sight, a bomb plant, and an act of magic. Instead, 10 rounds all. Yeah, wasn't going for it. Would have been an unbelievable nade to land. Skim it over the box. And now we get the timeout. I feel like timeouts have been mistimed for Vitality. Sometimes a round too late, sometimes right before an eco in spots where they're just letting the map play out. But here's a moment where it comes right before a rifle. Xtaz takes to the notes. It's coming down to the wire. Inferno is delivering just like we had envisioned. Just like everybody in this room had hoped. We had to watch as G2's tires spun in the mud of overpass. They started 6-1 down here on Inferno. This could have been a total blowout. And now we're at the point of the game where nobody sleeps well at night if you lose. You both know you could have won this. Sunpias to the op. Ooh, missed chance. In the last couple days, we've seen Sunpias hit these really key
headshots even with the op, right? Give him an inch, he'll find it. Yeah, but it wasn't Inferno. Right. It wasn't Inferno. He didn't really try to use it at all. He played very well without it. Pressure from the apartments is going to have Heavy God dropping nades, and this is a Heavy God that we're waiting to kind of get his game on. Sitting 9 and 14, bottom of the board for G2. I love this setup from G2. I love when they double up Cubby like this. I think Hunter is one of the best players ever in all the iterations of G2 at working on brackets control. They know when to get info back. Again, and that's a freebie. Dude, the confidence of Sun Pius in the middle of that He's got silence. Hunter right behind him. Bolstered. Hunter supporting his troops, reassuring them that if a mistake is made, he's there to save them. I think Sampaius needed that. A little buoy over on Arch instead of just sitting there the entire round. Flash again here for Mobs on Banana. But there is no swing behind it. With the second flash, there should be. Oh, it's all box turn! Oh. It's a little late. Mezzi can't stop all that damage. Sampaius back to the action, and he takes a lot back in return for that peak. Not to mention Matt is down by half off the frag, but this round is fizzling out. With the health that remains. Believe your eyes, a 6-1 lead for Vitality. G2 take it for the first time on map 4. Yeah, they have pole position now. They have the chance to actually close this out. They put together a great setup out of the gate. Lots of map control, lots of information, proactivity from Sampaius, justifying the op purchase, which he could have avoided. I think he was encouraged to use. Yeah, that's right. And maybe a round too late to see that because G2 have responded big time. Mezzi has to turn around on Banana to see his two dead teammates after Mobs takes the team to peak, supported with this flash. And how good have all their flash timings been on Banana? Mezzi, the only one of the three that actually turns back for that fight. They were 1 second away. That's 3 players of the 5 on Vitality caught off guard. You see Apex's frustration. Hey, 2 rounds to win. Jumping away from that Banana flash. Rain ka save bhi hai. You can call it fortune, but how many times have they done that? Sure. Their flash timings have been brilliant. Okay, I really like this. I really like this from Vitality. They're trying to hold a little gap the entire time. Legs 16, all too easy is the kill over Rops. Is this the moment Heavy God steps it up because he's gonna need to? Support systems down. Oh, he gets through with his double. On top of that, the one from Sampaius. 8 defenders post 3. Yeah, they're immediately gonna get their act together here. 2v3, they know they can win this. This has been Mezzi's best map of this grand finals, and he is locked into this angle, finds Mobs, turns back, Mattis responds, and Mattis Glare needs to find a clutch. He gets a reposition off as the CTs just sulk into their corners, giving away the position with that nade. He's ready for Mattis. They think it's Pit. Oh God, they think it's Pit. A back turn for Apex. Leads the charge. Timeout needed. Answer found. 11 rounds all. He was right. They were right. He was in the pit. He made the move when Mezzi died off the bicycle to get back on site. Then he just reduced his presence, let the CTs come in close, didn't worry about taking an early duel. The captain of Vitality takes this one back. As Vitality stamped their name across 2025, we watched Apex step it up on an individual level. As they've struggled in recent times since the start of the second season, we've seen him make acts of desperation, struggles, frustration, bad plays, but this is slick. And we have slides in, totally catching them off guard, and doesn't waste a moment in popping Hunter's head off. And we have down. Yeah, that's just nasty. They haven't wasted rounds like this. G2 have not struggled to survive these situations. That took everything. Yeah, that's right. Jubilation on Vitality's side. 11-11. And aggression again. All the nades in the back. They just unravel it all. Hey, aggressive खेला ना. And Flamesy burn Mattis to a crisp, but they have taken a ton of damage back.
Hunter sitting on half, just like the majority of Vitality, and they let their guard down too. He's only able to get his one. No so second 4 kill. versus 2 looking good. HP bar's low. Will it matter? Heavy God already taking a step back. Flamesy plants, Sampaya's tucks tail, and Vitality will seize this moment. And they're going to die trying to save. Saves not allowed. Rops on the prowl. Vitality on match point. The chills that Sunpai is experiencing right now, hoping for a miracle to save this gun, but it will not happen. सेव भी नहीं, आप इजीली मिल जाएगा। हेलो खेलेगा? अल्ट आईडी से आ सकता हूँ इतना एक राउंड। 1v2 from Apex and they tear through Banana on the following आज round. तो वैल्यू खेलने का मन भी नहीं हो रहा था, खाला फॉर क्या बोलता तू? अल्ट आईडी से खेलेगा तो changed fate. As they always seem to do in these best of 5s. Mao's pushed them the distance. Falcons push them the distance. But the beauty of Vitality's year is that they always end up with the win. The first season belonged to them. And they embrace the nature of G2 in that last round by fighting fire with fire quite literally on that B approach. G2 have so much to be proud of, but they will be incredibly bitter if they aren't able to win here. They almost proved so much. Grand finals are not handed out. The road here was long and arduous and took many difficult victories. It's a privilege to be able to play Vitality in a best of 5 grand final and get this far, but the fact that they were so close. They'll have to let that go. They can't pull it out with this FAMAS and a series of pistols. None of which are here. Just this one Deeg on Mobs for now. And G2 look confident that something is going to come back their way, even in the face of the presence, the utility, and the damage that Mobs has had to stomach. Only now are we starting to get G2 on the move. Hunter's always eliciting all the info plays. It's a chance where now the CTs are getting into position. Fresh smoke here as the full exec comes through. Every single nade you could ask for. We do get G2 close. We will find them with a back turn. Here comes Sunpius. They lose track of him, and there's still a player in the back of the site in Mobs. He has so little health. They're going to try to run him down. They'll clear this site. ZywOo with 3 kills to his name. Hunter on the attack. 12 down for ZywOo. वाह ओवर टाइम ना आ रहा है क्या? ठीक है डिस्कॉर्ड पे हूँ मैं। ZywOo wants world's आपने number निकाल लिया रे राउंड with a उन्होंने। 3K to his name. It is still not enough. हेलो It's the pressure that they keep applying that got them here, and it's that same pressure that got them into overtime. Not respecting the smoke, trying to break the timings, fighting till... क्या हो गया? It's Hunter again. यार ओवर टाइम गया उनका मैच। तेरा कितना आ रहा है अभी? 32 नहीं 34 है। 34 तूने खेला ही नहीं? आज खेला अभी? नहीं आज खेला ही नहीं मैंने। खेल ले मेरे साथ। नहीं हो रहा है, गेम भी नहीं। मैं लाइक यही देख रहा हूँ, मैच देख रहा हूँ। मेरा देखा? मैं कितने पे हूँ? ये कितने पे? तूने खेला था? हाँ मैं लाइक 50 पे था, 50 समथिंग। आज ओपन किया सिर्फ, बाकी कुछ नहीं किया। एक डीएम एंड मैं अभी खेल ले। अभी मन नहीं हो रहा है, मैं बॉटम फ्राई ही करूँ। मेरा एक मन ही नहीं है, एक मेंटल नहीं हूँ मैं अभी। तू नूब है, यही बोल रहे। हाँ आज नूब हूँ भाई मैं। ओके तू खेल, अगर अल्टाइटिस खेलना है तो फिर आता हूँ। अबे आजा मेन से। मजे के लिए आज रैंक नहीं हो। ठीक है गेम खेलते हैं। आजा अल्टाइटिस। और शूट यार
क्या तो वाइटलिटी को सपोर्ट करेंगे ये G2 ये लास्ट मैप पे जाएगा मैप You have got भाई to इनका मैप respect it. 2 That was a भी नहीं massive वाइटलिटी job. एक ही मैप Only निकाला handed one हाँ smoke to पर मैप Hunter, 5 तक who was चले on his जाएगा way G2 back to the A जीत वाला site. Their molly does nothing. GW इतने हाई रैंक पे Mobs कैसे आ open गया lines. GW के साथ जी गोल्ड 2 है मैं खेल रहा था उसके साथ वो खेला मैं आज अभी खेले उसके साथ Two straight. खेल रहा है क्या मैच में है क्या फुल अच्छा आप हाँ मैं चेक कर डिस्कॉर्ड पे होगा तो मैं कॉल करता bust through the brackets. Player up in the corner as the nade finds its home. They're gonna forget about him. Easy match. अरे यार How does he hit all those headshots? अरे It was too fast to even be believable. It feels like everyone's mobs on this team. 3 instant headshots. Whoa. You can't believe your eyes. In the milliseconds as he dies, he takes down that third one. And just like that, 2 quick rounds in overtime. Only timeout used. Whoa. More vitality, a smile on Saw's face. Now that's a rare treat. And it's gone as quickly as it appears because he knows then A he job can't not get finished. ahead of himself. Saw has to tap back into what it means to be in a grand finals as he was with Ents back in Dallas. All you have to do is look at the kill feed. You really didn't have to be there. He made that look like an eco. Mobs loves this spot. Chance for him to thrive. Insta headshot on Zywoo. Show me where the talent stops. G2's explosive rifling. अरे डिस्कॉर्ड छोड़ दिया वो कॉल नहीं उठा रहा था When Modesty and Nico depart this organization, Hunter in an interview days ago says the firepower on G2 today is the same as old, and I didn't believe him. I thought, of course, you have to say that you're their leader, bro. But tonight, on full display, when the pressure's at its highest point, each individual for this G2 camp is coming together to clean sweep vitality in overtime. Mobs aging like wine in this game. Mattis having so many great moments. And a clean sweep of OT with this one kill. आने दो उसके साथ ही खेलूंगा मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा 3 स्टैक भाई 3 स्टैक वो डिस्कॉर्ड पे रुक मैं कॉल पे लेता हूं भाई मुझे निकाल रहा है रुक मैं कॉल ले पे लेता There's got to be utility. There's a molly to delay for time. The smoke lands plump on top of that. अबे मैंने कॉल उठाया तो लीव क्यों किया अरे मुझे लगा तू मैच में है तो मैंने कट कर दिया उससे मैंने खत्म भी किया जब तूने कॉल किया खत्म हो गया था मेरा अरे क्यों नहीं खेल रहा है डस्टी के साथ वो वाला खेल रहे मैं बोला नहीं मैं डाल्ट आईडी से आ जाओ फिर अरे उसका लेवल देख रहे प्लैट 1 है बंदा भाई हाई एमएमआर बंदे आएंगे सोच रहा है मैं वैसे गोल्ड बंदे के साथ खेल ही नहीं पा रहा मैं ढंग से इतना हाई एमएमआर नहीं चाहिए इतना क्यों डर रहा है तू हम दोनों कैरी करेंगे गोल्ड के प्लेयर डायमंड प्लेयर है इजी विन Bro, the thing is, I don't wanna carry, bro. इतना carry नहीं चाहिए. मैं खुद के kill से उठना चाहता हूँ. हाँ. तू भी मारना. हम like पूरा अगर like. अरे मेरे बस की बात थोड़ी ना है ये. अरे तू ऐसे क्यों कर रहा है? तू गोल्ड 2 पे आ गया. अब गोल्ड 3 जाएगा तू. अरे डर रहा हूँ मैं भाई. अरे मत डर के मारे. मैं डर के मारे एक मैच स्टार्ट ही नहीं कर रहा पता है. लाइक मैच स्टार्ट करने से पहले भगवान के लाइक प्रार्थना करके आता हूँ मैं. अरे डैम भाई जी. ब्रो गॉड ब्रो गोल्ड 3 कर दियो मेरे को. ए यार ब्रो आई एम सो एक्साइटेड. अगर प्लैट हो गया मेरा भाई हो
जिंदगी सफल हो गई मेरी। फाइनली मैं इलो हिल से निकलूंगा आई गेस। हाँ कोई ना। Join the hip here inside A, but Rops loses his head to Heavy God, who's been fighting back from a slow start. It is all on ZywOo. There is no help to be found. They are desperate to rotate around through spawn. That Flamesy, he's got his guard down a bit about logs. No way Hunter calls this fall back. I don't know. This could come down to mobs. His adjustments in these spots, the flash is beautiful. Oh. तूने वो स्प्रे खरीदा क्या, वो चूज अ वेपन? वेपन किधर से? वो एक्सेसरीज नहीं यार। तूने लास्ट टाइम बोला था ना। हाँ नहीं खरीदा। क्यों? लगा कि जाने पे। But it is just ZywOo sitting inside I mean, A. okay. This is meant to be the best, which means you मेरे स्टोर पे रिवर वैंडल आ गया। अबे गुन के कितनी बार रिवर वैंडल आया मेरे पास? जाता है CS का 15 ट्रायल चल रहा है। हमारा कैसे 14 ट्रायल में गेम खत्म हो जाता है। इनका पता नहीं। CS द थिंग इज मैं भूल गया पूरा मैकेनिज्म। बहुत दिन हो गए मैं CS रेगुलर नहीं खेल रहा। मैं तो पहले रेगुलर खेलता था बट अभी खेल ही नहीं रहा। रेयरली खेलता। लास्ट टाइम तूने जो खेला ना वही खेला मैंने CS। उसके बाद मैंने खेल पकड़ा ही नहीं सी। अपडेट बाकी है, स्टीम मेरे को बोल रहा अपडेट करने को, मैंने किया ही नहीं। ना आजा 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 जल्दी। मेरे को 24 प्लस चाहिए अभी गोल्ड 3 की। हो जाएगा। अच्छा आजा बीसी भाई इधर आजा। हेलो 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 हेलो। लेट्स गो। बट डस्टी मुझे इतना भाई ये मुझे डॉग कर रहा था। GW मुझे रोस्ट कर रहा था भाई। अरे वो डर गया कि इतना हाई लेवल पे नहीं खेल रहा है। रोस्ट क्यों? मैंने रोस्ट कहा किया वो डस्टी। नहीं इसने किया रोस्ट। वो प्रूफ क्या है तेरे पास मैंने रोस्ट किया? बोल। मुझे बोल रहा था भाई मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। और अरे उसका ये रोस्ट तेरा है। MMR हार है ना इसलिए हाय वो डर रहा है गेम खेलने के लिए। भाई सुन तू प्लैट है ना, वही मेरे को डर लग रहा है। मेरे खुद के रैंक के फटे रही मेरी। नहीं भाई मैं तो डायमंड 1 हूँ। पता है मेरे को, और भी MMR हाई है तेरा, रहने दे। अरे GW तेरे मैच में देख सोवा वाज प्लैट 1 तब भी तूने अच्छा मारा। कुछ नहीं होता है भाई ये पैटर्न खेलना आना चाहिए। कौन सा सोवा प्लैट 1 है? तेरा केजे वाला मैच। केजे वाला वो प्लैट 1 था। फिर क्या है देख। अबे सही पे कहां से आ गया प्लैट 1? व्हाट द हेक। ओह बेंटेंस भाई। बेंटेंस भाई उसका MMR कितना गंदा है। उसके मैचिंग में ब्रॉन्ज आ रहे हैं, सिल्वर्स गोल्ड आ रहे हैं। गोल्ड अरे ये 5 स्टैक है, 5 स्टैक है। 5 स्टैक कर रहा था GW। ये मैंने 5 स्टैक किया था ना, वही 5 स्टैक आया उनका। 5 स्टैक वर्सेस 5 स्टैक। और वेट मैंने सोवा को कितनी बार मारा था? ओ लिसन, रेना को मैंने 10 बार मारा, वो मेरे को छुआ भी नहीं एक बार। 10-0 था 10-0। एंड सोवा को 2 बार, सोवा मेरे को 4 बार। आई मीन नॉट बैड आई गेस। डांटे भाई डांटे को तो तूने Dante was 13 and 10 if it wasn't for GW. Oh my god. रेना की आधी 20 बार मराना देख, 20 डेथ हाफ मेरे वजह से है। हाँ भाई। भाई मैं कौन सा खेलूं ना? खेल कुछ भी भाई। मेरे को नहीं पता, मैं वैसे भी बॉटम फ्रैग करूंगा। सो यार भाई तेरे पे फैंटम की स्किन लगी हुई है क्या? फैंटम की लगाई हुई क्या? अरे नहीं ये इधर स्क्रीन नहीं है, इधर नाम और निशान है इसका। अबे यार अरे खरीद ना, अमीर बंदा है तू वैसे भी। हाँ भाई के 40-60 लेके खेलता है तू।
भाई ले Ryzen 5 5600 4060 और क्या चाहता है? केविक्स तू स्ट्रीमर है भाई, तू अपनी स्ट्रीमर है अबे सही पे खरीद स्किन कुछ भाई। हाँ भाई इन्वेस्ट कर भाई, लाइक you're streaming and तू एक कुछ भी नहीं लेता। कुछ नहीं लेता, मेन आईडी पे है ना 4 स्किन है। हाँ इधर इस आईडी पर लोग तो पूरा बंडल खरीदते हैं, नए बंडल जब आते हैं। फिर लाइक उनका अर्निंग जब चालू भाई होता है तब खेलते हैं ना। तुझे याद है like, भाई, एक दिन ना मैं और वो सस्ता सोरा खेल रहे थे ना भाई, तो एक इंसेन रेना आया था, तो मुझे लगा हमारे रैंक से ही है। फिर उसने अपनी स्ट्रीम पिन की थी एंड पे, वो रेडिएंट का बंदा था। चूतिया। होली ओह माय आई मीन गॉड। रेडिएंट पॉसिबल अगर सस्ता सोरा एसेंडेंट था क्या उस टाइम पे? हाँ तो इट वाज लाइक क्लोज गेम, फिर भी क्लोज थी। इट वाज 11-13। या दैट रेडिएंट वाज शिट। अरे प्लेयर 4 क्या चिल्ला रहा है? क्या पता। अच्छा मैं क्या बोलूं? वो बोल। कैसे बोल रहा है? हेल्प मी टेक अ एजेंट, हेल्प मी भाई स्मोक्स तो है ऑलरेडी। भाई कुछ भी ले ले, I'll carry। अबे खुद ही कैरी करेगा अब तो, नॉट माय बिजनेस। अरे रेस आ गया, मैं नियॉन दबा रहा था। ओह माय गॉड, भाई अब तो ऐसे जीत select हो गया, इजी हो गया। जीजी हो गया। मैच खत्म। चलो गाइस अल्ट F4 मार रहा हूं मैं। सी है मार दे। अरे आर जाएगा तेरा। हाँ अब तो बहुत जाता है, अब 6 RR जाता है। फिर सेकंड टाइम करोगे? पहले 3 जाएगा, फिर सेकंड नहीं पहले वेट मेरे को बुला रहा है बंदे के दिए। सुन, मैंने जिससे 5 स्टैक खेला ना, केजे लेके देखा ना तूने, वही बंदे मेरे को बुला रहा है फिर से। उसको क्या, आई एम प्लेइंग विद डायमंड्स। ये लेकिन ब्रो यू नो उनके टीम पे डायमंड एसेंडेंट का फ्रेंड्स है और वो मेरे से गंदा खेलते हैं भाई। मैं तो असेंडेंट लॉबी में मैं तेरे को दिखाऊंगा उनके आईडी अगर पॉसिबल है तो। असेंडेंट तुम लोग इजीली वन टैप मारोगे हर बार, इतना गंदा खेलते हैं। अरे मैं जिसके साथ खेल रहा था ना, हमारा सिर्फ जोरू है ना। लो आजा आजा 60 रे, I'll find you. 60 रे ना, ए स्काई 60 है। लो 78। अरे इतना पीछे देख नहीं सकता मैं। गाइस रोटेट। क्लोव लो 78। बेस्ट तेरे पास। लो 1 HP, एक पीछे से आ रहा है। नहीं आगे वाले एक मार जल्दी। बाप रे चेंबर ने जो भगा उधर भाई। One enemy remaining. क्लोव लो एक तुक्का मार। लो क्लोव लो है भाई प्लीज। Catch them. He's on side, ही क्या कर रहे हैं? I have the अरे spike. बाप, नहीं हार गया। Spike planted. इसके ऊपर ही स्मोक। ये क्या स्मोक है? I'll find you. भाग रहा क्यों नहीं है? क्या भाई तूने थ्रो किया केविक्स? केविक्स सही पे, ये तेरा थ्रो था भाई। ये क्या? ये देख, ये स्मोक देख, वो स्पाइक पे बैठेगा, इसको सिर्फ भागना था। डायमंड स्मोक भाई, डायमंड। इतना आईक्यू वाले बंदे हो गए तो तभी दे रहा। हाँ भाई इस लॉबी में क्यों दे रहा है इसी स्मोक? कहाँ से तेरे को आइंस्टाइन मिल रहा है वैलो पे इतना स्मोक में? अरे वो देखा ना, उसको दिख रहा भी नहीं था स्पाइक। ब्रो क्लोव को 78 दिया भाई। क्लासिक से अगर टुक्का मारता वो मर जाता। भाई मैंने स्काई को 60 दिया, वो शील्ड लेके जेट भाई साथ में है वो डोमिनेंस का आप। हां हग के अभी बोल रहे हैं। ओके ब्रो, ये राउंड सेव है भाई। ओ इसका चेंबर मार, एक को मार। हेलमेट स्मोक कर रहा मैं, इधर चलो। फ्लैश करेगा। अरे लगा दी। Enemy mid. Where are you? पकड़ इसको। Reloading. Reloading them down. मरा। अरे गया, मैं गया। क्यों नहीं क्या?
साइड से नहीं क्लासी इसकी साइड से इनको पता है मैं इधर हूँ मिड 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 Right here. Right here. दो लोग हैं आया तेरे पास दो है तेरे पास One enemy रिलोड remaining. अरे फेड ने मचा दिया Reloading. फेड ने मचा दिया भाई मेरे किल चोरी की है इसने चूतिया ने मेरा भी एफ के वो चोरी कर एस चोरी कर जस्टी No peeking. नहीं है एफके अबे दूसरी साइड पे अबे भाग गया चोरी कर इसके एस चोरी कर भाई भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ इसने मेरी किल चोरी की है आई एम नॉट लेटिंग हिम गेट अवे हां नो भाई ये मैच एमवीपी किया तो हम नूब है भाई सही फर्स्ट राउंड पे जो हगा था भाई सेकंड राउंड ये डिजर्व नहीं करता यार अरे वैंडल मेरे अरे डायमंड बडी प्राइम ये रहा इसके पास ये तो पुराने जमाने के डायमंड है हाँ पता है वेट सही पे V25 देखा ना मैंने इन पास सेव है बाय द वे हम जा सकते हैं अरे V25 है साले अभी हुआ अरे मरा Enemy spotted B. मत जा जेट मत जा अरे One enemy remaining. It was mid, I guess. Not sure. डेडलॉक ए पे होता है Right here. सेवन कवर में लो Enemy spotted mid. Reloading. मेरी गन भाई अबे देख ले केविक्स देखता हूँ ये देख ओके मैं जीडब्ल्यू की गेम थ्रो करूंगा अरे सीरियसली अच्छा केविक्स की वजह से मेरा गेम क्यों थ्रो कर रहे थे मेरी गन क्या इसका इज लिटिल किड लिटिल बेबी little baby ओए pretty little I'm so in love with you नहीं मैं I'm not so in love with you अब मिड स्मोक कर रहा हूँ हम लिंक जा रहे हैं हाँ I think Sky flash करेगा probably Here. Catch. the ball दे One down. nice one oh nice रे क्या वन टैप मारा है Drop in a smoke. हो गया nice one I'll find you. Get. स्पाइक Spike down mid. अरे पीछे जा मैं तो पीछे स्पाइक तो पीछे है ये कौन है पीछे से आ रहा है एक बंदा ओपोनेंट साइड से जाना My ult reload. रहने दे मैं डर अरे के मारे नहीं ऐसे पीछे देख लो है स्काई लो है रुका राइट हार्ड राइट No peeking. हार्ड राइट है पीछे छोड़ क्लोव पीछे छोड़ मैं पीछे जा रहा हूँ अरे जल्दी आ दोनों इधर आ गया मैं ऑलरेडी बा One enemy Target remaining. down. नाइस ले लो स्पाइक ले लो Reloading. I got the spike. रेना भी यहीं पे था 30 लेके जाओ। seconds आ गया ऑलरेडी या बीच जाओ चल बीच चल यहाँ से मत जाओ लेन से जाओ चल अपने पे बंदे अच्छे है रे हमारे पास ए में उसके Reloading. क्या जेड एंट्री मारो Satchel out. Drop in a smoke. ओके Right here. अब देखा उधर तूने स्मोक तो किया बट है कि नहीं मैं कंफ्यूज कर कोई 40 अरे कवर मार नाइस Satchel out. कि मैंने हगा छुड़ा उससे The part where they lost was funny. स्काई को मैंने 121 मारा था भाई आई एम मैड अबाउट दैट भाई आप से बाय ले रहा हूं मैं मारता कैसे Does anyone have funds? अबे क्या चाहिए तुझे स्किन चाहिए क्या मैं दे देता हूं ले अभी बाय किया मैं बोल रहा हूँ मेरे पास है स्किन मैं बोल रहा हूँ अब भी बाय किया गेम स्टार्ट होने के बाद
ओके चल आजा। अरे मेरे को मत दे ना सर। वेट क्लियर करने दे। हाँ जेट जा। Drop in a smoke. ये आवाज क्यों कर रही Blocking sight. Body out. है? इधर ही है। फ्रेश सैचल। Up one of these. गन क्यों फेंका इसने? अरे यहाँ पे See ya. You had your fun. ओके दोनों मिले। जा उसके पीछे जा। इधर हमारा 60 मिड। पिंग पे है। मरा। अरे चल भाई बच नहीं पाया मैं। Enemy पकड़ spotted. इसको पकड़। निक्स को पकड़ ब्लाइंड मारेगा। One enemy remaining. चल भी चल इधर लो मिड से आया। मेरे पास आ जीडब्ल्यू मेरे पास। बी जाओ। अरे मैं तो मर गया। ओए डेड। 30 seconds left. ओए रस्टी मस्टी भाग इधर से। अबे चुप कर। वो मिड से आ जाएगा तू मिड पे आ रस्टी जा। मस्टी मेरे फेवरेट पिज्जा टॉपिंग। Spike planted. My ult is ready. वो साइड देख। खुद तो दे दिया मैंने। Can't do anything about that. Drop in a smoke. Full flank किया है। ओके मेरे पास है। 7 Right here. You got this glove. आगे साइड। Flick shot. Oh, Over. Clean. Mid player mid. Look at that. ऐसे मार के मिड क्लियर बोल रहा है ये देखिए मिड Can I get a drop? ब्रो मेरे को भी सिखाना ऐसे कैसे मारता है तू। अरे माइक्रो एडजस्टमेंट करना है बस। माइक्रो एडजस्टमेंट करते कैसे मेरे से नहीं हो रहा। प्रैक्टिस की बात है भाई गेम Practice, की। हाँ। भाई मैं इससे ज्यादा गेम खेल चुका हूँ मैं। भाई तू पीसी ज्यादा अच्छा ले ले फिर। अरे पीसी सही है उसके पास। पता मैं नहीं भाई। CS:GO प्लेयर हूँ भाई क्या सोचता है। वैलो पे मेरा लक इतना बेकार है पता। ओ भाई ये क्या कर रहा है? Drop in a smoke. हुआ क्या था? चल वेट कॉर्नर क्लियर करने दे। ओके चल Chill out. Plant the spike. आजा। Hi. Refreshing. ये तो मरा। ओए थ्रो होगा पीछे खेलो। मैं तो पीछे खेलो चिल। One enemy remaining. नाइस केविक्स के पास। Back like I never left. कहाँ जाएगा आजा। नहीं भाई अल्ट मारना तो मेरे को। अरे तू क्यों अल्ट कर रहा है वेस्ट कर रहा है। प्लेयर्स देखना कितने अपने पास। You're up. Stay safe. We're going back. Thank you. कौन वैंडल मांग रहा है इससे? लॉल। ओ ये स्काई है। फेड का एज के बाद कुछ नहीं किल निकली अभी तक। हाय हाय हाय। चलो मिड लिंक। चलो हाँ Reloading. इधर नहीं देना था नेड। अच्छा मैंने गलती किया। The hunt begins. Enemy A. Drop in a smoke. Bomb buddy. इधर ही है। अरे मजा आ गया। Right इधर here. डेडलॉक है। ओए तेरा नेट से कुछ डालना। नेड खत्म हो गया। वेट मैं अंदर घुस रहा हूँ। इधर ही है। लेफ्ट एक और है। प्लांट कर
लिंक फेड है तू Trail. ये देखना Enemy, bring them down. Spike planted. डेडलॉक किधर है? Bring अबे फेड मर जाएगा। One enemy remaining. Blind with fear. अबे इधर था, फेड इधर था। Okay. क्या स्ट्रेट का ट्रेड? Stick to लेट्स your ट्रेड roles and we'll स्किल्स। crush it. ये कौन सा स्किन है? क्रोनोवाइड। मेरे पास नियो फ्रंटियर। तूने खरीदी है या परी उठाई है? अरे यार टॉप फ्रैगर क्यों दे रहे स्पाइक? बिकॉज़ आई डोंट नो, मन किया। भाई just इनको keep दो it. ना। Just keep it with. मैं देख के आता हूँ। चेंबर तेरा काम है, स्पाइक ले ले। Where are you? Dropping smoke. यहाँ पर रहेगा स्काई, देख ले। ओके तू ए मिड वाले को मार, डस्टी कुछ भी कर, मिड वाले को मार। दो लोग इधर है। जेट आई ट्रस्ट यू जेट। They don't swing, bro. I trust you. छुप गया भाई। Refreshing. को मारा। एक और है, लेना है। नाइस जेट। डेडलॉक इधर है, मिड से जाता है। चलो आजा। Bomb buddy out. गन उठाइए उसने, गन उठाइए। Enemy spotted mid. इधर ही। One enemy अरे remaining. मर ना साले। वो उधर है। Drop in a smoke. साले है किधर? इधर नहीं। Reloading. पीछे है क्या हमारे? मेरे को लग ही रहा था इधर। भाई मैंने तो उसको वैंडल भी नहीं निकाली, शेरे से ही मार दिया। अच्छा था वो अच्छा था। Trembling is bad बॉट्स for you. भाई, बॉट लॉबी भाई। Yeah, in some How ways, are you Hunter stuck is the gold पे भाई? MVP of this whole team. बोला ना straight up. लग Like, बेकार है the way मेरा। that he's been calling, all the इतनी बार info स्मर्फ plays के that he अगेंस्ट ended खेला up तेरे को पता है? starting off, the way they got into overtime back on Inferno, it's all Hunter. I don't know, मैंने काउंट Like, his भूल गया मैं, composure to इतने hold ज्यादा that खेला। incendiary, to juice it for the last मेरे extra जैसे बंदे ही second, आते to make रहते। sure it's perfect, नहीं, and make तेरे sure से that it's बेहतर है। on the stairs. That's the difference भाई, between them चुप कर। running out and then tragedy of that Molly coming up too soon. बी पे स्काई है, He's डॉग been किस playing perfect when it comes to supporting both Okay. sides. Oh my god, they are better than On me. A, Shut up. when he's been supporting B on Inferno. Wait. भाई मैं GW को म्यूट कर रहा हूँ। No peeking. जा तू उनके साथ जा। कहाँ जाऊँ मैं उनके साथ? जा स्पॉन से जा डायरेक्ट। अरे यार जा। भाई तूने उसको मरवा दिया है। सही पे भाई। ओ दो लोग हैं। Last player खत्म। तुम ऐसे स्प्लिट क्यों खेल रहे हो? ड्यूली स्टे तुम एंट्री लो ना। बैकशॉट स्पैम। कितने बंदे ब्रो? GW की एम थोड़ी अच्छी बन गई है भाई। वो मेरे को एम सिखाता है, तू क्या बोलता है? मैं उससे सीखा। अरे घंटा ये झूठ बोल अरे रहा है। जीतेंगे ओए डेस्टी एंड GW। तुम जाओ ना आगे, बाकी ट्रेड ले लूंगा ना मैं तुम्हारा। आजा ठीक है आजा। ठीक है ब्रो मेरे साथ आ क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ तुम जाओ, मैं लाइक मैं और तू एंट्री लेंगे। आजा तू एंट्री लेके पीछे चले जा, मैं साइड घुस रहा हूँ। आजा। मुझे बोल रहा है क्या? हाँ तेरे को बोल रहा हूँ। और जेट किधर है? No peeking. तू एल्बो से घुस के एल्बो बोलो। वो देखो थोड़ा अकेला है, जाओ जल्दी। पकड़ना। Bring them down. वो क्या है? बोल रहा हूँ। भाई उसका स्टन ने 3 लोगों को पकड़ लिया भाई। अरे हट ना फेड। player अरे standing. भैंस की आँख, ये फेड भी घंटा। ये यार मैं खेल रहा हूँ क्या गेम? अरे साला ने मेरे को बॉडी ब्लॉक ही कर रहा है, मैं खेल ही नहीं पा रहा फेड की वजह से। भाई मैं तो स्टन हो गया। मैं भी स्टन हो। ओ No peeking. इसका फर्स्ट शॉट तुक्का था क्या? ओके ए पे ये अपन बी पे वॉक करके आ जाओ।
find the weakness. बी पे वॉक हाँ और फिर डायरेक्ट एंट्री Reloading. ब्रो चेंबर दे 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 Does दे anyone दे have दे funds? दे दे Does अबे anyone have funds? Merci. walk. Let's play Walk, slow. walk. Let's play slow. Let's play slow. Quack, quack. Let's play slow. अरे इधर एक आएगा पीछे रुको इसका वो टाइगर आता है आ गया ऑलरेडी कर दिया You can rotate. कर दे Reloading. Go get him. Dropping smoke. जा GW ult अरे मरवा दिया रे ऐसा बना दिया We found one. Trap destroyed. Flank, one flank. ओके वाचिंग My ult is ready. My territory. My rules. अरे मेरे को मत Flawless. नाइस मैं भाई जेट ने जो मोटिवेशन दिया ना मजा आ गया टू बी ऑनेस्ट क्या अल्ट हाँ अल्ट का मोटिवेशन मजा आ गया उसके दो को मैं खेल तू जी इजीली खेला हमारा स्कोर काफी आगे तक है जो मोटी उसने बोला अल्ट मार जाके दो को मारा मैंने डस्टी को पूछ दा 12-3 क्या है 12-3 मुझे भी पता है अबे यार चुप कर जा 3-12-3 वाली गेम भाई वो याद ना करा भाई लो Where are enemy Oh drawing my close. goodness. Mark What bring fuck, them yeah. down. Grenade! Have one of these. We found one. अरे इसको कैसे पता मैं Planted. अबे कैसे हक वही दिया तो मैंने कैसे मारा मेरे को ओए क्लोव ने अच्छा खेला इसको क्लोव सेम क्लो ने मैंने जो यूज किया ना उस पे उसने मुझे मेरे पे वही किया ये एक बॉल डाल दिया बाप रे ओके AFK let's go GG वो थ्रो कर रहा है क्या मैच ये मेरे टीम में आता है फिनिश Wait. So many moments. Switching sides. मेरे पे गोल्ड के बंदे आते नहीं ऐसे आते हैं फिनिक्स जैसे बेट करते हैं टीम को गेम And we've had some big individual moments, but it also looks like setups and decisions and aggression that they can replicate. You know, it's not those one-off Hail Mary, oh, you won't capture lightning in a bottle twice type situations. भाई इसको पता है क्या GW को 12-3 वाला पता है Operating on his own, Flames around this corner could be his victim, but timing doesn't look good. Sampaio dropping याद है on the fallback. GW 12-3 क्या 30 seconds. मेरे को कैसे पता वो मैच मैंने बताया ना वेट हम लोगों ने जो हारा था वो नहीं मैं सस्ता सर और ये मैं खेल रहे थे और 12-3 था स्कोर हम जीत रहे थे एंड द गेम एंडेड 2018 ओ अच्छा हाँ क्लोव ने दिखाया था कैरियर दिखाया था इसने तो द थिंग इज बी पे भी बंदे हैं ए पे भी बंदे हैं आप रे 60-30 बी पे मरा अरे मिड पे जेट मेरा क्लास He has to just stay alive. There's nothing else that matters. Okay, don't worry. There's a big issue right now. The way Ivy is being taken. Inside. Drawing time off the clock. They can keep wrapping around as many times as they want to. Satchel bot. Can't connect to the ones outside, and Icon is smoked. Mattis doesn't have to participate in any duels. Win. And the team and his teammates who are coming from they have the full brunt of the responsibility. Zaibu 0-6 again. Twice in one best of 5 is भाई ये वही 1v1 है ना Oh, nice shot. Okay. Rob's going to remind us of what is possible Rob's up with too. anything in the hands of Vitality.
Now you've got Zywoo in with his Desert Eagle. Oh We my haven't God. seen अबे rounds like सिटी these. कौन In बुलाता fact, we've been मैं singing the कितने praise देर of से बोल रहा G2 for their ability to Healing. always close them. ओए मुझे बताओ Well, जब grand राउंड finals खत्म down होने के बाद 6-0 is the perfect moment for Vitality नहीं to बताऊंगा। finally piece this मैं इसके together. चल जाऊंगा They're actually running back. You're right. ठीक है They're allowing for pickoffs to take place. We do Yeah. have this गया push. साले को बहुत There is a chance to make something happen. Are you serious? Open Oh, time. भाई Got robbed so deep. They can't forget. wait वो पोजीशन Both इतना got robbed बेकार so था low. स्काई गेट टू God just keeps walking. He made a हाँ step. वो Rob pretty sees that. obvious था He's going to raise the alarm bell. Now he's going to double back. And so even with 10 points of health, Rob should have this. But he's actually और ये letting मैं Heavy तो go. पुश अप Wait, खेलता surely that doesn't not matter, like right? this Letting Heavy go spot make a play. Yeah. हाँ भाई कुछ बोल रहा था 4K था I let you go sure bro baited whole team for this lol फिनिक्स कर 0 out of 10 rage bait आ गया केविक्स बैक Kevix is back let's go तो कैरी करता हूँ चलो अरे मैं वो देख रहा हूँ G2 भाई इतना मार रहे हैं उनको हाँ भाई G2 is good for every round No peeking. G2 just get carried Valorant में भी G2 अच्छी है CS में भी अच्छी है इतने अरे घुसो रे फ्लो लेके घुसो One enemy remaining मैं तो घुस के मार रहा हूँ AFK let's go ये मेरा kill है He starts the shoot off. Robs has got it full control. Vitality find a first round, 7 rounds into play. It's because of that 13-0 sign. Yeah. Somebody find that. Triple into Rob's 2K with a deagle. That probably helped a little bit as well. And that moment, yeah, it has been a rare thing. Again, like इसने मेरे को G2 smoke have been awesome when they have बिगाड़ने a money advantage. When they have a gun advantage, they aren't really losing to anybody. So okay देगा excellent shots here from Robs. oh भाई साहब my bad मुझे लगा तू इतना प्रो है I mean, it probably felt a little sour when he was the one to go down versus Heavy God, especially in a moment like that. 1v1. मुझे बताओ आते तो okay And here he kind of pays it back. नहीं big आया time. He drops the bomb. Mattis comes in with another. Him and Hunter both with multi-frag. Oh, that's brutal. Could be a मिड little पे gap between है them. अरे लिंक पे कौन है अरे I've got your trail. कोई लिंक पे नहीं था what the fuck Dropping a बी है बी प्लांटिंग Spike planted. अरे इधर है रे बी One enemy remaining. nice चेम्बर अच्छा खेला here. Gun here. Blocking sight. never mind Diffuse. Last player standing. You had your fun. My turn. Refreshing. डिफ्यूज क्या है भाई मारने के दे टाइम है Zywoo is struggling. He's अच्छा ठीक है मिड फ्रैग्स भाई ये मिड फ्रैग्स का मतलब क्या है मेरे को पता नहीं टू बी ऑनेस्ट अभी बाय देना 3000 है That could have been Rob's इधर को चेंबर को बाय देना and instead it will be Vitality. मेरे to में take a भाई रस्टी बाय दे चेम्बर को बाय दे ओके मत दे जाने दे अरे नहीं बैंडल सेल करके बाय दे इसको 11 kills to his name. अरे मुझे लगा Our anchor is you could ask for. We're looking at the best तेरा of the best. क्रोनो on the वर्ड other लेने side. वाला हूं मैं तैयार अबे fuck Spike down mid. मरने वाले तुम तार अरे मरा कौन One enemy remaining. मार दे अरे तुम्हें मार Nice. दे भाई निकाल लो ये अच्छी मार ये निकाल लो ये राउंड ब्रो मैं डर के मारे खेल ही नहीं Mezzi's learned a Alex, little क्यों डर bit रहा है? that smoke down and Z is going to stop him. अब ब्रो ये डिमोटिवेट कर रहा हूं इसलिए मैं डरूंगा मोटिवेट करेगा तो मैं मारता ढंग से 12-3 को बनाते हैं अभी 12-3 करते हैं वो वाला गेम का 12-3 करते हैं टाइम टू शाइन Very solid here for Vitality. How many by rounds is GW enough? you have to pop I'm off thinking, you know, 4 मार जीरो हाँ। थोड़े राउंड्स मार तू क्या एक मत कर किसी अच्छा ठीक है ट्राई करता हूं मैं आज getting to train, it just feels like नेवर माइंड it's crazy. Never for a lot. mind. We've been the Mara. ones to sort of be watching each of these G2 games.
And it seemed like as insane as it मेरे was, को जैसे पकड़ा इन लोगों ने it feels like one of those miracle tournament runs, right? It really did feel like that. You still don't get the map 5 without a little luck and a little X factor, but they showed it. They showed it back on Jet Inferno. Ace और Gay. They created this chance out of thin air just like they did the chance to even qualify to land versus Spirit. I mean, if anybody knows a miracle tournament run, it would be the same organization that's recently lifted a trophy with Stewie 2K. You know, मेरे को भी पता था इसीलिए मैंने लिखा। ये पूरी दुनिया को ये राउंड थ्रो कर, ये राउंड थ्रो कर ले। एक्स्ट्रा थ्रो। मैं अरे नहीं मत कर सही पे खत्म कर। जीडब्ल्यू को चाहिए। हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है मेरा। चिल भाई, खत्म कर इसको। चैम्बर एक गन दे दे होगी तो। गोल 3 लेट्स गो, गोल 3 शिट Two knows something that we Last player standing. and it's a chance for Saw to come through now. Nextaz takes his pause. फेड गोल 3 के लिए। Yes, गोल 3 लेट्स गो। अरे यार That's the weird part. Some of these pauses, it's like you expect it to be Vitality. गोल 3 के कसम। 10 seconds left. I trust you. That looked like Jesus. I'll find you. The graphic was wrong there, but obviously everyone gets the top. Spike planted. No, what? ओ भाई अल्ट क्लोज, अल्ट मार दे। Bring them down. Drop Wow. in a smoke. अरे अल्ट एंड सी लिखना था मेरे को, मैंने सी एन अल्ट लिखा खा भाई का। कौन क्लियर बोल रहा है? कर दे अल्ट। ये अल्ट क्या लेके जाएगा क्या? We'll catch them. No अल्ट घर पे लेके जाएगा, मार दे। है क्या घर पे? अल्ट। अरे मुझे वो मैच देखना है यार। अरे नहीं भाई, मैंने ना गलत ऑर्डर लिखा, मेरे को लिखना था अल्ट एंड। Can I get a drop? Merci. तो मैंने दिया उसको बाय दे फिर। यू कैंट क्लच। जीडब्ल्यू मुझे ड्रॉप दे दे। ओए हाँ जीडब्ल्यू मैंने उसको दिया है। चल दोनों को ही दे दिया। मैंने एक नहीं छोड़ दे, शांत रहे मेरे मैंने बेच दिया 3000 है, दे दे। ओए 3000। ओए खत्म कर, अल्ट में खेलूंगा। नहीं खत्म कर, ये शांत रहो मेरे बच्चों, ज्यादा मिलेगा। अभी गेम पे ध्यान रखो। Bomb buddy out. Grenade. आएगा भगाओ। ये मेरा किल है। ले मार उसको, खुद दिया। One enemy remaining. नहीं, अरे यार ये क्या है आरएनजी निगम, मैं देखा भी नहीं इसको। स्पॉन लेफ्ट हाँ। delete this game bro. Defenders win. अरे ये क्या लिख दिया मैंने? भाई ये क्या लिख दिया मैंने? प्रीमियर प्रमोट कर रहा है। For now, it's just another comeback. भाई ये क्या? नो भाई क्या हुआ? 98 भाई एक और खेलते अरे खेलते भाई, थोड़ा रुक जा। सडनली मत स्टार्ट। क्यों? अरे फिर सुनो माइंड फ्रेश करो। सुनो हाँ उसका रैंक अप 10 मिनट मेडिटेशन, ठीक है भाई? मैं तो मेरा स्ट्रीम देखो, मेरा स्ट्रीम देखो, कुछ भी लोग इसका ये बढ़ाओ, क्या कहते हैं, स्ट्रीम रिटेंशन। मैच देखो कितना मस्त चल रहा है, ये आखिरी फाइनल है ब्रो। हाँ चल मोटिवेशन, चल हाँ ये देखो, इनके जैसे खेलेंगे अभी। आजा स्ट्रीम पे आजा। वेट भाई, स्ट्रीम पे दिखा तू। हाँ स्ट्रीम पे आ रहे तेरे भाई। ऐसे तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं खेलने वाला भाई। भाई रेडिएंट ने जाना है। तूने कभी सीएस ये खेला क्या, टूर्नामेंट्स वगैरह? नहीं, सीएस टूर्नामेंट्स थोड़ी खेले मैंने। उसने सादा पबजी टूर्नामेंट्स नहीं खेले, वो सीएस क्या खेलेगा? मैंने फ्री फायर टूर्नामेंट खेला, सीएस का प्रीमियर खेला, टूर्नामेंट पता नहीं। मैंने पबजी का खेला पे अभी भी प्रीमियर नहीं खेला भाई। 7-3 चल रहा है यार मैप। ये वेलो प्रीमियर के लिए यू नीड अ गुड टीम। वेलो प्रीमियर के लिए ब्रो कंसिस्टेंट बंदे नहीं है। जीडब्ल्यू तू है, खुद है तू।
हाँ वही मैं तो, हाँ like बोल डस्टी तू तू बोल। नहीं हाँ है, हाँ खेलता हूँ हर दिन घंटा हर दिन खेलता है, बट जब हाँ बंदे होते वन तब गेम नहीं खेलता है तू। एक गेम खेलता हूँ हर दिन तो लाइक प्रीमियर की एक गेम तो खेल सकता हूँ ना अरे बट टाइम होता है ना प्रीमियर का ब्रो भी, सही तू पे कौन से प्रीमियर भी खेलना टाइम है पे आ क्या? रहा है। सुन प्रीमियर खेलना है क्या सही पे सोच ले। सही अरे हाँ सही पे खेल TW इसका टाइम क्या होता है खेलने का, 11 या 12, और प्रीमियर कब चालू होता है, 8 हाँ आ बजे। जाता हूँ मैं 8 बजे आ साढ़े आठ जाऊंगा साढ़े आठ आठ साढ़े आठ आठ हाँ आठ 8 आठ बजे आ जाऊंगा साढ़े आठ आठ साले। 8:30 पे आ जाऊंगा मेरे 8 o'clock होते हैं तुम्हारे 8:30 होते हैं भाई CS का क्राउड काफी डेंजर है यार, बट ये CS का मैंने देखा भाई क्या चिल्ला रहे वो लोग, कुछ भी कर रहे, चिल्ला रहे, गाली दे रहे। भाई वो तू नूब एपेक्स है को क्या क्यों बोल रहे, क्या ये इसको क्यों गाली दे रहे, एपेक्स को क्या पता। ये ज़ाइवू इज अ नूब नो है इसलिए। ज़ाइवू हु देख ये सारे नूब्स ये सब नूब से है ना, पता नहीं भाई ये क्या मारेगा रे, का बॉडी देख कितना। मुझे खा जाएगा आ जाएगा। इसका नाम भी देखना क्या है, क्या है हेवी गॉड है भाई, हेवी गॉड। कहाँ लिखा हुआ है हेवी गॉड हेवी गॉड भाई ये क्या बर्ड गेम है कितने राउंड चाहिए होते हैं वैसे नॉर्मल लास्ट है भाई, लास्ट है। आप ओटी कितना जाता है इनका, 16 12 जाता है, 16 12। नो फर्स्ट टू 16 होता है ओटी के लिए फर्स्ट टू 16 होता है भाई ये क्या जोवी ने ना इसके पहले मैच में ना, पहले मैच में डायरेक्ट कितना था, फर्स्ट हाफ तक 0 किल पे था, फिर पूरे मैच 7 ही किल किए, फिर अगला मैप पे 35 किल्स किए और 8 डेट्स थे, सिर्फ 35 8 था वो। ज़ाइवू हाँ अब भाग रहा है फिर भाई ये कौन सा प्लेयर है नूब ही लग रहा है मुझे बहुत बोलते हैं गोट गोट मुझे तो कोई गोट नहीं लग रहा a long way to go. If you want to wrap back around, it's not going to be a good play. They've got to think different here. Low pressure pro on to Apex hai to come up for with a something. reason. Finally, Mattis has a bit more support. Pushing into T-Con. कुछ गेम सेंस नहीं प्रो लेवल का उतना। Santias actually comes to lend a helping hand in Ivy because he's अभी तो बहुत प्रेशर लगा होगा सारा हर कैसे मार, only his 7th देखिए kill of this हर T प्लेयर पे side. प्रेशर ही होगा Looking to leave a mark in the dying moments टेंशन of तो हो the रही attack. होगी Santias is स्पाइडर locked से into this corner, and he's only going to be able to kill the one. We get Hunter keeping his head tucked. Mobs is going to try to hold the forward स्टेज पे side of this खेल outer रहे yard, ये but he स्टेज पे goes नहीं down है with nothing. स्टेज पे, स्टेज पे And Hunter gets out from his फाइनल है भाई। unable to get a multi-kill. Heavy God's got to do it on his own ओह now. शिट सी And क्या कोई हो अकेला गया है, हेवी गॉड। and he has to हेवी cross गॉड no other अच्छा choice. खेल रहा है क्या स्टैट्स तो नजर नहीं आ रहे 16 kills 5 deaths What could be 16 the kills 6 saving deaths हो grace गया for Vitality? A fourth T round win. भाई ये देखना ऐसे लगता है F1 का ही लाइक ये कोच है। अरे आ गया टायर तो चेंज करने आ गए 2 मिनट 3 मिनट ब्रेक। Molodai is definitely one of the best हाँ operators जब right क्यों now. कर ले He's really good. रिफ्रेश हो गए GW वो कोच ही था उसका भाई वो man. कोच क्या डेंजर लगता है, ऐसे लगता है वो F1 का कोच है। भाई मेरा एक मैं एक बंदे के साथ वैलोरेंट खेलता था ना भाई उसने खेला नहीं चुप कर जा उसने महीने के लिए खेला नहीं तो फिर वो वापस आया फिर वो उसने कहा वो गोल 2 था तो मैंने कहा अब तो मैं इससे बहुत ही अच्छा हूँ अब इसके साथ नहीं खेलता मैंने नेक्स्ट वीक चेक किया डायमंड तक पहुंच बाप गया रे। What the fuck? मैंने मैंने कहा नेवर माइंड आई टेक इट बैक हाँ भाई मुझे भी वैसा ही लगता है, एक प्लेयर है मैं बोला अरे ये जब फ्लैट था तब मैं सिल्वर 3 या गोल्ड 1 था, तो मुझे लगता था बाप रे क्या प्लेयर है, फिर मैं डायमंड आ गया, वो गोल्ड पे अभी भी वो खेलता नहीं आया केस, बट अच्छा खेलता 92 99 100 10 to 20 24 प्लस मारने के लिए कुछ हो गया था क्या GW। डायमंड 2 पे है वो अभी भाई डायमंड 2 पे है भाई ही वन 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दे गेम्स स्टार्ट 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 8
8 गेम्स इन अ रो कौन जीतता है भाई? ये क्या लिखा है? इजी मूथ के सोना। कौन कौन 8 गेम इन अ रो जीता? वो वाला बंदा अभी उसके देख रहा हूँ। डैम। ओए मैं मैं कौन सा एजेंट खेलूं? ब्रो आई एम ऑन अ 6 विन स्ट्रीक। मैंने अभी देखा व्हाट? वो हर गेम एजेंट खेलता है भाई। मेरा तो 20 गेम स्ट्रीक थी इस अकाउंट पे। पता नहीं मैंने अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था तो रुइन होगी, वरना सारा ब्लू था। ब्रो तू ही एक रीजन है, रहने दे। ब्लू या ग्रीन? ब्लू होते भाई। क्या है तू कलर ब्लाइंड? डैम ब्रो क्या विक्स तेरे को कलर ब्लाइंड बोल दिया? ओ भाई अबे यार क्या फ्लेक्स होता है ब्लू एंड ग्रीन मिक्स है। Match found. भाई असेंडेंट क्या कूल लगता है भाई। असेंडेंट ब्रो इमेजिन इमॉर्टल आ गया ओपोनेंट। नहीं आता भाई क्यों आता है? कभी कभी आया था, 1-2 बार आया मेरे गेम। ब्रो क्या मेरे को भी नहीं पता क्यों पर वो जीतते नहीं है अनलेस वी आर इन द इमॉर्टल इज इन आवर टीम। नहीं जब भी इमॉर्टल आता है ओए जीडब्ल्यू तेरे को 4 एमएमआर चाहिए, ठीक है? तू ड्यूलिस्ट खेल। हां ड्यूलिस्ट मैं भी खेल। बाप रे कौन क्या ले रहा है? नियॉन भाई, नियॉन ले ले। कोई ना कुछ भी ले ले, किल तेरे को सिर्फ 5-6 भी किल हो गए ना तेरा हो जाता है। ले लूं क्या? बोल ले लूं? कुछ भी ले ले। रेज लूं या रेज लेता हूं या फिर क्या बोलता है? कुछ भी ले ले, ज्यादा आ रहा नहीं। हाँ केविक्स कह रहा है वो कैरी कर देगा। मैं तो मैच देख रहा हूँ। ओए मैच स्टार्ट हो गया। सुन नियॉन और रेज। सुन रॉक पेपर सीजर करते। रॉक पेपर सीजर शूट। सुन रॉक पेपर सीजर शूट जब बोलेंगे ना तब बोलेंगे रॉक या पेपर या सीजर, ठीक है डस्टी? रेडी? रॉक पेपर सीजर शूट। रॉक मैंने भी बोला। ओके फिर से रॉक पेपर सीजर शूट। सीजर लेट्स गो। रेज ले रहा हूं। चीटिंग की इसने, चीटिंग भाई। मैंने लाइव चैट देख ली। ये रीचर मेरे मैच पे पहले भी आया था ये साइपर, आई थिंक सो। And then we have to cook him. और हमारी टीम में किसके? We need to cook him, man. We need to cook him with DD oil. No comment. Yeah, no comment. My bad. मैंने क्या बोला मेरे को भी नहीं पता। लॉक इन भाई तेरा ये है अभी। नो हेडफोन गेम जीजी अल्ट 4 मार रहा हूँ मैं अभी। नहीं मत मार। अब तो तुझे सही पे अल्ट 4 मारना पड़ेगा। ये थ्रो कर रहा है। नहीं करेगा। उसका क्या है? बैक साइड ट्रिप लगा के गेम भी छोड़ दिया ना। हम 3 बंदे, वो अकेले क्या करेंगे? अच्छा मैं तो म्यूट कर रहा हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ फर्स्ट। वो गंदा था। साइफर नहीं पका। किधर है? ओके आई एम स्लो। नाइस। अरे जेट हुई ना बात। क्यों हुई ना बात? चल मारो पीछे। One enemy remaining. भाई 60 चूतिया छुपा हुआ था। जब निकल ले जीडब्ल्यू जाओ। अबे यार रहने दे राउंड है ना अभी भी चिल। ब्रो डोंट स्केयर दिस मच। एक इसमें भी माइनस फिर से तू गोल्ड 3 से पीछे जा सकता है, इसलिए तेरा एमएमआर भी अच्छा चाहिए गोल्ड 3 के लायक। हाँ वही समझ गया ना? अच्छा मेरे को किस स्पाइक के दे रहे ये क्यों गवा रहे हैं क्या ये? अरे जीडब्ल्यू अगर तेरा एमएमआर अच्छा होगा ना तो तुझे अगर एक मैच हारेगा तो तुझे माइनस कम लगेगा और प्लस भी ज्यादा मिलेगा। बट मेरा एमएमआर लो है, वही तो प्रॉब्लम है। तू हाई कर ना, डर की कैसे 5 स्टैक करता है तू? 5 स्टैक करता है ब्रॉन्ज के साथ। मैं ज्यादा 5 स्टैक नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। लो योरू लो मार इसको। योरू गंदा लो था भाई। शिट बकी जीत गया मैंने। नाइस।
केविक तेरे सामने केविक्स। हाँ मैं लेट्स गो एक और मार स्पेक्टर तेरे 26 तीन उठा दिए एसटी तू अरे मेरे से गन ले उधर क्यों ओ माय गुडनेस केविक ये क्या किया इसने भाई अरे डस्टी एडीएस कुछ भी नहीं चलता उस दिन भी तू रहना लेके एडीएस मत कर भाई स्पेक्टर लेके एडीएस सही पे मत कर नहीं एडीएस कौन से भी गन पे मत करो क्योंकि तूने एडीएस का कब प्रैक्टिस किया था लास्ट है ना वो एडीएस नहीं जमता है एडीएस प्रैक्टिस मैं जज लेके घुस रहा हूँ लैम्प्स अरे लैम्प्स आता भी नहीं है जल्दी भाई थ्रो जीडब्ल्यू ने किया सबसे पहले जीडब्ल्यू मारे मैंने अच्छा देख मेरे सामने साइफर मारी नहीं ना योरू को मैंने 98 दिया केविक्स कितना देते रहे तूने मैंने उसको 26 से मारा देख इतना लो था शील्ड भी नहीं था इसके पास और साइफर ने मारा मैं उसके जाता हूँ रे लो And then the pressure went to Hunter, and look at the delivery from him. Bragging as an IGL. It felt like it was Fallen's story at this event. Wow. Holy. मरा सामने Trophy from underneath Vitality in a year where Maos have nightmares every night thinking about the chances that have passed. What the hell? रिटर्न आया मैं अरे वैसे लो सब लो लेजिट सब लो है छोड़ो मत रे बंदों को लो है योरू लो नाइस जेट इधर नहीं था वो सही था वो यू गॉट दिस एंगल होल्ड करके बैठ लेट्स गो ये हुई ना हमारा सेट अरे तू भाग मत जीडब्ल्यू ऐसे बंदों को छोड़ के फायदा नहीं अरे सुनना मैं सामने ही जा रहा था मेरे को पीछे फेंक दिया ऐसे किसे साइकिल मार रहा है मुझे फ्लैश करके ऑलमोस्ट मार दिया मेरा असिस्ट देख डस्टी मेरा असिस्ट देख यार मेरे असिस्ट लास्ट गेम 10 थे और मैं जेट खेल रहा था कोई ना मेरा और भी होगा रहने दे इसलिए तो किल कर पूरा नहीं कर पाता असिस्ट क्यों कर रहा मेरे को किल्स चाहिए यार तो जाओ स्मोक कर जाओ पीछे क्लियर करता हूं भाई मार दिया उसने टैपट व्हाट द हेल मेरा बूमबॉट ये क्या करता है वाओ अरे मैं किधर फंस गया ये अबे यार मैंने टीपी किया वो फेक करने के लिए और उसने टाइम वेस्ट सेव कर ले अगला बाय कर रहा हूं नहीं बाय कर नहीं मार दे भाई पैसे ज्यादा मिलेंगे ना ट्राई करता हूं मरू तो फिर भी मिलेगा किल ले क्या एंगल होल्ड करके Hunter stepping into in-game leadership. एक लेफ्ट पे था पता नहीं शावर चलेंगे अरे यार लग ही रहा था But tonight we shall save round is slowly खेलो if in the next 8 rounds of play G2 pull off the unthinkable here in London. And Vitality, they've got the weapons for the job. मैं तो बाई कर रहा हूं मैं तो अमीर बन रहा हूं है ना ओए भाई हमें भी बाई दे नहीं भाई नहीं बाय मत करो ये स्पाइक ले डब्ल्यू स्पाइक ले मैं लेट आ रहा मैं कैसे दूं नहीं मैं एफके हूं ना क्यों व्हाट एक मिनट के लिए एफके हूं ये नहीं तो भी हम This will not be the round that Vitality lose. Vitality very easily can make this a long game. They put one foot in front of the other. One more comeback this year is what they're looking for. They've got nothing else to do tonight. Getting this far on T side is special. It's got to be sweet for G2.
इधर ही है Enemy spotted A. Right here. अरे ये क्या है टीपी क्यों करता है ये बंदा मैं तो फंसा Spike down A. 98 Last player standing. अरे 56 Final hurdle for G2 is overcoming the thought of actually winning. By clove diff. And that thought, रुक रे that ability क्लोरी to close a game क्लासिक थी मेरे versus पे gods like vitality. अरे it's बी breaking. चलो ना बी क्यों नहीं जा रहे हम It's broken many. You step forward into that spotlight, you think you can feel it, and very quickly that momentum वैंडल can escape. स्किन नहीं है हमारे टीम पे But this is a one सीरियसली where Vitality aren't banking Hey, on a superstar. सही Zywoo दे 9 ना and 15 has had इधर है two इतने देर किधर historically था awful starts to maps in this best of 5. आजा आस्क फॉर स्मोक Messi has tried to crank it up towards the end of this matchup, but it looks like they are going to slam दुनिया their भर way के फुट into this मजा आ B गया site. That's what it looks like. But they don't go down that ramp. They will charge from above instead. मार डाला पूरा मार डाला रे Critical holds. And down beneath G2, from the shadows comes Rops, forming a heartbeat of a रोटे साइफर को रोटेट रहने दे ये नहीं करेगा नाइस ऑन जेट व्हाट द फक Enemy remaining. One enemy remaining. छोड़ो Last player standing. ये रे defense here for Train. A 3v5 feels like far too much to ask, so you can sit inside your brown halls and you can think about how you'll break through in well another played round, perhaps. ओए साक्या दे रहा Hunter knows this idea falls flat. Rops gets the help just in time. He doesn't have a lot of time to respond, but Apex quickly in his quick headshot slows things down for him. Rops doesn't have to get his aim displaced looking ओए up. 13 पे क्यों खेल रहा है तू रुक ना He आने take दे the fight मुझे on his own terms. Looks like a prolonged तेरा 6 here ध्यान from नहीं है। G2 unless they तीन can किधर से मिले reassess तीन the किधर से मिले situation and find it out. मार के है The नहीं obvious thing to do is to go B again. The CTs think that maybe they're going to make a long con play भाई to हमारे साइड outside, को but देख ले GW If you're Vitality, you have to stay on your toes. yeah, I mean, and if you're a Vitality, you just split. If there's a lesson that Vitality should have Yeah, learned close throughout it. this matchup, it's that when you cut 1 or 2 players down for G2, the other 3 feel like they've got nothing to lose and will try to run into you. Yeah. Wow, I'll be I curious to go see as this T side goes on whether G2 start to lose Recon that bit पीछे of their अरे identity. गन चाहिए मेरे को Yeah, that's what we're watching. Recon for. lamps And to be honest, दो I गन think दो that, वेट वेट आ you know, रहा see a call like दोनों that, skins है and that's what G2 Skins do. नहीं, We've already just मेरे said को it, गन ही actually. चाहिए। When they have the huge lead Left and wing they're है। very close ओए to आवाज closing out मत the करो game, रे they like to My bad, try my to end bad. up with even more momentum. The fast call comes. एंट्री लेना है क्या Sometimes only with 3 rounds to play. मैंने So what are you going to बोला do वो with another 6? क्यों इधर ये I ट्रिप think पे कैसे Hunter फंसता है मेरा knows, बॉट you know, the depth here for Vitality. It's another map where they अच्छा should है be the कि ones trip who पे win. It's फंस actually गया crazy again that they're even in the lead. मेरा रीलोड आ गया था बच Vitality, गया you're gonna do a मैं little mental math. We got this many rifle rounds left, 1 foot in front of the other. Another small comeback here, and it's actually Saw to get involved. We're seeing a team that's prepped. We're not seeing absolutely Right, but intricate, ornate strats here on T side that are showing us that, you know, G2 अरे is capable of anything, and it's just a four. आवाज आया था they'll बट win. मैं We've seen कंफ्यूज them था get वो the मेरा था pistols, ये get early momentum, ओए जेट put जेट themselves in a lead. थोड़ा होल्ड करके They खेलना still have just one अभी के लिए final भाई chance. I got mine Between the five रिकॉन है of तेरे them, पास रिकॉन है ना one रिकॉन है ना नहीं individual नहीं है, play. नहीं है। Just a pop off. I mean, तेरे पास seriously, that's 6000 what है they have. मैं They क्यों बाय have दे रहा हूँ तेरे gears, they have levels. The explosiveness of the मेरे पास rifling अल्ट है बाय द across वे जेट G2's तो बाल board. करे Is it enough? Between Heavy God, Mattis, I mean everyone, right? ये हार नहीं सकते भाई Yeah. प्लीज नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं आ रहे And they've still got the tools for the job.
And Vitality in the Yo, process can't become a what shell of themselves. They can't just simply start hiding. But that grenade does what could be a critical amount of damage for Apex. It's early punishment. रोटेट मार मैं तो ऐसे ही मार रहा हूँ Trying to take a fight to them. क्लो वाली सीरियस अच्छा ठीक है तो Get out of here. Because he returns the favor with half of Sunpius and आजा Heavy God gone. इधर आजा ए पे मत जा That's such a crazy play. ओए टीपी देख ओए टीपी देख हाँ टीपी देखो This game will boil down to the details. He knows, भाई. जा That is what Counter-Strike is. टर्न लेके फिर से रोटेट करना पड़ेगा रोटेट कर वापस कर ए पे जाओ ए पे It's one of those slow burn plays. And they step heavy. मैं रिवील हो गया Yeah, he vanishes from Ivy. ऐसे आकर तू भी जा रहा है साउंड बना जा केविस के साथ जा वो आगे ए टीपी मारा केविस फिर से टीपी मार दे फिर से टीपी मार दे फ्लो टीपी मार ए पे टीपी मारा इसने मतलब भाई क्या करे केविस इधर जा वन बेटो मेरा पीछे भी स्ट्रीम चल रहा है G2 जीत रही है या नहीं वो देख रहा हूँ If he gets a kill, he's not making any noise. He has no nades. He has no time either. If stream भी Sunpius कैसे doesn't just बंद start करूँ? shooting at the walls, Wait, if खेल nobody gives him a thread to pull on. Wait, they can actually walk out, but they have to start actually running now. 10 on the clock, and Hunter's Right starting to here. exit out T-Con. I mean, Nate boiled this one background down to थोड़ा these था नहीं टाइम में हो जाएगी भाई ओए मेरे को जाना है बैकग्राउंड में फिर से They got a kill. अच्छा जल्दी कर खत्म कर over towards वो B. है, Now 3v3 चल रहा है Vitality, no, they've made a mistake. They let this close flank go down. But with a bomb plant, डस्टी तू अभी वैंडल दे और किसी से बाय Hunter and मांग Mobs within this ले ले bomb भाई, site versus 3 of मैं अल्ट में खेलना 2025's चाहता हूँ the वैसे very best. और The old bones of this new lineup. Hunter waits for ये the मजा आता है presence. जेट अल्ट खेलने में हगो भी वो भी सही हाँ हग के भी वो नाइफ्स खत्म करने का रिलीफ होता है But with Flazy from the bottom of the bomb Get and out the of my smoke way. of the bomb, he's gonna just try इसने भी मारा ओ जेट डिप जेट डिप ओए G2 जीत गई और क्या चाहिए Can you believe your eyes? After the Spirit match online, to take them to 3 maps to crush them. One enemy to do the remaining. same thing to this year's #1, the only team to actually complete इधर नहीं है this in the सिटी best नहीं of है five. Hunter with those calls, and how sweet is it to have Saw with that tack ओए मेरी जरूरत नहीं है ना and that call. ओए जीत गई नहीं The ornate आरू को आ and रहा हूँ detailed round that they were मेरे को looking kills for चाहिए to था show that this project is complete because of him. मैं बुलडॉग चला रहा हूँ ये ले तेरी जरूरत नहीं है तो वैंडल ले दे ओए आ रहा हूँ मैं वैंडल ले दे ये जा बुलडॉग ले मैं गेम खेल रहा हूँ मैं गेम खेल रहा You हूँ go deep versus Vitality. You usually उसको बाय दे केविक्स केओ को बाय दे Instead, this is a G2 that will go up to unknown heights because a roster formed spike low months ago कौन ले रहा है has put an end ले आओ to the कुछ भाई Vitality reign of terror. They have tried to recover in the second half of this season. They got this close. But G2 of all teams finds a way to डरा मत तेरे फुट से a G2 Nice shot. that comes out of nowhere. Hunter. I got the spike. होल्ड करना सर ओके जेट उधर है एक ऊपर दे रहा हूँ स्मोक एंट्री ले रहा Dropping smokes. I'll get him. रैम्स क्लब ले रैम्स ले ओए शावर ले जेट शावर जा मैं 1 HP हूँ One enemy remaining. Satchel out. करो Satchel out. अरे मरा मैं नहीं खेल रहा तू आगे क्यों जा रहा है जीडब्ल्यू स्पाइक डाउन नहीं हुआ है मतलब स्पाइक पिक कर रहा है हमारा एक बंदा है लो लगेगा क्या नहीं लगेगा
Mobs adding some America's flair and saw a maestro of mass destruction. Together, they are G2 Esports. अरे यार Blast open London 2025 मारने लगा था भाई Grand Champion. भाई क्या मैंने पिक्स निकाली है बुलडॉग रनिंग शॉट का वो ओनी बुलडॉग क्या मजे की लगती है ओनी हाँ ओनी बुलडॉग और वैंडल क्या मजे के लगते हैं और फैंटम भी भाई ओनी का पूरा बंडल क्या मजे का लगता है लेट आऊंगा रे तो साइफर के पास भी क्रोनो वॉइड है मैंने अभी नोटिस किया लेट्स गो G2 जीता भाई तू तो वाइटलिटी को सपोर्ट कर रहा था अरे ये स्पाइक रोटेट मारो मानते Who's next? मरा वो देख क्यों के पास है बंदा नो Spike down B. साले को इधर ही मरना Kevix what the fuck You had your fun. My turn. Last player standing. 114 रे अनइंस्टॉल कर दे अरे रुक रे मैं थोड़ा ये कर रहा अरे हूँ मेरे पीछे था फुट गलत G2 को देख रहा था G2 को क्या सीन है उनका अबे G2 रे Last round चलो before वन the वन वन switch. स्विच आ रहा है G2 की माँ चुदा भाई बाप रे डायरेक्ट बोल दिया इसने वैंडल दे तू पहले अरे ये बेल को क्यों दे रहा है ये क्यों स्पाइक लेके क्यों रोटेट मार रहा है हर बार क्या पता क्या कर रही है लोग उसको बाय दे जेट लास्ट राउंड है वैसे भी भाई मैं ऑफ लेने लगा था भाई चूतिया है वो रहने दे स्पाइक कोई लेगा क्या मेरा अल्ट है मैं एग्रेसिव खेल रहा मेरा भी अल्ट है मैं नहीं मैं ले लेता हूँ मैंने ले ली अब मैं देखते मैं तेरी किल चोरी कर रहा हूँ केक्स जा आ गया भाई W प्रेस कर लेट्स गो W प्रेसिंग Dropping smokes. मैंने तो प्रेस किया जा Satchel out. जा Back like I never left. मरने वाला हूँ पता नहीं क्यों चलो एक ऊपर है इधर लैंप अग दिया मैंने सब कुछ तू ये कर प्लान कर अरे तू फाइट क्यों ले रहा है तू अरे ओपन में मत कर अंदर कर हाँ आप कर कोई नहीं एक लैंप से लैंप उधर है What? Shutting them down. One ये enemy तूने remaining. देखा वो क्या हुआ मेरे साथ Player standing. आसवान GW ऐसे क्या अल्ट कर रहे थे वेट अरे वो मिस कैसे हुआ वेट Switching sides. चलो भाई मैं जो इंसेन क्लिप मारी है उसका कुछ नहीं होता GW में फंसे हुए अरे फिर वो गन अरे तू तो लाइक कौन सी लॉबी में खेल रहा है वो डिपेंड है ना पर लाइक पर अच्छा मारा तूने अच्छा मारा भाई काफी GW क्या कर रहा है पता है GW क्या कर रहे हैं पता है उसने अल्ट लिया वो लगा कैसे नहीं उसने इधर फेंक दिया और क्लो इधर था अरे नहीं मैंने नीचे फेंक दिया चेतन जो उधर है सुन ना मैंने नीचे एम किया सुन मैं इधर हूँ ना देख क्लो हाँ आजा इधर है ना क्लो मेरा अल्ट पड़ा इधर हाँ वही तूने ज्यादा दूर फेंक हाँ वो गलती हो गया मेरा Drop in a smoke. जाओ नो वे देयर कमिंग पी जाओ ओए तू वॉक कर उधर वॉक कर GW नहीं कर सकता ट्रिप है साइफर को मार अरे यार साइफर को मार कोई मैं मार देता हूँ वेट कर रहे तू वेट कर उधर गए भागे रोटेट मार एक शावर है था जेट W कर उधर जेट विद द W ये मारेगा हमारा शावर जाए Spike planted. स्मोक ने
Oh, Jet with the whiff. हेवन जा, साइबर हेवन जा. Here. Last player standing. Oh my god, the flick मारा था यूरो. Damn. भाई shit. भाई तुक्का लग गया. यूरो ने गंदा मारा तेरे को भाई, देखा मैंने. भाई हम हार जाएंगे ये at this point. Let's go. तेरी रैंक अप है. I remind you GW तेरा रैंक अप है, मेरा नहीं. पता है मेरे को, अगर मैं हारा तो तेरे घर पे जाके मारूंगा, वो याद रखना. मेरी क्या गलती है भाई? तू ही एक रीजन है भाई. भाई वो जाने दे, मैं भी ऊपर आ जाऊंगा, बट हमारे 2 बंदे 4 किल पे अभी भी. उनको भी बी दे दिया, कच्चे नींबू आ गया. जेट नाइस. बुलडॉग लेके विफ मारा इसने. होता है. अरे तू इधर जाना. अरे इधर फायर कर रहे. अरे भाई शावर 2 क्यों खेल रहे, कैसे रैंक अप होगा? अच्छा मैं ना ऑर्ब लेने गया था. अच्छा बंदे है पे. आजा. फिर वो सामने फायर किया अभी. आ गया. कहाँ जाएगा ये? एक के पास बुलडॉग है, वो स्पैम कर रहा था. अब तू भाग गया. ओके मैं आ रहा हूँ. रुक. इधर है. लेफ्ट. One enemy remaining. Spike down B. लो इधर था. बुलडॉग है ना उसका. Spikes here. रुको मैं स्मोक कर देता हूँ, दूसरे साइड जाओ. फ्लो अननोन पता नहीं किधर है. इनके भरोसे पे मत रहिए. पीछे जेट. 30 seconds left. तेरे पीछे साइफर. I got your backs. Just Vandal you know, from the front. अब मुझे अरे दे जेट जल्दी दे. Need a drop. Thanks. Need a drop. Thanks. अबे किधर है? यही कि क्या था वो? जेट तू ए पे जा, बी पे जा ना. उनका देख, ये लोग होल्ड नहीं कर पाए. तू जा. मैं नहीं जाता. मैं और जेट खेल रहे इधर. नहीं एक ड्यूलिस्ट चाहिए एक साइड. No peeking. ये क्या स्मोक है बाय द वे? व्हाट द फक? वो देखेगा ही नहीं, हम इधर से पकड़े. अरे मैं खुद ही नहीं देख रहा, वो क्या देखेगा? हम हार गए भाई. वही तो. टीपी साथ मार मेरे साथ. रेडी 1. वेट करता हूँ. 2. No, what the fuck bro? No peeking. ओके आजा. Spike down B. साइड पे. नहीं अरे ब्रो आर यू सीरियस? ब्रो जेट आई हेट यू. तूने वो क्लियर किया. One enemy remaining. कूदो. अरे जा अब्रास मार दे. तो भाग रहा है. बाप रे जेट ये क्या था? वैंडल है मेरे बॉडी पे. इधर ही होल्ड कर रहा है. आई हेट जेट ब्रो. वो कॉर्नर बिना क्लियर करके भागा. साइफर टीपी मारने को बोल साइफर को. हां लेट्स टीपी मार्केट. Here. Gun here. ये देता हूं मैं. 30 seconds left. Ooh. Last player standing. Last one down. No choice. Damn right Bro. we're crushing it. कैसे है तू? 2 किल उठाया मैंने. Can I get a drop? पता है तू. धीरे आ जाओ. मेरे ऊपर आ रहा है तू, मेरे को पता है. धीरे आ जाओगा. वैंडल द जेट. मेरे को बाय देना यार. जल्दी दे. तेरे पास बाय द वे 5000 है. हां गन फेंक ना भाई. तेरा. मुझे केविक्स ड्रॉप भी देना है. मैं गरीब हूं. Guess they're fond of losing. तेज को. अरे बी छोड़ दिया भाई. ऐसे कैसे खेल रहे हो यार? मैं डब्ल्यू करके ये हो गया. और या तो ए पुश कर. Ouch. ये कैसे मारा पता नहीं. Drop in a smoke. अपडेट करके.
पकड़ इसको। ओए शावर नहीं छोड़ रहे यार, शावर जा। Reloading. Okay, they are rotating by the way. चलो एक साथ करते हैं अपन। No peeking. Ready, 1. अरे आजा। Right here. वो वापस गए, हम गए भाई। Target Nice one. refreshing. नहीं है। पे खेल साइपर। One enemy remaining. Spike down A. ओए मारो मत उसको। My ult is ready. थ्रो करना है, राउंड थ्रो करना है। थ्रो करो राउंड। नहीं, मैं मारूंगा इसको। You know more than we did before. Let's use that. Thanks for carry. Carry brother. Get Vandal buy करके दे, जल्दी दे। स्किन दे। Thank you. 5850 है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है? भाई उसको मैं नहीं ड्रॉप करने लगा, उसको केविक्स ही ड्रॉप करेगा। केविक्स ड्रॉप कर तू। नहीं एक्चुअली आई एम फीलिंग जेनरस। ए पे कौन है? मैं जा रहा तो मैं आ रहा हूँ। मरना नहीं। Nowhere to run. I think रहने ही दे। अब ये बंदा कैरी हो रहा है तो कैरी जैसे Drop in a smoke. साइफर को मार कोई प्लीज। ओके लेट्स गो। Duck, my ult's ready. One enemy remaining. इधर ही है। This reminds me of this one time where I चलो एग्रेसिव खेल रहे, एक राउंड में आप कंट्रोल ले रहा। भाई बॉट लॉबीज भाई, आई एम नॉट इवन ट्राइंग एनीमोर। भाई मैं ट्राई कौन कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मैं तो भाई एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ऐसे कर रहा हूँ, देख मैं ऐसे कर रहा हूँ। जीडब्ल्यू देख। ओके तो मैं थ्रो कर सकता हूँ ना केविक्स? आई कैन आजा थ्रो कर। हाँ कर लेते हैं ना, कोई ना। मेरा अल्ट है तो मैं एग्रेसिव जा रहा हूँ। जीडब्ल्यू नेट डाल दे रे। मैंने तो बोला आई एम एंजॉयिंग दिस शिट, आई डोंट केयर अबाउट रैंक। drop in a smoke bomb buddy. मान आर यू सीरियस? Like I never आजा left. पकड़ इसको। Refreshing. Spike down B. Right है here. किधर बंदे? भाई पीछे पकड़ा, लगा क्लोज। अरे लैम्प You had your fun. इस बॉल में क्यों घूम रहा है? भाई कुछ भाग जा सिर्फ भाग जा। रे थ्रो मत कर गेम, सिर्फ भाग जा। नहीं कर रहा चिल। भाई केओ पे स्पाइक केओ पे। देख किल के लिए देख 18 आरआर चाहिए तुझे। हाँ पता है मेरे को। एक 18 भी नहीं, 4 आरआर। 2 आरआर चाहिए, 2 चाहिए मेरे को। अरे Last player standing. ब्रो फक, मैंने गंदा खेला ये। भाई थ्रो Enemy remaining. ये गंदा खेला एक्चुअली, माय बैड। अरे इसको बताओ रे, 12 वाला मैच हमारा 12-3 का मैच, इसको लगता है कि भाई सच था 12-3 था। 12-3 भाई 12-3 थे। अरे ठीक है, कितनी बार बोलेगा, मैंने देखा वो मैच। चिल अबे जेट वैंडल दे। तूने ये देखा नहीं, तेरा स्ट्रीम पे मैंने देखा। चिल कर। चलो मैं लॉन्ग जा रहा हूं। मैंने अब मुझे भाई चाहिए, मैं थोड़ा गरीब हूँ। मेरे पास हर राउंड ड्रॉप दे। हर राउंड ड्रॉप दे दे गरीब। हर राउंड ड्रॉप दे रहा था भाई कसम से। नहीं दिया गरीब। मेन कौन देख रहा है? अरे मजा आ गया, लेट्स गो। लेट्स गो। यार मुझे मॉब से मारना है। अब उधर ही है वो Get तो out of my way. One enemy remaining. ये मारने दे। अरे भैंस की राइट साइड है। मार ले।
दिया। Match point. वैंडल दे वैंडल देती। अबे अब तो थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो Need a गए। drop. Thanks. अबे ना ऐसे किया ना GW ब्रो। GW इस कैरी के बाद तू मेरा ऑफ लेके भाग रहा है। Catch me if you can, catch me. Bro, if you can, है ना? अच्छा ले दे अच्छा ले अरे उठा नहीं दो जन ने शावर। I know exactly where you are. क्या हो रहा है उधर? No peeking. ओ इधर ही है। Enemy spotted A. Spike down A. अरे मेरे राइट साइड कब आया ये? Spike planted. Last player standing. देख रहा था इतनी ओए डस्टी तेरे अकाउंट पे बंदे रिपोर्ट मारने वाले हैं। बाप रे ये क्या होगा इसका? इसका आवाज वैंडल दे जेट वैंडल दे डस्टी तेरे अकाउंट पे ये क्या हो गया इसका? लग अबे दे राउंड स्टार्ट हो गया जल्दी दे कैच मी इफ यू कैन। ऑलरेडी कैच किया मैंने तेरे को एक बार मैंने किया था। डस्टी तेरे अकाउंट पे रिपोर्ट आने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी मार लिया रिपोर्ट। क्यों? अरे मजाक कर रहा हूँ मैं क्यों करूंगा? अरे हट। How many people? अबे चूतिया। Why are you throwing? There are 5 people. Okay, 2 here. ओरे क्यों ना अच्छा फ्लैश मारा तुझे? 92. They are going A, planting. DW. Spike Bro planted. जाएगा मैच अब। I think so. GW TP मार। यहाँ पर दो हैं। गन आउट। Last player अरे standing. ये विफ कैसे कर रहा हूँ मैं? तू कह रहा था रीचर को कुक कर दे। रीचर से तो तू कुक हो रहा है। अरे रीचर को मैंने मारा बहुत बार। चल No peeking. Clearly not enough. Drop in a smoke. stick cypher stick. You got this. No stick करता। मैं तो गरीब हो गया 3 ऑफ लेके। और ले। अबे तुम मेरे को ये दे वैंडल दे स्किन दे मुझे। अब मैं जीजी कर रही है मैं। अबे Need a drop. वाह Thanks. अब देख तू साले अल्ट है मेरे पास याद रखियो जेट। क्या? मेरे पास अल्ट है याद तू रखियो। ये देख अब कैसे खेल। Catch me if you can. मैं कैच किया। लेट्स गो। उसने अपना सैटल वेस्ट कर दिया गन के लिए। इतना गरीब। कहाँ से आ गया ये? हाँ जेट नॉट टुडे। बैंस क्या तो भाई लॉन्ग दो लॉन्ग तो टीपी मार सकते हैं तो। I know exactly where you are. अरे मर गया। के वर्ल्ड मार दे। ऐसे मत मार। No peeking. Here. Refreshing. Spike down Have one A. of these. क्या बे ये तूने गंदा किया। 40। One enemy remaining. नाइस वन इधर ही है। अरे ये साइफर का इधर ही है बोल तो रहा हूँ। वो जीत गए हम ना? नहीं अभी सो। अरे अभी तो भाई 20 राउंड जा रहे बाकी है। 20 30 राउंड seconds नहीं left. ब्रो ये जीत गए। जी हम जीत गए। Team A. मैंने बोला ना
Defenders win. Goal Back to my 3. workshop. Let's Still go. much to be done. भाई 10 साल के बाद आ गया ये गोल। ये कभी पहले भी गोल 3 था। नहीं मैं गोल 2 था, गोल 2 था, 3 नहीं था। भाई क्या दिख रहा है भाई? फाइनली लेट्स गो भाई। मेरा रैंक अप कैसे नहीं होया? जीडब्ल्यू का किस्मत बाय द वे काफी अच्छा है देख। इसके बड़े अच्छे टीममेट्स आते हैं। ओए नहीं स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरे हेडफोन का चार्ज खत्म हो गया। शिट। अबे क्यों? फायर लगा ना फिर उसको। मेरा वायर पता नहीं किधर है अब। अब हो गया रैंक अप, अब रैंक डाउन नहीं होना है ना इसलिए। नहीं सही पे अभी कितना दिखा रहा है पता है? 10% और मेरे को वार्निंग बोल रहा है हेडफोन पे। वो नकली वाले लगा ना फिर जो पहले लगाता था। और भी नहीं खेल पाऊंगा। अब देख कर रहा है ये। तो खेलना है तेरे को? मैं खेल सकता हूँ आई गेस। खेल ले। खेलना है सही पे। ओके हाँ तेरे पास शील्ड भी है प्लस 19 आ रहा है और थ्रो नहीं करेंगे। अब मैं जेट लॉकिंग कर रहा हूँ। मेरे को वायर ढूंढने दे। वेट देखता हूँ मेरी कितने बजे क्लास है कल। देखता हूँ 1 सेकंड। अच्छा खेलते रहते, अगर चार्ज खत्म हो गया तो वायर लगा दूंगा मैं। खेलते। मैं भी अपना टाइम टेबल चेक कर लूँ देख के। कल मेरा क्लास है सुबह 8 बजे। डब्ल्यू यार तेरा रैंक देख के मेरे को अच्छा लग रहा है रे। बड़ा गोल्ड 3 गोल्ड 1 ही कितने देखता दिन था आया मैं देख रहे भाई जब से लाइक हमें 1 साल के ऊपर हो गया ना। ब्रो द थिंग इज अभी सुन मैं ना इतना भी गंदा नहीं खेला। हर मैच इतना गंदा, एक क्लोब मैच मैंने गंदा खेला बट बाकी मैंने ठीक ठाक खेला। चल मेरे 115 से 245 तक क्लास है मेरी। 115 फिर मैं खत्म। निगा 115 भाई हमारे चेंबर प्लेट 2 पे था ऐसे कैसे? वो तो दिखा हमारा चेंबर कौन? ओपोनेंट लाइक करोड़ मैप। अरे वो तो सबसे ज्यादा गंदा खेला था भाई। हमारा जेट स्मर्फ कर रहा था मुझे लगता है। मुझे लगता है हमारा जेट स्मर्फ कर रहा था। हाँ हमारा जेट। ओह माय गॉड भाई तुमने क्या कर दिया है? यू थ्रोइड यू एब्सोल्यूट बॉट। भाई ये क्या कर दिया? व्हाट इज टर्नेशन? मुझे किसी और एजेंट में डाल दिए। आई कैन ओनली प्ले डुलिस्ट और क्लोव ही खेलता हूँ पर मैं इसके रैंक में क्लोव नहीं खेलने लगा। नहीं तेरे रैंक में तो बिल्कुल नहीं लेने लगा क्लोव। क्यों क्या हुआ? I just don't feel like playing क्लोव। अरे जीडब्ल्यू इसको ड्यूलिस्ट ब्रो इनिशिएटर चाहिए तो हमें इनिशिएटर चाहिए। अरे सुन ना इसको ड्यूलिस्ट लेने। नहीं दिस इज द प्ले। इनिशिएटर नहीं चाहिए होता। मैं ले को नहीं खेलना। ये ले तू रेस लॉक कर यार। अबे ले भाई तू भाई ट्रस्ट आई कैरी। इसके साथ भी कैरी कर लूंगा। अरे नहीं हम कैसे भाई? ओके ये देख भाई केविन तू क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा ढंग से भाई। इसके तो क्रैक आवाज क्रैक हो गई है। हां रुक ये onwards towards the Budapest Major. What are you reading for G2? Instantly into the contender tier. They're instantly up there. It's no easy feat to beat Vitality in a BO5. भाई इसको वैलोरेंट तो इतनी शिट लग रही है मुझे लगता है ये CS की वीडियोस देखता रहता है अब। I mean, मैं भी CS सपोर्टर हूँ बट मैं वैलो खेलता हूँ क्योंकि तुम लोग गवार हो इसीलिए। वैलोरेंट में मजा बहुत आता है। CS में ट्राई हार्ड ही मिलते हैं। मैं ट्राई हार्ड ही करता हूँ कभी कभार CS में। जस्ट मेरे पास ना वो फेस आईटी अकाउंट नहीं है वरना मैं सीरियसली CS:GO पे खेलता। फिर फेस इट होता है फेस आईटी। ऐसे मैं फेस आईटी बोलता हूँ। मेरे को इट नहीं शब्द नहीं आता मेरे मुंह पे। फेस इट नहीं प्राइम अकाउंट खरीदने के बाद फेस इट बनना। पर हाँ उसके पास है ना प्राइम। अब देखो अब कैसे करूँ भाई। अब मेरा जेट Let's go. अब यार ये कौन सा हैक लगा है? ब्रो यू आर डस्टी स्लो है तो। अब देख जेट इंस्टा लॉक जो कर सकता है वो मतलब उसका रिफ्लेक्स काफी होते हैं। देख मेरे सारे अकाउंट डस्टी रस्टी
बस्टी लिख के और भी कोई अकाउंट बस्टी अकाउंट बना दे। नहीं बस्टी नहीं बनाया अभी तक, बना लेता हूँ। बना कोई ना। रस्ती रस्ती बस्ती भाई मस्ती चमकू किधर है? सस्ती। भाई चमकू क्या अमीर बंदा है, तूने बताया ही नहीं, उस पे इतने पैसे हैं। I'll go भाई smoke if you want. You can get initiator. अरे सेंटिनल ले 3 साइट वाला मैप है ये। भाई इट्स क्या बोल फाइन, रहे एक है ना। इनिशिएटर? तू तो किल्स के लिए खेल रहा है, तू थोड़ी ना सेफ खेलेगा। ये सेफ हाँ खेलेगा। मैं सब कुछ वो तो मेरे को पता है, वो जिंदगी में नहीं खेलेगा सेफ, देख तू 100%। भाई यही तो चेंबर की जॉब होती है, भाई हेडहंटर स्मोक लो निकालो, रे। वन टैप गेट आउट। आई मीन अच्छा टीम है, भाई इतना भी चेंबर बुरा में नहीं। बहुत अरे ओरे सोवा ब्रीच, देखो ब्रीच और ब्रीम एक टीम पे होगा। जी नॉट जी। अब हम शॉर्ट जाएंगे, शॉर्ट्स। ओके ओके, चेंबर डिफ करना है, रेज डिफ करना है, हाँ चेंबर डिफ और रेज डिफ। मैं ट्राई करते आज। Okay, kids, we've मेरे got से नहीं होगा, company. बट तू कर सकता Pretend you all है। get along. भाई मेरे से नहीं होगा, नहीं तेरे से ही होगा। अब कैरी करेगा। मेरे से कैसे होगा? नूब भाई, मैं जेट में हूँ और इसने मेरा अरे जेट में ने, तू रेज में ने। मैं एक्चुअली दोनों हाँ, में पर हूँ, same। बट रहने दे। अरे वो जाने दे, 2 मैच खेले तूने डिग्लिश। अब हमारे पास भाई ब्रीच है, जीडब्ल्यू तो हमें लाइक इसके क्लोज बाद घुसना ना पड़ेगा। सीएस क्या हेलो बोल रहा है बंदा, हेलो बोलो एक साथ उसका, एक साथ 3 2 1। हेलो हेलो हेलो। ओ अच्छा, पार्टी पे बोलना था। अच्छा टैप। अच्छा मारो स्मोक, मारो सी पे जल्दी। अरे सॉरी रहना था क्या? अरे इधर है पता बात। सिटी। अरे विश किया मैंने। कोई गैरेज नहीं है। गैरेज है क्या बोल रहे? नहीं है। अरे तेरे को मार, गैरेज नहीं है। गैरेज देख रही है। अच्छा फ्लैश था। Last player standing. होली शिट। अरे यार ये पिस्तौल राउंड पे हमेशा अंदर खेलते हैं भाई, लॉन्ग फाइट कैसे ले रहे हैं ये पिस्तौल पे? पागल है क्या? भाई मैं तो चेंबर हूँ, मैं पिक निकाल ली। अरे नहीं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, फ्लैश वाला एजेंट बोल रहा था। भाई जीडब्ल्यू तुझे इसकी आवाज आ रही है? किसकी? केविक्स की बड़ी टूट। अब आ रही है। अभी बिगड़ गया इसका वॉइस। अरे किसने बोला गैराज नहीं है? पता है इसके वजह से कंसंट्रेशन गया। अरे हमारा टीम नहीं है ऐसा बोल रहा हूँ, कोई भी गैराज नहीं देख रहा है। ए लॉन्ग पिक करना है क्या तुम लोगों भाई तू चुप कर जा केविक्स, चुप कर जा। तेरा माइक डिस्टॉर्ट हो रहा है। जेट वेट। अरे वेलकम टू गोल्ड। अबे यार Reloading. मुझे बोल रही थी। हाँ तू छी है। ओके भाई मुझे चेंबर में। Player standing. अरे केविक्स की गलती है भाई, तेरी गेम अभी तू डी रैंक हो है ना, तो केविक्स की गलती। अच्छा हाँ अभी वैंडल देते हैं, इसलिए उसने मेरा खेल दिया। क्रोनोवाइड ब्रो, आई लाइक क्रोनोवाइड। थैंक यू। आई लाइक हेडहंटर। यू लाइक हेड? पिक करना है। ए शॉर्ट बोलो, ए लॉन्ग तो बोलो। स्किन है क्या? ब्रीच अरे है इस पे। वैंडल आ रही। अबे शी ये कौन? भाई ना कर क्या ले जा। अरे वैंडल किधर है? अरे वो तो जेट आनी सीरियस। खेल कोई ना खेल। नहीं मैं नहीं ले रहा। अच्छा ले भाई तुम लोग क्या देख रहा है? एक तो जगह देख रहा है। सीधे घुसो। ले भाई तुम ही लेके जा भाई लोगों। No charges left. राइट इज टर्न बाय द वे। राइट में
इधर ही है वो सी ज्यादा सी भाग बी पे यहाँ प्लांट कर लेफ्ट साइड एकदम नेक्स्ट यही पे ना ओपन हाँ हाँ अरे so that I can after shot that नाइस शॉट ड्रैगन बहुत साल बाद आया कौन सी गन चला रहे? ओ ग्लास वाली। नहीं ये ग्लास इंपीरियम। ट्रेड कर मेरे साथ ट्रेड। शिट भाई भाई जेट ऐसे ना कर मैं हेड हंटर ओनली कर रहा हूं अब। तेरे को बस डैशिंग करना है ठीक है गैरेज नहीं होगा तू तो हेड हंटर गैरेज में होगा मुझे राइट साइड में ले हां ये दोनों ले कर रहा हूं ठीक है हां वैंडल नहीं चाहिए तेरे को तेरा कॉल पे स्टन करूंगा 3 2 1 स्टन कर लो ये कैसा है साइड क्लोज में होगा गैरेज छोड़ जा भाई 3 जन गैरेज ओपन प्लान नहीं है पीछे खेलो तीन लोग है गैरेज हां फिर भी मैंने ब्रीच पीछे देख एब्रम पीछे देख सिटी 2 है होली शिट Last player standing. इजी एक ऑप है नहीं दोनों है। अरे ये गंदा था अरे साइड क्यों नहीं खेल हग रहा हूं मैं भाई अरे सुनो मैं एक बात बताता हूं एकदम ब्रो उधर हुआ नहीं उधर हुआ सुनो मेरी बात जो पीछे साइड कौन एजेंट खेलेगा जिसके पास मॉली होगा ब्रिमस्टोन वाइपर तुम ड्यूलिस्ट हो ना तुम साइड खेलो ना जिंदगी में भी नहीं जाएगा आफ्टर शॉक उधर भाई आफ्टर शॉक नहीं मॉली बोल रहा हूं करता तो मैं फ्री में दे रहा है क्या हां ले भाई लेना भाई ये ना बहुत गरीब है साले खामाई का क्यों घुमाया तो मेरे को दे हेलिक्स अरे देख लो टर्न हो गया रुक जा ऑफ होगा बी चलता है चेंबर इधर ऐसी पे लेफ्ट लग गया ऐसे मत जाओ रे अरे ब्रीच का स्टन मेरे को डरा दिया क्लोज में आओ दो गैरेज एक बी सो गो ए मैं शॉट एक और गैरेज दो लोग है गैरेज एंड एक बी है ए पे एक ही होगा साथ में जाओ ए पे अरे फिर बंदे तो हो गए ए पे एक ही है ना बाकी बी पे तो 3 लोग अरे ये ब्रीच ने हगा कहां जा रहा तुम लोग पीछे जाने बोला एकदम अरे ए पे एक ही है बाकी स्पाइक नहीं है ना राइट लेफ्ट कहां है पता है क्या कहां है एक यहाँ पे एक राइट में एक लेफ्ट 30 seconds left. Last ब्रिम player किसको standing. देख नाइस ओए डस्टी तू आना शायद साथ में आना मैं इसलिए बोल रहा था तुझे ड्यूलिस्ट लेने को सुनो जब पीछे अच्छा आजा मैं एंट्री ले रहा आजा अरे एंट्री की बात नहीं है रे इसलिए मैं पीछे जाने बोला तो लाइक यहाँ से होल्ड कर लो वैंडल दे आजा मैं और ले रहा रुक सेव कर रहे हैं अरे जेट कुछ खरीद मत बस शील्ड खरीद ले तेरे को हां तो फिर वो लेना शील्ड लेना शरीफ का लेना You want to play? Let's play. कर स्टैंड अप बोलो रे उस पे पहले अरे सॉरी जेट सॉरी आगे जाएगा तो बोलो हां यार उसका वो फ्लैश कोड है आगे जाएगा फ्लैश कर 3 लोग हैं इधर नहीं भाग ये पकड़ ए शिट यार थ्रो कर रहा हूं मैं नाइस शॉट नाइस चलो मेरे पास एक ही स्मोक है ठीक घुस घुस एक शॉट जाओ
मेरा अल्ट चाहिए भाई, रहने दे। एक बाप रे इधर एवन स्टन आग बैक साइड में एक है। अल्ट कर दे रेस। करता हूँ भाई। टाइमिंग एक है वहीं, अपना स्पॉन के पास। डोंट अल्ट कर दे और रेज अल्ट भी अपने पास। ये राउंड अपना हेवन होगा ये। टैप पे करना और मोस्ट प्रोबेबली हेवन ही आएगा। ब्रिम अल्ट पे खेलना, मैं भी अल्ट पे खेलूंगा। चल नहीं तेरा अल्ट नहीं लगेगा, ब्रह्म का अल्ट हो जाएगा। एनिमेशन के लिए वेट करना अगर तेरा पे आया। ठीक है ओके आ गया, ड्रॉप किया टैप। हट गया हाँ अभी नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाग जा बस भाग जा। Last player. भाई पूरा बंडल लिया। अरे ये क्या है? व्हाट? पूरा बंडल। अरे वाह, मैं चेंबर के साथ ड्रॉल कर रहा था, पता नहीं क्यों। एनिमी डेज्ड 1 ब्रॉल हाला खेलने चले गए। वो ऊपर ही डेज हुआ था यहाँ पे जो सीट किया। नहीं ब्रॉल हल्ला नहीं। चैंपियन देना चैंपियन। Need equipment. इसके पास है चैंपियन। अरे वाह, सुनो सेम चीज कर रहा मैं यहाँ से राइट पूरा स्टन कर रहा जेट। ठीक है तेरे को डैश करना। एक बार इन्फो निकल गया ना, अपन रोटेट कर, क्योंकि एक गैरेज दोस्ती ऐसा कर रहे हैं। सोवा ड्रोन मारेगा या कुछ को मारेगा देख। नहीं है पीक नहीं दे रहा। स्टन सोवा स्टन चलो जाओ। अरे भाग पीछे भाग, तीन लोग हैं। तो रुका क्यों है? रुक जाएगा तो हार ही जाएंगे अपने। पुश करता रहो, रुको मत बस। ये देख स्पाइक भी देख, पुश मत करो, ऐसे इन्फो निकालो। Last player. अरे किधर है ये? अरे भाई क्या था भाई? अरे पता मेरे साथ आया क्यों? मुझे खेलने दो ना। ओ भाई मैं तो सीटी देखने वाला था, मैं सीटी मारने वाला। गाइस शट अप। अरे सुनो, घुसने को घुस सकते बट 3 लोग ऑलरेडी है, तो अपन रोटेट कर सकते हैं। ब्रो ये ब्रीच और ये ना कमेंट कर देती, इसलिए मैंने घुसा, वरना मैं नहीं यार इनके साथ क्यों खेल रहे हैं? अपन 3 मैन है ना, आजा। हां वैंडल I need a drop. Does anyone have funds? फोर्स कर रहे। ऑफ लेके आ गए। हां मैं स्टीवर्ड देख रहा हूं, लॉन्ग इधर ये देता हूं, क्लाउड देता हूं। देख के पिक करना। स्टैंड अप ये स्टन नहीं है, बाहर ही है। रुक जाओ। अरे भैंस क्या लग ही रहा था मेरे को। रोटेट पे आ गया रोटेट। क्या मारे मैंने रेस को, कसम से भाई। गन मिल सकता, मजा आ गया रेस में तेरे पास कोई गन मजा आ गया। अरे ये बैकस्टैप कर रहा था ना, वो करो। Spike down mid. लो खड़ा है पे। टेम्पो पिक करना। ऐसे Last player standing. आप रे नहीं हुआ। एकदम सटा हुआ खेल रहा है भड़वा का। टेमर भाई पिक करना, तेरे लिए आया था। मैंने फ्लैश किया था तो पिक नहीं किया, फुल फ्लैश था। वो इनके साथ आई कांट बॉर्डर ब्रो। या आई नो, डोंट वरी। Does anyone have funds? पैसा नहीं है रे बाबा। मैं भी सेव कर लेता हूं। I'm gonna save. मैं भी सेव ही कर रहा हूं। सेव करना है क्या? Yes, I'm saving. पैसे नहीं है। ओके। अरे इनको एक साइड फेक करने दो, अपन एक साइड जाते। इनको पुश करना था वैसे। अल्लाह वो लोग पुश नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम है ना। अब कर सकते हैं, उसका फ्लैश तोड़ देना बस।
डी पे कूद रहे एक तो और कौन किसी का इन्फो फ्लैश करूं एंट्री करेगा अरे बी आया राइट साइड बी का इन्फो ने अभी एक है बी है स्मोक रेडी है बता दी Spike down mid. अरे पीक कर रेस भाई इतना क्यों कर रहा है तू 145 गैरेज देख जीडब्ल्यू उसको छोड़ आए गैरेज देख बाकी लोग देख रहे हैं ना उसको ओके गैरेज क्यों देख रहे हैं बस अरे चल भाई गेम अटैक गया माय बैड गेम अटैक गया था Last player standing. होली शिट अबे तेरे पे गार्डियन थी सुनो सुनना गार्डियन लेके फायदा नहीं करेंगे गेम अटैक उतना अपने ही अपना क्या बोलते हैं उसको उन लोग को स्पेस लेने दे रहे हैं जितना होल्ड कर रहे हैं हर बार वो लोग आगे पुश आउट कर दे रहा है तुम लोग को अगर एक्चुअली कुछ करना है उन लोगों के पास साइफर नहीं है गैरेज में स्टन करूंगा जेट डैश इन करेगा रेस सी लॉन्ग के साथ चल सही बोल रहा है वैसे हम डायरेक्ट घुसते आजा जीडब्ल्यू अपने कोई निकालना Let's make them chaos. तू पीछे मत खेल इधर अंदर खेल Nowhere to run. मेरे को क्यों नहीं कुछ एक है जेट तेरे लेफ्ट तरफ लेफ्ट तुम लोग अभी तक आया ही नहीं है अब गैरेज कोई नहीं है Last player standing. कितना नाइस शॉट दोनों साइड था लास्ट तेरे को पिक कर रहा होगा ऑपर है वो ऑपर है One enemy remaining. ओके ऑफ सी पे ऑफ कर रहा था लास्ट शायद स्पाइक होल्ड डाउन कर रहा है Teleport's ready. लेफ्ट चल ओह नाइस Really am fantastic. ऑफ ले ऑफ अरे ऑफ करेगा तो कितना स्लो हो जाएगा अरे हो जाएगा मेरे पास पैसे ही नहीं है बाय दे सकते चेंबर स्किन वाला तू कर रहा है क्या तेरे पे तो अल्ट है Does anyone have funds? I need तू a drop. खरीद के देख ये क्या पकड़ ए भाई प्लीज ले लेना ये राउंड ऑफ अल्ट कर ले अबे कितना ऑफ खेलना है भाई सबको मेरे पैसे नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है भाई तू अमीर है भाई तेरे पास पैसे हैं ऑफ लगा इधर हां पता है वहां कोई है तो सीधा स्टन क्रॉस साइड स्टन किया अरे रुक जाओ रुको रे स्मोक चाहिए स्मोक तो दे ही नहीं रहा बंदा एंट्री कहां ले भाई नीचे देख ले नीचे देख देखिए 120 My turn. Headshot. आओ मैं मरने के बाद देखो हमारी टीम किधर है अबे ओ Spike down A. मैं मरने के बाद टीम देखो मेरे पास स्क्रीन पे लाइव लोकेशन अल्ट चुप कर सकते Bomb buddy out. Last player standing. पीछे इसमें कितना चुदा हुआ है ना भाई इस गेम में एक बार टीम पे मार दे अल्ट टाइम जीडब्ल्यू नाइस गॉड डैम अरे थोड़ा तो ट्रस्ट कर भाई खेला हुआ है नाले अरे नो उसका ओपोनेंट सीज का स्टैचर से मर गया भाई मुझे दे वैंडल अनफॉर्चूनेट था भाई हम आगे चल रहा था नॉर्मल भाई की एंटर करेगा और हैंगल होल्ड कर लेगा ऑप्शन वेट Need equipment. वो मैंने कैसे मारा आई हैव नो आईडिया सबसे बॉटम फ्रैगर का भी कुछ होता है क्या चैंपियंस हैंडल में नहीं Safety's up. अनफॉर्चूनेट
ऑफ हो गया। You want to play? मैं Let's तो भाई play. मैं इनके साथ ही खेल रहा मैं नहीं ये मरेगा भाई पीक लेके मत जा उधर मत जा फ्लैश दे Oh Full my flash god! क्या नाइस शॉट नाइस शॉट नाइस शॉट नाइस शॉट पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे दो तो घुस जा ना। ए पे जाओ सोवा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो यही है ओके मिल गया ये मिल गया पूरा चलो चलो हां मेरे पे अल्ट है पोस्ट बी पे जाओ एक इधर होल्ड कर चेंबर ऐसे क्रॉस करने एक भी वाला गोली नहीं चलाया था बेचारा अरे मेरा नेट जाता ही नहीं तेरे को किल चाहिए इधर जा इधर देख के जाएगा भाई हम साइड में हम नहीं वो ब्रिम के सामने है आगे आगे चेंबर ये मर अरे डिसमिस किया इसने कहा One enemy remaining. फ्लैश है तेरे पास इजी खेल इजी साले खुद के भी नाइस चेंबर लव इट एक सेकंड यहां से होता है पता है Switching sides. लेट्स गो मैं जो ऑफ करूंगा ना ये पूरा डिफेंस जो स्टूडियो चेंबर ने किया है enemy displaced 1 blinded 1 dazed 1 allies blinded 2 अरे तूने हमको ही ब्लाइंड मारा आधा टाइम अरे वो कहां एक बार मारा वो भी एंड में जब खत्म हो गया था राउंड साला कुछ भी एलिगेशन डाल देगा मान लेगा मैं सेंटर भी खेल रहा हूं बता देना मैं ना बोल ही नहीं रहा पता मैं बोलूंगा भी नहीं इस बार मैं म्यूट करूंगा इस बार शॉट जाना हो हमें तो पता है ना किसने किसको ब्लाइंड किया सबको स्टन ही कर दूंगा सी कोई नहीं खेल रहा क्या मेरे को तो सी नहीं आता ना अच्छा फिर जा रहा हूं मैं अरे बस इन्फो ले ले मैं स्मोक कर दूंगा नहीं है सी पे अरे पुश नहीं करना था नहीं वो आ गया चेंबर टेफ हो गया हूं गंदा चेंबर 55 क्लोव और 55 रेस अरे यार मेरा वायर अटक सब है पांचों है ये क्या ही था Spike planted. अच्छा मारता है उनका चेंबर गोल्ड के लिए ये अच्छी गेम हो रही है हेलो अरे व्हाट एक ब्रो पता है 26 रेस 55 सोवा आधा बुलेट से उधर गया Okay, I only have like 78 grenades left. Hopefully that's enough. स्पेक्टर का स्किन है ना रुको स्पेक्टर का स्किन है स्पेक्टर भाई केविक्स तू पागल है भाई I'm buying. भाई मैं बाय करना है क्या नहीं लिटरली ब्रिज का सुना कि वो लॉन्ग से स्टन मारेगा इधर से मारना चाहिए था उसने इधर तो इधर से कर रहा है भाई मैं भी क्या ढूंढ रहा हूँ यार ये बंदों फिक्स निकाल लो एक दो बस इधर है गैराज के सामने है हेल्प सी पे भी है पुड़ियो मत आंदे रुक जा अरे भाई नेवर माइंड यू आर फकिंग गोटीड दो मार करेगा तो उस रेस अरे बी पे है लास्ट बी पे बी के साइड एक साइड है पीछे बैठे हैं बोल के फायदा तो देना ओ भाई रीच ठीक है One enemy remaining. बाप रे दोनों ने हका दोनों अरे बात क्यों करते यार फाइट टाइम के लिए इसलिए मैं शट अब क्या वो दोनों पार्टी में नहीं है हम जब पार्टी में मेंबर के लिए जब बड़बड़ मैं ना पार्टी से लीव कर रहा हूँ फिर से ऐड कर मेरे को क्यों Last player standing. मैं जब फाइट लेता तब बड़बड़ करते तुम लेते तो मुझे बोलते चुप बैठो स्पाइक शायद उसी के पास है सी जाएगा वो अपने दोस्तों के साथ बोल रहा है 5 स्टैक वाले अरे हाँ मैं छोड़ के आया तुम लोगों की वजह से 30 मैंने seconds बोला left. मेरे को गाली सुनना पड़ा देख ऐसे लोगों के साथ खेलता है तू जो लोग तुझे गाली ऐसे लोगों के साथ स्पाइक कहाँ था उसी के पास ना पता नहीं उसके पास तो नहीं था भाई मैंने क्या दो पिक्स निकाली 3v4 तुम लोग आके तो स्पाइक था कहाँ फिर अरे तूने कॉल ही नहीं दिया लास्ट किधर है चेंबर मेरे को तो पता ही नहीं बी पे रहना ये क्या किया ब्रिम ने मेरे को तो दिखा भी नहीं वो रजिस्टर हां वही तो डबल डिंक हो गया ऐसे कैसे वैंडल दे चेंबर को म्यूट कर रहा मैं मेरे कॉल सुनो बस I need a drop. I know. Here.
लॉन्ग खेल रहा, हॉट पे काम भी नहीं, वो रेड नेट डालेगा, तू तेरा बूम बच छोड़ के आ जा रात। ओके इधर ही स्पाइक गिरा है, जीडब्ल्यू आने वाले वो। लॉन्ग पिक कर अब to see. Smoke see. Yeah. Why no one is holding B? Enemy spotted C. क्यों नहीं मार रहे? Okay, garage. Got him. One enemy remaining. We're long. Fall back. तू शॉर्ट पे इधर होल्ड कर, जीडब्ल्यू में लॉन्ग। देख इधर होल्ड कर तू, वो इधर पिक। 30 seconds left. Last player standing. इन्फो नहीं। 10 seconds left. ओपन प्लांट ही करेगा। पीछे इसका ब्रेम का कैरेक्टर आएगा। Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Does anyone have funds? Multiple fingers. तेरा तो अल्ट आ रही चेंबर, अल्ट आएगा तो वैंडल दे दियो। भाई मेरे को दे रहे, मेरे पास कुछ नहीं, वर्ल्ड पे खेलना। मेरे पास भी कुछ नहीं है ना। कर ले। ए पे जा रहे। कैसे आओ रे, वो घुस रहे मेरे। Enemy spotted A. ऐसा हो गया, एक ही बंदे को। Spike planted. अबे व्हाट? अरे लगा। Killed my cop. Last player standing. अरे मैं क्या करूं? रीलोड आ गया, मैं क्या करूं सर? भाई उसने रिकॉन मार रहा है। Okay, which gun to pick this time? Hey, saving Bro, nothing to do, bro. I can buy for you. My treat. Chrono what? Does anyone have funds? Merci. Need equipment. Thanks. वो चैंपियन वैंडल नहीं हो रहा मेरे पास, chrono void ही होगा। ड्रॉप दिया भाई। Watching here. बी आ जाओ, कोई जल्दी बी आ जाओ। मैं आ रहा हूं, मैं बी में। मेरे को लगा चेंबर भाई दिया तो उसको देने जाता। मार रहा ना। Yeah, sure. Enemy spotted mid. Reloading. गैराज के सामने। अरे बहन चुद मैं निकल भी नहीं पाया। सॉरी माय बैड, गलती से गाली निकल। Right there. चेंबर को पेल भाई, साले को मार पहले। गैरेज होल किल गया। Bye. See. All chamber. Spike planted. ये गैरेज में हो सकता है। गैरेज क्लियर नहीं है। Last player अबे standing. मेरे से नहीं हो रहा। भाई GW मैं तो अपना जॉब कर रहा हूँ। We're here. 3 गेम से वो We're भी। the best. Don't any तो of you मैंने forget क्या that. किया, मैं भी इतना मारूं क्या? भाई मुझे जेट में डाल देता, अभी गेम जीत गया था तू। ब्रो
ब्रो मैं अपने साइड से ट्राई कर रहा हूँ, मैं इतना कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? क्या विक्स को कुछ बोल रहा भाई, वो कह रहा था मैं ऊपर आ जाऊंगा, मैं ऊपर आ जाऊंगा। रुक आता हूँ चल। मैं घंटा आ रहा मेरा। मरा। टीम अच्छी नहीं है रे ये वाली। ए इधर ही है। आ गया। बोल के फायदा नहीं। नंबर अच्छा मार। वो तो अच्छा ही है। गंदे खेल रहे हैं। मतलब केविक्स स्नूप। Spike planted. Last player standing. करते आधा घंटा लगता है। ब्रीम आधा घंटा लगा दिया स्मोक करने की। Match point. अरे वो राउंड क्यों अपन जीते पता है? Can I get a drop? वैंडल मैं तो एस भी कर दिए। अरे डस्टी हम वो गेम क्यों जीते पता है तुझे? इसलिए आई वेंट इनसेन। हाँ स्मोक ही नहीं दिया होता तो तू कैसे घुसता? अरे हमें ढंग का हमें लाइक कैरेक्टर्स 2 घंटे चूज करना चाहिए था प्रॉपर। हमने ढंग के प्रॉपर Let's play. तो आए। ओके दे आर कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर। कहां है? भैंस यार इसको कैसे पता मैं करूं? Gotcha, fun. My turn. जेट The hunt begins. नाइस वन। सी Spike planted. चैम्बर सी। भाई एक बंदे के साथ ऐसे फाइट लेके पीछे से कोई भी मार देगा। सिटी है। 50 बाय द वे लॉन्ग किल है। Teleport's ready. Last player standing. Attackers win. वो खेलना ही नहीं चाहिए। कितना -20 माइनस। डैम भाई मैं फिर भी मैच में भी किया। मेरी पूरी टीम मुझे देख ले, मेरी पूरी टीम देख ले। ओए बैट करके कोई बोलेगा नहीं बैट करेगा। क्या ही करूं मैं बोल। कोई बोलेगा नहीं बैट किया है उसने। अरे ना ब्लाइंड होके भी ब्रिज को मारने दिया। कोई बोलेगा नहीं बैट करके किल निकाल। टिम्बर अच्छा खेलता है भाई। और एक खेलना है। सीडब्ल्यू नहीं खेलेगा मुझे। एजेंट सिलेक्शन बेकार था रे मुझे पता ही था। ब्रिज टर्न नहीं दे रहा था हमारा स्मोकर स्मोक नहीं कर रहा था। मैं जब भी क्लो लेता हूँ ना सपोर्टिव एजेंट। अरे आवाज चला गया। आवाज क्यों चला गया? आ रहा है अब आ रहा है। अच्छा खेल और कॉम्प नहीं खेल रहा मैं। हो गया मेरा। अरे नहीं इस बार कल उठना पड़ेगा। हाँ उसको। अरे स्मोक नहीं लिया रे हमारे बंदे ने मैं हर बार कल फिर से खेलेंगे कोई ना कोई कल खेलेंगे ठीक है। हाँ तेरे मैं तो मेन आईडी से आऊंगा कल। हाँ ठीक है खेलेंगे आजा। मैं खेलूंगा जीडब्ल्यू के साथ। अरे हाँ तेरा तो नहीं यार डायमंड है तू भी आ गया। मैं भी डायमंड हूँ। डायमंड मैं इससे क्या विक्स ने मेरे से झूठ बोला। उसने कहा मेरा अल्ट अकाउंट भी प्लेट पहुंच गया है। मैं कह रहा हूँ एक ही मैंने वैसे नहीं बोला। मैंने बोला कि मैं प्लेट लाइक अकाउंट प्लेट पे लेके नहीं जा रहा। मैं जीडब्ल्यू का जितना है उतना ही रखने वाला हूँ। नहीं तो मैं थ्रो किया लाइक पहले एकदम मारा मैंने तगड़ा मैच एमवीपी बना। फिर मैंने लाइक थ्रो कर दिया 2 गेम। फिर कुछ भी एजेंट ले रहा हूँ सोवा ले रहा हूँ तो कभी जेट कभी यूरो लाइक मेंटेन रख रहा हूँ जीडब्ल्यू के साथ खेलने। कोई करता है क्या ब्रो इतना? मेरा विनिंग स्ट्रीक गया
1 2 एस 3 4 कितना 1 2 3 4 5 6 7 विनिंग स्ट्रीक था। मैंने एस नहीं मारा था, एक नाइट तो मेयर मारा आ था। रहा है, नाइट मेयर आ रहा है, जीडब्ल्यू बच के रहे तू अब। हाँ मैंने तो एस मारा था, किधर है मेरा एस? हाँ अच्छा यार अच्छा एस, चलता हूँ फिर हुआ आगे। में याद मेरा बैंडी। एस, ओके मेरा एस। चल, तू 0 RR पे ही सही, बट गोल्ड 3 आ गया। हाँ हाँ कल फिर से खेल लेंगे कोई ना। हाँ, और कल वार्म अप करके आना केविक्स अब भाई आज। कल मैं, अरे आज आज तो इसका दिन इतना खराब है भाई, मैं सुन कंफ्यूज। सुन मेरी बात सुन। पहले कितने मैचेस खेले आज? 2 ही खेले ना आपने? नहीं 3 3 खेले। ये देख, पहले जो करोड़ पे था ना, वो टाइम पे मैं हाँ स्ट्रीम देख रहा था। कौन सा था वो? G2 वर्सेस ये अपना, हाँ वो देख रहा था। और मैंने क्लो हाँ लिया था, तो लाइक जिधर स्मोक चाहिए वो साइड पे मैं स्मोक दे रहा था। तू और हाँ। जेट एंट्री कर पा रहा था, मैं स्मोक नहीं देता तो मैं पता है हेवन मैं से रेस मारता कितने ये देर सब। बाद खेल रहा हूँ, मैं भूल ही गया था रेस कैसे खेलते हैं। मैं तेरी तरह ही हूँ। बट नहीं रे, अच्छा खेलते थे। देख दोनों मैच स्मोक लिया है लास्ट मैंने। मैंने खेला, सुन स्मोक रेस इम्पोर्टेंट मैंने होता है लास्ट रे खेल गेम में, कुछ भी करो स्मोक इम्पोर्टेंट होता है। कॉम्पी में ढंग से मैंने रेस लास्ट खेला जब रेस नर्फ हुआ था। इसके बाद मैं मैं ढंग से लिया ही नहीं। मैं तो रेस में बहुत अच्छा हूँ, आस्क केविक्स मेरा मेन हाँ, प्रो है। मैं रेस जेट में था, नियॉन तो पहले ही छोड़ दिया मैंने, और ब्रीच था मैं। ये एजेंट था मैं। नहीं रेस में मेरे किल्स बहुत निकलते हैं, पर जेट्स में मेरा भी और ही अभी भी मजा निकल आता है। रहे, अभी भी मेरा निकल रहे। पर लास्ट जेट में कोई 2 और ही मैच मजा आता निकल है रहा। भाई। क्या क्या निकल रहा जेट है में जो GW? वन टैप एंड गेट अवे का मजा आता है ना भाई, वो रेस में नहीं आता। अच्छा ठीक है, सो चलो जाओ फिर सब। कल खेलते हैं। हाँ ओके, ओके केविक्स अपना नाइट। स्ट्रीम बंद करके सो जा। हाँ बाय मैं भी बाय कर बोल रहा दे। हूँ, बाय बाय, गुड नाइट। लाइक किया क्या बाप रे तुमने? निकल, स्ट्रीम इसको स्ट्रीम लाइक बाहर किया निकल। क्या? तेरी जुबान इसको, मारे। इसकी तो आवाज ही नहीं चल रही। स्ट्रीम स्ट्रीम अच्छा लाइक ठीक है, किया क्या? मैं स्ट्रीम जाता लाइक हूँ। किया? जीजीस। बाय बाय। जीजीस। अरे वेट, अरे वेट जस्ट यार ये लाइक ए ई, क्या क्या मैनेजर। के चला गया, आई थिंक मेरा आवाज भी चला गया। ई, ये आवाज क्यों जा रहा है बार बार? हेलो हेलो, अब आएगा देख। अब आ रहा है भाई, तुम माइक बंद क्यों करता है? नहीं बंद नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली जब GW छोड़ के गया पार्टी तब वो बंद हो गया था, पता नहीं कैसे। भाई ये तो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी आज। अरे सुन ना मेरी बात, जब भी मेरे पास स्ट्रीम आ, 1 मिनट स्ट्रीम आ, तो स्ट्रीम स्ट्रीम में ही हूँ। स्ट्रीम देख रहा है? मेरा स्ट्रीम देख रहा है? हाँ लाइक किया है मैंने तेरी अरे स्ट्रीम। हाँ थैंक यू, लाइक किया है, बट ये देख तू इधर आ। हाँ, अब अच्छा ये देख। क्या तेरा सस्पेंड हो गया? अरे 7 नहीं विन। रे, ना जॉब कर रहा हूँ। तू ये देख एक बार। पिचिंग साइड किधर हुआ? रुक रुक, मैं तेरे को पहले कंप्लीटली बता। अबे क्या हो गया? हाँ हाँ, दिखा ये देख तू इधर आ, इधर आ। मेरा एस दिखा, मेरा एस तो दिखा। इससे ये पिछले ही राउंड था ना, पिछला राउंड था, पीछे जा। अबे यार। ये देख, ये देख, ये देख, मैं किधर हूँ तू देख। रुक हाँ मैं, देख रहा हूँ। ये देखा? ये हेवन अभी तक स्मोक नहीं आया है, ठीक है? देख, स्मोक आया नहीं है। हेवन पे पीक भी किया बंदे ने, फिर उसको थोड़ा हिट किया मैंने एंड फिर एंट्री लिया। तो ये देख इधर क्लो, और हमारी टीम अभी भी पीछे है। ये देख इसको भी मारा मैंने, and उसने अल्ट खींचा। फिर मैंने ये देख, हमारे एक बंदा इधर,
इसको मारा, शॉट क्लियर नहीं है। ये देख, एक इधर एंड एक बैक स्टेप देख रहा है। बैक स्टेप वाले को देख। ये देख, एक इधर खड़ा रहेगा अब। ये देख, ये इधर ब्रिमस्टोन, देखा? शॉट नहीं आ रहा है ये बंदा, ये इधर, ये ब्रीच इधर दीवार को मार रहा है, और हमारा ये रेज मार दिया साइड ये। पे। अबे सो जा, अरे ये देख, इसलिए गंदा क्यों खेल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देख, अब देखा ये वाला क्लिप, हर एक राउंड ऐसे ही हर मरा हूँ मैं एंट्री के टाइम। अब देखा, ये ऑप कर रहा है, ठीक है। स्मोक आया नहीं था GW, रेज पीछे मुझे पता है, स्मोक अभी तक नहीं आया। इसको थोड़ा डैमेज दिया, स्मोक आ गया पीछे, पता है रेज है, ये रेज है, इसको भी मारा मैंने। हमारी टीम अभी तक एंटर नहीं हुई हुई। ये देख, 1 2 एंड 2 इधर मेन पे, अभी भी 3, फिर से मारा इसको। ये अब देख, प्रेप इधर की से मार दिया, जरूरत और हमारी टीम देख, अभी अभी भी टीम देख, टीम 1 2 3। मैं अकेले एस फाइट ले रहा हूँ, इसलिए मार नहीं पाता हूँ मैं लो लॉबी में। ये वेट देखिए, पीछे मेरा एस तो दिखा, मेरे एस तो दिखा, मेरे क्लिप ये इससे देख, ये देख, ये पिछला। देखो। और अगर पीछे ले लूँ ना मैं थोड़ा, रुक, तेरा एज भी देख। आई टू 2 फ्रॉम मेन। अरे वो मेन एक शॉट भी क्लियर नहीं था। ये देख, अब ये वाला में हर गलती। ये देख, इधर एक मारा क्योंकि मुझे, इधर एक मारा, इधर हगा नहीं, इधर भी मारा क्योंकि 1v1 इजीली मार पा रहा। इसका क्लो का कुछ आइडिया नहीं था, फिर आइडिया आ गया मुझे, इसको भी मार दिया मैंने इजी। जब पता होता है तब मार पाता हूँ मैं, अब जब पता नहीं होता मैं मार ही नहीं पाता हूँ। राउंड 10 दिखा मुझे, राउंड 10। इन वाला हाँ, उसमें मेरा एस लगा था राउंड 10 पे। तो लॉबी में ये दिक्कत होती है। हाँ, ये देख, अबे राउंड 10 तो दिखा दे। राउंड 10 क्यों दिखाना है, तेज देखना है ना तेरा। हाँ, पीछे जा, पीछे जा। कितना देखा तूने पूरा, कितना देखा? ओके, इससे पीछे जा, इससे पीछे देखा। अरे यही है, यही इधर ही है। ओके, तू तू पीछे किधर मत मर। रहे इधर, मैं देखना चाहता हूँ कितने किल्स अंदर तूने खेल। रिकॉर्ड किए उसपे। तो का पूरा रिकॉर्ड डायरेक्टली इधर आ गया। ये आई बंदा वांट टू इधर सी फायर हाउ कर रहा है, कोई तो भी GW था अच्छा वो। रे। अब मेरी पूरी टीम कैसे मर गई, मैं देखना चाहता हूँ। अब ये देखो बेचारा, कौन पहले मरा? ये देख, ये देख। स्मोकर ही गया, एंट्री किधर से मिलने वाली पता नहीं अब। मेरे को क्यों? नहीं ओके, कुछ कर लिया। स्मोक नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा जाने दो भाई, एंट्री मार दो। ये देख, इधर से मर गया, एक ठीक है। रिजेक्ट कर लेफ्ट। अब देख, मैं एंट्री के लिए घुस रहा हूँ, मुझे लगा चेम्बर, तूने गैरेज कंट्रोल लिया होगा। अब देखा, ये देख, 1 2 एंड देखा, अभी गैरेज तक कोई नहीं है। आया ही नहीं। ये देख, इधर से गिरा मैं गैराज से, और फिर मैं देखता हूँ गैरेज। ये देख, ये गैरेज इधर, ये बंदा इधर से मार के दे, ये पीक भी नहीं कर रहा है। इधर स्मोक नहीं है, इधर स्मोक अब आउट। दिखा मुझे अब गैरेज, अब देख मैं चिढ़ गया उधर, गैरेज कोई नहीं है। अब देख, गैरेज तूने मारा लेट एक। कितना नाइस शॉट, नाइस शॉट। दोनों साइड था लास्ट। तेरे को पिक कर रहा होगा, ऑपर है वो, ऑपर है। ओके, ऑफ सी पे ऑफ कर रहा था लास्ट। भाई क्या मजे का मैं मारता हूँ स्ट्रीम में। शायद स्पाइक होल्ड डाउन कर रहा है। Teleport's ready. 300 IQ प्ले था ये। ओके, लेफ्ट चल ले। वाले गैरेज, ओह नाइस। मैं होता तो हेड मार देता एक। Really am fantastic. ऑफ ले, प्रो ऑफ। प्लेयर, ये कौन सा प्रो प्लेयर है? ये पता नहीं कौन प्रो प्लेयर है, कौन है बताओ मुझे। मेरा कल वो वाला लाइव तो देख, सिंगापुर वाला। माइक फिर से तेरा फक हो गया। टीम है, ये
ये दो हाँ ये वाला देख ठीक है दरवाजा किसने माइक देख ले माइक तेरा नहीं चल रहा माइक No peeking. अब इधर देख तू मैं कैसे ये कौन सी गेम लॉबी पता है ना चपकू के साथ खेल रहा Right था here. हक दिया जेट मेन अकाउंट है ये अल्ट मेन प्रो नाम ही है ना रे Down you go. Spike planted. फर्स्ट किल 120 के हो 120 के हो सेकंड किल मुझे लगा ये थोड़ा आगे आएगा आगे नहीं आ रहा है Last player Drop standing. in a Spike planted. भाई वो गेम कितना मारा है मैंने पता है तुझे कितना देख ना टाइम के लो साइफर तू वॉक कर भी हो सकता है ये ड्रॉ होगी गेम नहीं जिताया था फिर I need a drop. सी टच माय किल ये वही Band गेम्स है जो ये जो वही गेम है जो मैंने तू मिस कर दिया था हाँ ये कल वाली गेम्स है ना कल भी हो सकता है बट अच्छे इधर देख इधर मस्त मारा था साइबर पीछे जा ऑब्वियसली ये दरवाजा कभी टूटना नहीं चाहिए ये वाला ये वाला टूटा तो पूरा पीछे आ जाओ नहीं पर बी रोटेशन के लिए तो होल्ड करना पड़ता है उसको फाइट क्यों लेते हैं भाई इधर हमेशा एक बंदा कभी पिक नहीं करते दो बंदे नहीं आई डोंट ब्लेम साइफर आई डोंट ब्लेम साइफर क्यों 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 ये वो तो फंस गया था इट्स हार्ड टू रन फ्रॉम देयर जंप नहीं करके तो सुन मुझे पता था ये देख मेरा स्मोक उधर ही था मुझे लगा ये भागेगा मैं इधर स्मोक डालने वाला था वो फाइट ले रहा है पर वो नहीं वो भाग रहा है नहीं भाग रहा है देख ले ये देख स्लो मोशन में वो भाग रहा नहीं है वो फाइट ले रहा है देख ने फाइट लिया है पूरा मेरे साथ वो देखा दरवाजा टूटा उसको पता है बंदे आ रहे उधर भाई तेरा पता नहीं आवाज कट रही है माइक ठीक कर ले डिस्कॉर्ड माइक ठीक कर ले डिस्कॉर्ड ओके अब आएगा देख सही ओके अरे वो आई थिंक साइफर देख साइफर गया 180 118 और 65 तू जा प्लांटिंग है तुमको दिखा Spike planted. 340 बैन में मार दिया आई थिंक यू गॉट इट रॉन्ग भाई हमारे इधर स्मोक किया था ना तब तू डैम देख तुमको तो देख ओए एक लॉन्ग और एक तेरा पीछे One enemy remaining. मुझे पता नहीं इसने फ्लैश क्यों नहीं कोई ना फटफट नहीं भाई क्लोज में मैं बीडी फ्लैश करता मैं पीछे जाके मैं करता हूँ मैं यूटिल्स पे खेलता हूँ ऐसे अब पर मैं तो मार देता वैसे सेट करो ना इट वाज मी अभी मौका आ रहा है आई एम दैट गुड One enemy ठीक remaining. गंदा वो यही नहीं कर रहा भाई मेरी गेम प्ले इतना हाई टियर है आई जस्ट मैं अच्छा प्लेयर हूँ नहीं हो बस स्मोक के लिए तेरा वर्ड रिव्यू देख के अगर लाइक तेरा वीडियो रिव्यू देख के मुझे पता चल गया मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ तू चेक कर सकता है कौन तेरी स्ट्रीम देख रहा है नहीं वैसे नहीं ऐसे स्पैम मारते जाओ 40 डैमेज आ जाए है यू कांट चेक हु इज वाचिंग योर स्ट्रीम ये कौन सी बकवास है तो चैट में उसका बता सकता हूँ Spike planted. Reloading.
उसका कितना हल्का सा देख क्यों देख अब देखा थोड़ा दिखेगा अबे इधर देख आप इधर देख मैं चेम्बर मारता हूँ भी आई थिंक Can't use that. दो लोग इधर Right here. 3-1 वो देख ओए ओए देख ये वाला देख Can't use that. वो पता है ये ड्रॉप Right here. 3-1 One enemy remaining. 8 बुलेट नाइस वन इजी हो गया मैं क्यों दबा रहा था जीत गया चमकू ने जिता दिया हाँ चमकू ने जिता दिया भाई तुम के लिए भाई सस्ता सोरा कितना अच्छा प्लेयर है मुझे लगा वो ठीक प्लेयर है until I played तुमको 28-22 है मैं 35-12 आशीष देख मेरा 5 किल भी एक्स्ट्रा मिल गए तो 40 किल हो जाता है फिर भी सस्ता सोरा काफी कंसिस्टेंट है अच्छा खेलता है वो हम तो तू जब आता है ना वो टाइम के मैचेस गंदे जाते हैं मेरे मैं सेव बोल लेता हूँ तेरे लिए क्योंकि मैं लाइक 19 एंड 20 ये किल डुओ करता हूँ ना तेरे साथ या सस्ता सौरभ के साथ जब हम 5 मैन करते हैं ना वो टाइम पे मैं भूल ही जाता हूँ नहीं हम डुओ करते हैं तो हम जीतते हैं पर जब ट्रियो आ जाता है हाँ ना 3 वो काफी फन मैच हो जाता है ट्रियो पे हम हार जाते हैं पर मजा आता है ये भी निकल गया सुनो मैच पॉइंट तो पकड़ो सर भाई देख चमकू की नाइफ भाई चमकू की नाइफ चाहिए मुझे प्राइम करा नहीं चमकू को बोल मैं अपना मेन अकाउंट दे दूंगा उसके प्राइम के रैम्बेट वाले के लिए 1 मिनट होल्ड करा Discord आई एम बैक बैक बट यार कुछ भी बोला मैं सिंगापुर पे लिटरली 1 टैप्स मारता हूँ 1 टैप क्योंकि वो बंदे मौका देते 1 टैप्स मारने का ये ब्यूटीफुल One enemy remaining. इसके पास ऑफ है भाई पीछे हो तो प्लस भी मस्त मिला मुझे लोटस पे पता नहीं क्लो एकदम अच्छा खेल पाता हूँ ये मेरा है भाई क्या ये देख बादाम लोटस भाई शटन 54 तेरा देखते हैं ये देख किधर है केविक्स किधर है केविक्स क्या दिखा रहा है तेरा और पे एक स्क्रीन शेयर की हुई है हाँ देख तेरी लॉबी ठीक होगी नहीं ये तो चमकू की लॉबी से है नहीं वो मेरी लॉबी है मैं लीडर बना था वो टाइम पे चमकू की लॉबी दिखा चमकू की लॉबी चमकू इतने खेला ही नहीं और खेला ऊपर है मैं तेरे से ऊपर हूँ देख 54 तूने अरे मैंने आज कुछ भी खेला नहीं एक मैच भी नहीं 84 34 वेट क्या एक लूज किया 2 विन 1 लूज नहीं 34 में कब आ गया 34 पे था मुझे लगा 40 पे था मैं 50 तक गया था मैं बट एक मैच 19 का आरआर गया चलिए देख मेरा गेम देख गेम देख बॉट्स दिखा हार्ड बॉट्स हार्ड हाँ मैं तो हार्ड पे आज 22 मारा मैंने 22 हाईएस्ट है मेरा अभी तक का और अबे आज तूने तो काफी बार खेला होगा मैं तो खेलता ही नहीं हार्ड बॉट वार्म अप करना पड़ेगा कर पहले 8 मरेंगे मेरे 8 फिर 6 पहले 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 ऐसे जाते मेरा
अभिषेक जब भी कंटिन्यू 2 बॉट्स लगते हैं उसके बाद लगता ही नहीं है। तो सिर्फ तू जंप कर रहा है। 13 मारा है, नाइस। पता तेरे FPS कितने आते हैं? हाँ, बॉट्स को बुला, कंटिन्यू बॉट्स को बुला। वो काफी सारे बॉट्स आते थे हैं। वो नीचे वाले प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस पे दबा। अब यूटीज डाल तेरे को। ओ 130 120 तक जाता है। कंटिन्यू फायर कर, कंटिन्यू फायर। 120 140। अभी डिस्कॉर्ड की स्ट्रीम लगाई हुई है इसलिए। कितना आता है लगभग? बंद करके तो चेक करता हूँ, बंद करता हूँ तो 250 हाँ। आता है। कंटिन्यू 250 आना चाहिए। हाँ वो 250 ड्रॉप आता होता है FPS। यूटिल्स है। नहीं यूज कर, वो बॉट्स पे तेरा FPS देख ड्रॉप होगा। लाइक काफी सारे नाइफ्स निकाल या फायर कर उन पे। अब 5 रैश होता है, लाइक हाँ 5-10 ये ड्रॉप होता है, 5-10 FPS ही ड्रॉप होता है। मेरी रेजोल्यूशन भी हाई है अभी। देखना चाहता है? तेरा कौन सा है? 1080p पे चलाता है नहीं तू? 1568 1568 1080 into 108। ये 2560 रिकमेंडेड, मतलब 2K है क्या वो? हाँ मुझे लगता है। मेरे पास भी वही। मैं मुझे एनवी अच्छी क्वालिटी लगती हाँ है। काफ़ी अच्छी। मैं जब स्टोरी गेम्स खेलता हूँ ना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। मैं तो हॉगवर्ट्स लेगेसी खेलता हूँ, दिखाता हूँ। ये हॉगवर्ट्स खेले रोब्लॉक्स? तेरे साथ खेला था कुछ रोब्लॉक्स पे, याद नहीं है। हाँ और कौन कौन फ्रेंड्स ऐड है? तो हाई रैंक का मैं ही हूँ। तो फिर 210 VP है। शॉप खोल, शॉप। मेरा शॉप देखा नहीं मैंने। हाँ देखा, शॉप। एस देखिए, एक देख मेरे फ्रेंड ने भेजा था। ओ मेरा इससे अच्छा आया था बाय द वे, उस दिन ये भेजा था देख। उसका उसका आया था। इसके पास है आयरन करैम्बिट, रिकॉन फैंटम, रिवर वैंडल, बैटल पास पूरा लिया हुआ है। और क्या चाहिए? पता नहीं। आज भी ले ली उसने, रोलेक्स लिए। लाइक द स्ट्रीम 4 लोग देख रहे। 200 424 एक सब्सक्राइबर अगर मिल जाता तो मतलब 125 हैं। सब्सक्राइब कर दूं मैं? सेकंड अकाउंट से अभी कर देता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद वो आता है रे एनिमेशन मेरे इस पे, बट वो तेरा भी एनेबल चाहिए भाई। इतना सर्च करते तू यूट्यूब, फिर उसमें जाता है, फिर ना। नहीं वो दूसरे अकाउंट पे है, ये देख यूट्यूब हाँ ऐसे कर। ऑलरेडी सब्सक्राइब हूँ। NID से। नहीं नहीं, ये दूसरे अकाउंट कैसे स्विच अकाउंट?
Yeah. Subscribed. लाइक मार दे, लाइक मार दे, लाइक मार दे। लेट्स गो। ओके, तेरा देखा स्किल्स दिखा अभी इसमें। अरे वाह। बच गया मैं। छी रे ना। Fight. Kill them. छी भाई। हाँ। तेरे एम में थोड़ा सा कमी है, एंगल होल्ड नहीं है तेरा एम पे, तो लाइक हाँ ऐसे शॉट लगना चाहिए। मैं इसका ज़्यादा प्रैक्टिस, लाइक वो बंदा जब वॉक करता है ना, क्रॉस एयर में आना चाहिए प्रॉपर। अबे रेनो क्या मार रहा है? They're dead. Get out of my way. भाई मुंह में डिस्ट्रैक्ट हो गया। Enemy down. वो पहला टारगेट से दूसरा। भाई विदाउट क्राउच मार के बता। Dominating. चूतिया गन। विदाउट क्राउच मार के बता। डोमिनेटिंग हो गया क्राउच के बगैर। क्राउच कर दे रे केक्स। मार के देख। अजी डीएम ही है, इसमें थोड़ी प्लस माइनस। भाई बंदा नजर ही नहीं आया। Dominating. सोच कर दिया। 10 kills remaining. Cypher killed. Get out of my way. I'm sorry. वहाँ पर क्राउच करना। हाँ उधर एक मारने के बाद फिर क्राउच चैन में घुमाओ।
नहीं क्राउच करता तो मारता थोड़ा शूट करने का, फिर एडी एडी नहीं ए करने का या डी करने का। अबे क्या टाइम ही नहीं One kill remaining. ना आरआर पे आ गए बादाम। करियर तो दिखा, करियर है 2018 12+ ओनली, क्या और 12+ कैसे मिला दिखा? ये तेरी साथ वाली गेम है 12 तब 3 नहीं ना वो अरे हाँ, वही वही वो टाइम गया था वही। हम बॉटम बैक। और फिर ये कौन से खेले वो तो बता, बाकी के करियर सोलो क्यों इन। क्या ही हो गया ये सिंगापुर खेला था या पता नहीं कहाँ नहीं ये मुंबई था पर पता नहीं शिट खेला मैंने ओके और क्या है तो अच्छा खेला। 33 बाप रे, अच्छा प्लस मिलता है देख। उस दिन हमने 13-3 जीता होता तो हमें कितना मस्त प्लस मिलता, वो ओवर टाइम गया है ना। अच्छा तू नहीं थ्रो किया था भाई मैंने क्यों थ्रो, मैं तो मार रहा था भाई, पहले टाइम मैं से ही मार रहा मैं मैं भी मार रहा ही था भाई देखिए आष्टा के साथ क्या हो गया क्या हो गया, क्या है वो 12। देख, 5 मैंने किलो कितना मारा है उसको दिखा, मैंने किसको कितना कितना मारा। किधर रखे हो एक से बी सी डी ई एफ जी एच के एल एम फिर बी के मैंने चेम्बर लेके मारा। अबे यार ये क्या हो गया भाग। सबको मारा एक्सेप्ट स्काई मैं पहले मरता था, ट्रेना को 8 बार, स्टेट को 8, सबसे पिट रहा था उस दिन। सब मार रहे थे तेरे को, बादाम देखा मारो इसको। पैसे में नीचे ही है तू भाई मैं मेरा सिर्फ नेट आने दे, सिंगापुर देखा था। मेरा नेट नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं नहीं खेल। ओए तू 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 भेजने वाला था ना, पेपाल का अकाउंट खोल लिया मैंने। यू आर गोइंग टू सेंड मी डॉलर। हाँ हाँ मैं डोनेशन भेजने लगा था हाँ फिर भेजू, मेरा पेपाल का आईडी भेजू। आज तक 8 बजे ये कार्ड निकालना पड़ेगा इतना काम क्या क्या? मुझे खोलना पड़ेगा पेपैल और मैं तेरे सामने थोड़ी खोलने लगा ये अभी यहाँ करता हूँ इसको लगा सारी डिटेल्स दिखा दे सारी डिटेल्स दिखाता है इसको अरे मत ये देख दिखा। ओह आई एम ऑन स्ट्रीम ब्रो, इन फ्यूचर और एनी एनी टाइम। अभी रियलाइज है यार तूने ये किए ये पिकिंस ठीक है, लेकिन हाँ कौन क्या जीतेगा नहीं किया मैंने। नूब हूँ, मेरे को नहीं आता ये क्या है। गैम्बलिंग तो क्या होता है? अब जोकिंग प्रेडिक्शन। प्रिडिक्शन है ये मुझे लगता है ये दोनों जीतेंगी ग्रुप ए से और ये दोनों जीतेंगी मुझे लगता है ये दोनों जीतेंगी यहाँ से और ये दोनों एलिमिनेट होंगी और लगता सपोज है ये तू तेरा सब कुछ जो भी सिलेक्ट है वो सही निकलता है तो तुझे रिवॉर्ड मिलता है कुछ? हाँ कुछ मिलता है मैं भूल गया क्या रिफ्लेक्स मिलता है मुझे लगता है एक तो नहीं देखा है मैंने अलग वाला। नहीं जब ये चैंपियन शुरू होएगा और ये सब कुछ करेक्ट होएगा चैंपियन होगा ना, कब स्टार्ट होने वाला है पता है तुझे? 29 आई थिंक 9 डेट, 9 डेट टू 20।
लिरिक्स वो लिटिल गर्ल तू है ना? He also loves it और कुछ तो और कुछ ओए बता मुझे ना क्या है यार मेरे को हेयर कट करने का मन होता है बट मैं जब भी सैलून में जाता हूँ तो वो कितना गंदा कर देता है ना फिर काफी गंदा कर देता मैं क्या करूं, मैं इंडिया में थोड़ी रहता। मैं तेरा दुश्मन वाला देश हूँ। है वाला देश हो गया तुझे मारोगे उधर और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया से या इंडियन से। मुझे भी नहीं है प्रॉब्लम मतलब सिर्फ ओल्ड पर्टिकुलर मेटल्स में। ये देख, माइंड ये सेट भाई ये तेरा फेवरेट है ना, ये तेरी फेवरेट है। आ गए थे यार और मैंने नहीं ली। मैंने पे पड़ी हुई है, तू लेना क्यों चाहता है? मैंने पे पड़ी हुई है ना प्राइम, तो तुझे क्यों चाहिए? और क्या एक ही वैंडल लिया था तुमने हाँ, एक ही लिया था। मैं गेम इतनी देर का खेला ही नहीं हूँ। मैं लेवल क्या हूँ? लेवल 75। अरे कैसे इतना कम तेरा कितना है? है 222 है 222, हाँ इतना ही खेला है। आई थिंक वन ईयर हो गया मैं वो खेलता था, प्ले स्टेशन, कॉल ऑफ ड्यूटी। मेरे मेरा वीडियो अपलोड रुका स्ट्रीम वेट, तेरा स्ट्रीम देखूं? मैंने स्टार्ट कब किया था वैलोरेंट ये टाइम पे किया ये अपलोड कब है इसका 30 अप्रैल 2024 ए कमेंट्स की सुना तूने? हम्म जो कमेंट्स ने बोला था, क्या जो कमेंट्स में लिखा हुआ है तेरे, जो ऊपर, नीचे जा। ये वाला हाँ, हाँ बनाई, बिगिनर गाइड बनाई। बिगनर हाँ मैंने लाइक बताया था एक वीडियो है रुक जा उस पे लाइक मैंने बताया कि लाइक वैलोरेंट में अगर तुम्हें रैंक ग्राइंड करना है तो लाइक कब करना चाहिए एंड कैसे करना चाहिए या फिर थ्रोअर्स मिलेंगे वो सब बता दिया था भाई तू अभी तक फेमस क्यों नहीं हुआ यार? नहीं भाई, तुझे इंग्लिश में बात करनी है, फिर आएंगे व्यूज। बट इंडियन ऑडियंस में कैसे अरे ये स्ट्रीमर आ गया था मेरे पास ओह, ये बंदा मेरे जैसे ही Last होगा player अबे standing. वो वहां कैसे पहुंच गया? वेट क्या मैं है? काफी योरू खेलता था वो टाइम में एकदम डेंजर था मैं Last player अबे standing. वो वहां कैसे पहुंच गया? ये था, One ये enemy वो remaining. रेडियंट है मेन जो आया था हमारी गेम में। क्यों पीक लेना था? मर्फ करने। ये मेन कब गया? टॉप ट्रैक कैसे कर रहा है टॉप ट्रैकर था भाई मैं वो नहीं वो टाइम पे मैंने लाइक सोलो क्यों करता था एंड गोल्ड लॉबी में लाइक गोल्ड प्लेयर था ना देख रहा है मेरी स्क्रीन? नहीं तू मेरा स्क्रीन देख समझा स्क्रीन दो देख थोड़ा सा। कसम से वो भाई पता मेरा नहीं देख भाई, ऐसे ये था वो रेडियंट बंदा जो स्ट्रीम कर ओके रहा ओके था। ये स्मर्फ कर रहा था मेरे और सस्ता सूर्य के ऊपर। भाई इतना भी अच्छा नहीं है।
अरे वो क्या हो जाता है जैसे जैसे हम हाई लेवल्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो इतने तो अच्छे नहीं लगते। नहीं नहीं वो ना फिर लोअर लॉबीज होती है ना वो हमें कम कम दिखती है फिर। अब देख हम जब गोल्ड लॉबी में खेलते तो हमें सब कुछ प्रेडिक्ट होता है कि बंदा किधर से आ रहा है क्या, और हम एंगल होल्ड करते हैं, हर एक एक को मारना चालू कर देते हैं। हम्म। वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे रैंक अप होता है ना वैसे जैसे गेम से। स्मर्फ अकाउंट पे खेल रही है। एंचोद क्या इतना, ओ माय गॉड क्या मारता है ये ये वही गेम तो नहीं। उसकी लॉबी में नहीं खेलता है क्या? उसका ही तो ये उसका ही अकाउंट है ना। भाई मेरे से तो खेला था इसने, मुझे ऐड भी किया था। ये देख। वेट कर। नहीं उसने डिलीट नहीं किया था। नाम नहीं याद, उसकी अल्ट आईडी थी आईडी का। वह उसने अपना पिन किया था चैट में। हाँ 2 मंथ अगो थोड़ी खेला था मैंने, मंथ अगो खेला होगा। लाइव पे था मैं। अब वो तो हर दिन करते लाइव में, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दैट। मेरा स्ट्रीम देख, मैं वो वाला यूरू देख कैसे खेलता। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पर अंदर मर नहीं रहा है। हेवन से घूम के स्क्रीन रहा है, वो मर नहीं रहा। ये क्या हो गया? क्या देख रहा है? One enemy remaining. अरे वो क्या देख रहा है तू? Our spawn probably. Probably flanking, probably flanking. भाई जापानीज गर्ल कब डाला मैंने? Has to be. Yep. ओए मैंने ये वीडियो कहाँ से डाला था? अच्छा ये फिर वो अभी भी ऐड है मुझे पता है। और लैंग्वेज बात ही नहीं करते रे वो बहुत शायर। भाई ये किसके साथ खेलता था? ये एकदम पुराना लाइक GW इसके साथ खेलता था और मैं फिर इसको मिल गया था। GW इसके साथ खेलता है तुझे, और इसने लाइक ये कर दिया था डिलीट। मैं कौन सा पिंग चल रहा है ये? पिंग कितना है मेरा? कुछ दिख रहा है साइड में? जब टैप दबाओ मतलब क्यों तेरा 90 आ रहा था ना? नहीं आ रहा था स्टार्टिंग का भी तो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता था क्या? स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता था इस पे। सब मतलब लाइक इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी स्ट्रीम की। वो लाइक मेरे पास वो टाइम पे GPU भी नहीं था, धीरे धीरे अपग्रेड होते गया मैं। बाउंटी हंटर ओ भाई ये भी होएगा। बैक व्हेन आई वाज सिल्वर, पता नहीं दे। डायमंड मेरे टू पे टू कब जाने वाले हम? मैं तो पहुंच गया होता अगर ये 2 गेम हम जीत जाते। नहीं रे फिर वो कैसे होता है, अगर तू जीतता न फिर सोलो क्यू में हारता, ऐसा हो जाता। कौन सी आईडी? मैं अभी दिखाता हूँ। वेट, एक सेकंड वेट कर। अबे वेट, स्ट्रीम स्क्रीन ऑफ कर दी है। दूसरे अकाउंट पे जाने लगे। ऑफ एक करना वो ऊपर ही एक्स दब। स्क्रीन ऑफ कर दी, एक सेकंड। तो मैं समझ क्या विक्स रेडी रख दूसरा अकाउंट।
तुम जाके ओके गोइंग टू एंड द स्ट्रीम। जीडब्ल्यू क्या बोल रहा है? मैंने ट्राई किया, एम एम नहीं लगा। नहीं नहीं। थे इसमें, नहीं हुआ। आई टू फ्रॉम में वही ना रे, कल खेलेंगे। ओके, इट इज गुड नाइट, एंडिंग द स्ट्रीम।